ಗೆ 2 ಓವರನ್ನು ಹಾಕುವಂತ. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So welcome back for the first match of the final day of this cricket tournament, Well Done versus Mother India, and I request two teams captain, please report here for the toss immediately. Welcome back once again, and the first match of the day number final of this cricket tournament, and first match, Well Done cricketers versus Mother India Buliar. The captain of Well Done winning the toss, and they elected to. Looks like they will go into field first against team Mother India. So welcome back once again, as usual in the morning. The time is exactly inching towards 10 o'clock, 9:55. And condition is similar as we are witnessed 2 days of cricket tournament. The same condition out here. Morning itself it was very hot, sunny, bright sunny morning, and absolutely there is no wind at all in the ground. This is a little bit difference as we are seeing in last 2 days. Might be a little bit wind passing in the morning, but today we are not witnessing any sign of the wind in the ground. So but it's definitely going to be a hot day
And not only the condition, or not only the weather condition is hot, but even the condition of this tournament is definitely going to be more hotter than the weather condition, because this is the final day of cricket, and everyone knows that it's going to be a decided day of cricket, and wait and see which team will going to get the very prestigious title YFC Trophy 2023. And the competition is on. Already one team which is qualified for the final from the Mangalore group. It's none other than Torpedoes Khana. The first time in their season 2023, they're able to qualify for the finals of this prestigious cricket tournament. And one more team already qualified for the semi-final, the yesterday's match. Nazar ninth block are able to qualify for the semi-final, and today's match, and wait and see which team will going to get the place in the semi-final. And qualifier for the semi-final will going to play against yesterday's qualifier, ninth block, Nazar ninth block. So wait and see which team will going to qualify for the finals. So that's it for the scenario of last 2 days of this cricket tournament, and we are into the last and final day of cricket. Special thanks to Mr. Iqbal and Mr. Nasir Bajal, and at the same time one more umpire. Now two umpires walking towards the middle. Today little bit change in umpiring, along with Iqbal, Gopi. Nasir Bajal, Iqbal, as well as one more umpire, Arif Jokate. The three very good umpires did a great job, and they're the one responsible for the success of this cricket tournament, because in this particular cricket ground it's not so easy. Officiating is definitely going to be a little bit tougher than any ground, and just considering the fact that the condition of the weather condition is definitely going to be horrible, and more than anything else the dust which is really coming out in the ground. And but still it's a fantastic cricket ground, and thanks to the organizer by maintaining this cricket ground very suitable, and having some plexus advertisement boards, and in the boundary line we can see that apple fly, the red color apple fly board which is situated in the boundary line. And more than anything else, it's a fantastic pitch which is for this cricket tournament. It's outstanding, and still it's a third day of cricket, but the pitch seems to be very very hard enough and good enough, even playing 10 to 20 days of continuous cricket in this pitch, and I'm sure this pitch will not go into spoil. And that was a fantastic effort there from the curators, pitch makers, whoever it is responsible for that. I would like to give special thanks for them. And altogether, we are coming back to this match, and here is two opening batters are in the middle for Mother India. Rizwan in the strikers, and Mansoor Rantarka is representing for his home team. And it is very good to see that some players, even they playing for some big teams, but whenever their home team will going to participate, they will never give up their home team, and they love to play their home team. That's a very good sign, because it's always going to be a big honor for any players representing your own team, even though the name and fames what you have getting, but first you have started your career by playing your home team. They are the responsible for your name and fame. That's why you need not to forget that. And that's very good to see that even yesterday Harris is representing for his home team, and now here is Mansoor representing for his home team. Signal came from umpire. Javed will going to start the proceedings from the commentary box, and left arm round the wicket, first ball of the day number final. Starts with the warm-up delivery of the morning. It's a big wide, far outside the line of off stump, and morning exercise here for Iqbal. In the morning exercise, of course, a little bit warm-up which is required for umpires as well, so that bowler is giving that opportunity to get the warm-up of the morning. Here is the next one, right arm over the wicket balls, going to be one more wide, second consecutive warm-up exercise here for Iqbal, and two on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Without any effort from the bat, the opposition team has got a couple of runs, and without facing a single delivery of the first over. The power play is on. Deep long on deep, wide is longer for the fielders are in the deep. The third consecutive wide deliveries. It's not a good start there from the bowler. Absolutely, it was a disappointment start there from Javed.
and he's not really getting his line and length properly. And Rizwan is a striker, is yet to face his first delivery. Rizwan is a very talented batter, technical sound player for the side of Mother India Rantadka. Mother India, lead progression, Mother India Buliar. And here is bowler bowls Javed. Oh, problem continues. Problem continues. The fourth wide of this over. Absolutely disappointment, isn't it? Now Javed have to think a little bit different, and straight away he's changing his angle. The wait and see how after changing his angle will going to work out or not. Four consecutive wide deliveries, four without loss of any wicket, and without a single delivery. Left arm, of course. About him, clean him up. What we are talking about, it will going to be work out or not, but definitely it's work out because that ball is just came around the legs of the batsman, and disappointment finish here for the batsman because he's a very good batsman. Rizwan, just look at that ball. Came along the carpet. Absolutely, it was a bad luck because that ball is just came along the carpet. When he wanted to hit the ball, ball has got a little bit extra bounce, and because of that extra bounce, ball is came in a different line. The bat which is came in a different line, so that huge gap between bat and ball, and he's back into pavilion. Just you look at that one in replay, the where the things went wrong. Absolutely, what I'm mentioning about ball which is came along the carpet. When batsman going for the drive, that ball hits the stumps. A huge wicket. Even he bowled four wide deliveries, but Javed has picked up a huge wicket of Rizwan. So four for the loss of one wicket. There is a players dugout. That is only for the players to sit in the right and left of our commentary box, and not for the spectators. This time again, obvious that is a call, but of course, ball pitched outside the line of leg stump at the same time, little bit bat which is involved. So no question of leg before wicket. There is no appeal coming from bowler Javed. You know exactly it's a ball which is pitched outside the line of leg stump, and no question of getting leg before wicket. Again, Javed balls to Nizam. Nizam this time going for the drive. Ball went behind the stumps, hitting the advertisement banner. Meantime, the Mansoor expecting the call from his partner Nizam, and they gone for a single. The first run which is came from the bat, and five for the loss of one wicket. Mother India Buliar against team. Well done, Kalakate. After winning the toss, selected to field first, and Mansoor facing his first delivery. Just a helicopter shot, ball is in there, but ball landed after one bounce to the hands of long off fielder. Of course, and the supporters of Mother India, they got a heart in their mouth when the ball is in the air. Just a helicopter shot. Wrist work comes into play for Mansoor, but luckily that ball didn't carry to the fielder at long off. On bounce collected by the fielder. Mansoor is off the mark. Six for the loss of one wicket. Again, going for the drive. Not really able to get that one from the bat, and there is no chance at all for any run. Good comeback here by Javed. Never looks like the same bowler who bowled four wides. After seeing that his comeback in the very next ball, when he was changing his angle, when he bowls around the wicket, and a little because he bowled over the wicket. He's a left-hand bowler, in fact. He's bowling over the wicket, changing his angle. So it really effective for Javed. Outside enough off time, beautifully bowled, perfect line, fantastically bowled, good over, very good over. And even though 4 runs which is considered in the form of wide, but still it's a 6 runs in the first over, and considering the fact that it's a 5 overs game and a power play over, I think it's a good over ball by Javed after a shackling start. And then he got his line and length rhythm very well, and really restricting the runs of their opposition. Just Mother India, wait and see how well they will going to come back in the second over, having Mansoor in a strike, and Mansoor knows, everybody knows, he's the man, is responsible for the success of young friends for a long time, and in this particular season he's representing for NM Cricketers Mangalore. But whichever team he represents, he is definitely going to be a big asset for the team.
not only as a batter, but even as a better wicketkeeper batsman. And very cool and calm customer as far as underarm cricket is concerned. Very friendly nature, and of course loves to play cricket, and cricket which is in his blood. And here is again he facing his first ball of the over number second. The bowler is introduced. Rashid. Oh, beautifully bowled. Going to miss the leg stump. Going to miss the leg stump. It's been excitement. Absolutely, it's happening whenever the big man like Mansoor is on strike. Whenever the ball hits a leg, everyone going up because they knows that the wicket of Mansoor is so important. So everybody is appealing, but ball is almost going to miss the leg stump for a long way. No chance at all for the leg before wicket. Rashid. Balls, this time Mansoor drives that one down to deep widest long off region. Diving attempt there from the short mid off fielder, but not quite enough to stop that one. And there is a possibility of if Rashid will going to take the one wicket, he will going to get a 500 rupees. Oh, that was a great um, what do you call announcement for the bowler Rashid. And but he's bowled a wide, 2 runs, 1+1, which is ball is passed under the advertisement banner, so that 2 runs added to total 8 for the loss of 1 wicket. The opportunity, umpire asking for the new ball. The new ball. I request the organizer to give the new ball. The ball which is gone out of the park. It's an announcement only for the bowler who picked a wicket of Mansoor. If anyone able to get a wicket of Mansoor, that bowler will going to get 500 rupees. Not for 1 wicket, but only for the Mansoor's wicket. That shows how important the wicket of Mansoor is for opposition team. Outside the line of off time, going to be a wide with that extra scoreboard Namuzan to 10 on the board. Already out of 10, 5 extras, 6 extras. It definitely is going to be disaster, isn't it? And the 6 extras out of 10, it's going to be a huge one. Just 7 extras actually, 7 extras, 1 by. And absolutely disappointment. 10 for the loss of 1 wicket. Rashid, left arm. Oh my goodness. Oh my goodness. One more extra. It's 11. It's 11 on the board for the loss of 1 wicket. Of course, the Mother India are not really bothered about if the runs which is not coming from the bat, but their opposition helping them to get runs by giving some extra deliveries and extra runs. It's a 5 overs match, but the total it's become 6 overs because 6 or 7 wide balls, extra balls which is bowled. That means altogether it was becomes a 6 overs match. It's not a 5 overs. It's a big difference actually. That's why discipline is so important in cricket for the bowler, not to bowl so many wide. And here is the next one. Balls, lovely delivery. It's a nice one. This time, absolutely right call from Mansoor is not interested for the run because he's very always going to be asking for trouble. Very risky one because if the ball after hitting the banner, if a ball comes into the fielder, it's always going to be a danger of getting run out. That's why Mansoor is not interested for the run. Rightly so. No damage done. Score remains on 11 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Rashid. Again with a short run off left arm around the wicket he balls. Again one wanted shot straight to the hands of square leg. One more dotted delivery. That was a good comeback. This is speciality of 2 over is that the bowlers conceded runs in the form of extras. But whenever they're bowling right deliveries, legal deliveries, fair deliveries, then there is no run at all. This is what 2 bowlers did in this particular 2 overs. Again Rashid left arm bowls. Going for the big shot, blind attempt. Once again, ball missing the bat. Nizam struggling against the bowler. And even though extras helping Mother India, but the batters really missing the balls of their opposition team bowlers. Now after that, the first bowler Javed bowled so many wide balls. Is conceded just 6 runs. But here also, he conceded some extra runs. But still, only 5 runs so far came from that over of Rashid. Good comeback. Left arm bowlers doing a very good job here. Rashid again.
Again, the going for the blind shot. Again, missing it completely. Oh my goodness. Absence of mind. Stump out. It's a stump out. It's not a bowled out. Because his absence of mind. The batsman thought it is bowled. That is walking. Just look at that one. Ball missing the wicket. Even missing the wicket keeper's hand. But look at the batsman. Batsman never knows about what really happened. He's just walking. He's just walking, and quickly the wicketkeeper, the presence of mind. The two things happening in a similar time. One is a presence of mind from wicketkeeper, and another one is the absence of mind from the batter. It was a really disaster for the batsman. Is not really seeing the ball, what really happened behind the stumps, and is back into pavilion. It's 11 for the loss of 2 wickets. The good comeback here by Rashid, and 11 runs out of 11 runs, only 8 extras, and only 3 runs which came from the bat. That shows the bowlers of against team done a great job. Well done, really well done. The two bowlers, the opening bowlers, just like what the name they got. Well done, really well done by the two bowlers. Even though bowled some extras, but not really giving opportunity for the opposition team to get the runs from the bat. I requested fielding team to make it past. Already we mentioned that 20 minutes. The 20 minutes you need to complete your 5 overs quota. And 1 minute is going to be great. 2 minutes we're going to be grace. Not more than that. I request them to complete your 5 overs quota immediately. And we are having a shortage of time. I request umpires please every overs please inform the bowlers. So far it is a very difficult track to batters. That shows the number of boundaries and number of sixes in this tournament. Only 23 the boundaries scored, and only 11 sixes. That shows how difficult. It's definitely going to. It's not going to be the batter paradise. It's a bowling paradise. This pitch, the bowlers dominated because it's pretty hard pitch, and this time catch it is a call, but the ball went between the mid wicket and long mid on fielder. And Mansoor picked up a single. Is off the strike. Scoreboard is 12 for the loss of 2 wickets. His new batsman in is Ismail. Ismail, wait and see how he will going to give the stand for Mansoor Ramtadka. Javed bowling is second, and last over of his quota. Left arm bowls. Nicely placed that one down to cover point region. Protection has been given in the deep so that batsman have to settle for the single. Good thinking there from Ismail. Not trying for hitting the ball pretty hard, but just allow the ball to coming into his bat, getting some placement to rotate the strikes. The rotation of strike is so important in cricket. It's 13 for the loss of 2 wicket. Javed to Mansoor. Bowler's back drive. Helicopter shot once again. Fantastic wristy player. Mansoor, just look at the way that he is getting that one from the middle of the bat, and again the timing is so perfection in the negation. Bowler's back drive, just a single. With their singles cover, numbers on to 14 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Again bowler Javed, left arm around the wicket he balls. That's sensible batting, absolutely sensible batting, hitting the ball right in the gap by Ismail. You know exactly. When you're having a batsman like Mansoor in other end, your job is to pick the single and give the strike as much as possible to Mansoor. And 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Backward point, short mid off, deep cow point, deep long off, deep long on deep mid wicket and deep backward square like in front of square. One is behind the square inside the ring, one at short mid wicket. This time again gone. The Mansoor is gone. And this time Mansoor wanted to play across the line of the delivery. Swings that one. Ball pitched in a line. Of course the bowler bowling round the wicket, but he's a left hand bowler. The 500 rupees straight away into the pocket. Just look at that one on a replay. Oh my goodness. The batsman tried to play across the line of the delivery and is finding himself right in front of a stump.
So big wicket, huge wicket is back in the pavilion as Mansoor tried to hit the ball across the line. Javed striking here. And the 500 rupees straight away into the pocket of Javed because one supporter of Weldon announced that 500 rupees for the wicket of Mansoor. It's a 15 for the loss of 3 wicket. Naushad is a new batter. Naushad straight away off the mark by placing the ball nicely down to back point region for a single. Good over from Javed. Excellent 2 overs from him. After completion of over number 3, it's 16 for the loss of 3 wicket. Mother India Buliar is searching for the right track. And they're 16, not a bad run. 16 is a good score. And now 2 overs remaining in the innings and wait and see how many runs they will go into score. And Javed is bowling figure 2 overs and conceded 11 runs and picked up 2 wickets. Outstanding bowling figure from Javed. And out of 2 wickets, the 2 wickets, which is very very costly, wicket of Rizwan and wicket of Mansoor, 2 valuable wickets for Javed. Never looks like when he started. Nervous start for him after bowling consecutive 4 wide deliveries to start with. After that, he bowled magnificently and producing some very good overs for his team. Change in bowling. Zakari brought into attack. Zakari on behalf of team Mother India for well done. They're going to start the proceedings. 2 left-hand bowlers finishes their over 2 and 1. Now the right-hand bowler will go into ball their first over. Zakari bowling away from us. Zakaria right arm over the wicket balls. This time the line is outside the run of leg stump. Now Shad gets a single down to deep backward square leg region for square leg region. With that single scored Namazan to 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. 5 overs game and each and every run going to be a very important for team Mother India Buliar because after this only 1 hour remaining, 11 balls remaining in their innings. They need to get runs as much as possible. And here is again bowler bowls Zakaria. Right arm over the wicket pass umpire Nasir Bajal. Again edging it down to third man region for a single by Ismail. Ismail doing a good job. So far I watched him came into bat not wasting a single delivery. Just looking for the rotation of strike. You know exactly condition of the game. It's very difficult to hit the boundaries and sixes. Then why not to look for some rotation of singles, rotation of strikes. 18 for the loss of 3 wicket. Now Shadda again try to hit the ball pretty hard. This time direct hit and providing the opportunity. Oh! Direct hit, definitely going to be a curtain in the innings of Naushad because after that ball hits the stumps in the on the striker's end, and they both the batters grabbing the opportunity for that direct hit. They're looking for just look at that one direct hit. Batsman is safe, and after a ball hitting the stumps, they got opportunity. They got opportunity to cross off for a single, and they got that one quite easily in the end. So 19 for the loss of 3 wicket. Zakaria so far bowling a very tidy line and length. Ismail is on strike. Facing Zakaria. Bowling away from us. Right arm over the wicket, wide up the crease, and nicely executed there by Ismail. He is so impressive as far as the rotation of strike is concerned. 20 for the loss of 3 wicket. So 23 fours and 11 sixes which is scored so far in this tournament. And the 2 sixes which will the spectators will going to remember in this particular tournament when the batsman hitting 2 sixes. One is against the Ashu's bowling 2 sixes in the quarterfinal, in the semi-final. Again, leg by call by umpire. Ball is just deflected from the leg of the batter Naushad, and with that single Kubana moves on to 21 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Very slow cricket is in progress.
quite understandable. I'm just mentioning about there is something there in the pitch for the bowlers. The fast bowlers are really enjoying their bowling performance, and the bowlers, batsmen are struggling to get any kind of big shots so far in this innings. Again, Zakaria balls. This time going to be a bonus run. They're going for the quick run. 1+1, 2 bonus runs. This is one area what Mother India Buliar will go into much bother about that, because there's so many runs which is conceded in the form of extras. It's a 23 for the loss of 3 wicket in the over number 4th in progress. The match number 2 will be played between YFC Bajal versus Class 11 Chocobetu. So that I request all the players of both the teams, please report to the comment box immediately to sign the official chart. YFC Bajal ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕೊಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time opportunity of run out, but bowler on his follow through. Zakaria fails to collect the ball, but batters succeeded to get a single. 24 for the loss of 3 wicket. And the over number 4 completed. Now its run rate is exactly 6 runs per over, and they can get some acceleration in the last over. The final over remaining of the innings of Mother India, and just look at the scorecard. And the first to go is Rizwan, is bowled out by Javed. And the next to go is Nizam, is caught answer, stumped answer, the bowled Rashid for 1, and then the last wicket, which is Mansoor of NM Cricketers Mangalore. Mansoor Rantadka is back into pavilion after scoring 4 runs for 6 deliveries. So 2 overs remaining, a little bit changes in the number of overs. The 6 overs game what umpire has announced. This is only for the first match because a little bit communication gap. 24 for the loss of 3 wicket. So I request the fielding team to make it fast. Please don't waste the time. We are having a shortage of time. So bowler will go into ball. Rashid in his second over. Balls beautifully bowled straight to the hands of field. Oh, going for the run. They're going for the run and they made it quite easily in the end. Little bit fumble. The opportunity was created for the run out. And both the batsmen, they're grabbing the opportunity. And it's an opportunity actually for the fielder. Then the batsman's grabbing the opportunity of a little fumble from the fielder. It's a 26-25 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Rashid again. Bowling with a short run off left arm. Round the wickety balls. Again pushing and running. What Ismail is doing in this particular innings is so good as far as the rotation of strike is concerned. Each and every ball is scored a run for his team. This is what the strategy, that technique we're talking about. 26 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Rashid again. Left arm bowls. This time batsman drives powerfully down to mid wicket region. They're running hard. Good piece of fielding there by the fielder. They go coming back for the second chance of round, and is I think now umpire asking for the third umpire, but looks like the batsmen are really struggling to reach his home. Even though Iqbal is asking for the third umpire, but I just seeing the body language in a naked eye of the batter, it looks like he's struggling to reach his home, but we need to wait for the umpire signal. Third umpire, we'll go into see here. Harif Jokate will go in to get the result for you in the third umpire, and I think the batsman is gone. Just like I mentioned, by seeing the body language of the batter, the out, which is a signal from umpire, third umpire, the one more wicket is back into pavilion. Of course, they need to look for the run sometime when ball is running towards a mid wicket region, but it's a big blow. The Ismail is looking so good in the middle, rotating the strike very well, and unfortunately tried to clinch that, steal that second run, but not really able to complete that one. Good throw coming from the fielder in the deep actually. Because of that very good throw from the fielder and quick work done by the bowler,
And because of their very good combination, that wicket is back into pavilion. It's a 27 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. Nizam is a new batter is in non-strike again. Now Naushad will going to take the strike. Naushad drives that one again nicely towards mid-wicket region. Again the good piece of fielding there by jersey number 8 has been impressive. Jersey number 00, and a very good piece of fielding there by the fielder. Again not really giving opportunity for the batter to come back for the second. It's a 28 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. Rashid bowling final time, version 5th time in this over. Left arm over the wicket to the right hand batsman Nizam. Left arm Nizam really good shot, looking for a second here but difficult to get after ball hitting the net. Stop a little bit so that opportunity for the fielder to take the over complete. One ball remaining. 28 for the loss of 4 wicket. Last ball remaining. Naushad back on strike. 29 is the total score of team Mother India. Rashid, the final time in this over. To well settled batsman Naushad. Oh, beautifully bowled. Cleaned him up. The beaten by the pace. Just like I mentioned about, there's something there for the fast bowler in this pitch. Just look at the ball. No time. Ball just skidding and hitting the stumps. And no time for the batter to react to that quicker delivery. Just fastest delivery. Absolutely. We're not having a speedometer to get the speed of that ball. Maybe 100 plus kilometers per hour. No time at all for the batter to react to that quicker delivery there from the bowler Rashid. Then wicket number 5 is back into pavilion. 29 for the loss of 5 wickets. The last over remaining. And wait and see how many runs Mother India will going to get here. A disappointment batting card here. The Naushad once looks very good. He's the highest run getter, scoring 7 runs out of 9 balls. The Ismail is looking good as well, but is unfortunately run out after scoring 5 runs. But all we can see that the 2 opening bowlers, left-arm bowlers Javed and Rashid, is sharing the 2 wickets each between them. And now the last over will going to start. Tamim brought into attack. He's a very good fielder, a very good outfielder. Will go into bowl the last over of the innings of Mother India. ಅಲ್ಲಿ YFC Bajal ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕೊಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. The last over remaining of the innings of Mother India. And well done Nakalakate, the bowling there last over. Outside and next time starts with a wide. So many wides conceded in this match. 30 on the board for the loss of 8 wicket. It's absolutely disaster for team well done, because it's very hard to combine the runs from the bat, but they considered some runs in the form of extras. It's absolutely disappointment, isn't it? 30 for the loss of 5 wickets in the over number last in progress. There's some chip that one in there. Chance here for the fielder, but he's not attempting for the catch. After one bounce he collected, and here is the batsman coming back for the second, and made it quite easily in the end. And just look at that one, and chip that one in there for a while, but field in the deep backward square leg is a little bit squarer. So when you try to reach there, ball is just landed in front of the fielder. After one bounce he collected, trying for the run out. Good throw from the fielder, but not quite enough to stop the couple of runs from the batter. So with that couple of runs, Kobar moves on to 32 for the loss of 5 wickets. The last over is in progress. Last 5 deliveries remaining in the innings. So 30 minutes which taken there by the bowling team. It's not a good to see. 25 minutes which is really given for you to complete your 6 overs quota. And that understandable, because so many wides.
They're not bowled 6 overs, they bowled already 8 overs. That's what the big problem. And this time again, the one more single, but they're going for the second. Pays the penalty for that. One more wicket is back into pavilion. One more wicket is back into pavilion in the form of run out. And this last over is in progress. So that batters are trying for everything. But by doing that, the wickets are tumbling. Good throw coming from the fielder. The batsman struggling to reach his home and is absolutely out. And umpire rightly so, Iqbal. No way to ask for the third umpire. In a naked eye itself, he judging that one. The batsman short of his crease and struggling to reach his home. And well done by the well done wicket keeper. So one more wicket is back into pavilion. And new batsman walking towards the middle. Mustafa. 4 deliveries left in their innings. It's a 33 for the loss of 6 wicket. Mustafa is on strike. Tanzim is on attack. Tamim ready correction. Tamim to Mustafa. Oh, wide ball. Wide ball. Oh, how many deliveries he bowling, the extra deliveries. They're going for the extra runs as well and get completed. Absolutely fantastic piece of running between the wicket. This is what you call the grabbing the opportunity. The grabbing opportunity, little bit laziness shown by the fielder and the batters of Mother India grabbing the opportunity to complete the run. It's a 35 for the loss of 6 wicket. Good runs on the board. And still Tanzim is not really getting his line and length. Extra runs, extra deliveries, so many indisciplined bowling performance. Right, over the wicket balls. Again, that ball going up to pitch outside the nerve, except going for the single, trying for the run out. Again, that was a fantastic. Again, that fantastic. Couple of runs has been given. Nothing wrong with the running between the wicket because batsman is running in the right line. It's a mistake of the fielder. The mistake of the fielder. They're going for the third run, and now I think he's gone. The ball which is in the play, ball is in place. That's why the bowler is batsmen are trying for the third run. And the 2 runs which is given, and just look at that one in a replay. There almost everyone is just appealing, but here is the batsmen are looking for the run, but a little bit good work done by the fielder, not trying to hit the stumps, but himself is uprooted the stumps and got the result for that. 37 for the loss of 7 wicket. Last 3 balls remaining. The new batsman is Iqbal. Mustafa is back into pavilion because of that run out. Mustafa is safe. Nizam is a batsman, is back into pavilion. And in place of Nizam, Iqbal came into middle. Is in non-striker's end. Mustafa is on striker's end. Tanzim. Again bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Mustafa. Drives right in the gap. And they're going running hard. They will go into running hard. And that ball going to miss the sub. Oh my goodness, boundary. Total misjudgment by the 2 fielders. The ball is hit very firmly between the gap. Beautifully driven. The timing is so perfection in the occasion. And look at the way the ball is running down to deep extra boundary. Not a good effort. Pretty ordinary effort there from the fielder. He is not standing in the boundary line. And that was the problem. If he is the boundary line, he can cut it off. And he was not in the boundary line and the 5-6 yards in front of the boundary line. That's why the ball is defeating the fielder and got a very important boundary. 41 for the loss of 7 wicket. Last ball. Again going for the 6th swing. One more little correction. They're going for the second run. Chance of run out. One more wicket is back into pavilion. Last ball. The last ball remaining. So not out, which is a call from umpire. Rightly so, because the bails are off. Bails are off, but I think you need to lift the stumps. He can lift the stumps, he can uproot the stumps. Then only you can get the result. That's why it's you need to see the need to know the rules and regulation of run out. The bails are off. And he is not uprooting the stumps.
This time, chance of run out, and it's going to be out. So last ball, just a single run, and total score of Team Mother India Buliar 40. 44, which is the total score of Mother India. 45 is going to be a target for well done Kalakate. To win this match, it's going to be a good score, good batting performance from Mother India Buliar. Wait and see how well they will go into defend this total, and wait and see how well done Kalakate will go to get this 45 to qualify for the next round of this prestigious cricket tournament. And we'll take a short break, and we can see that is a Mother India Buliar's batting performance, and it was a very good batting performance. But more than anything else, I think the contribution from the extras will going to be a big factor in this particular match. The opposition team conceded a lot of extras, and they need to pay the penalty for that when they're going to chase these runs. And we'll take a short break. After that short break, we are back once again with my friend Mr. Gopi, the first time today morning. And good morning, Gopi, and welcome back for the final day of this cricket tournament. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो आज YFC ट्रॉफी सीजन 2023 इस मेगा श्रृंखला का, इस मेगा टूर्नामेंट का तीसरा और अंतिम दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए मदर इंडिया बुलियार ने बनाए निर्धारित 6 ओवर में 44 रन 45 रनों का लक्ष्य इस वक्त उन्होंने रखा है वेल्टन कला कट्टे के सामने, और वेल्टन कला कट्टे को बनाने हैं 45 रन। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, एग्जैक्टली 7.50 रन पर ओवर आस्किंग रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन, एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। देयर ओपनर्स आर द क्रीज इफाज और हनीफ अरबिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए निज़ाम। और यहाँ पर कुछ बातचीत चलती हुई कि आरंभिक गेंदबाज के रूप में किसको उतारा जाए, और
थोड़ी सी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाज के हाथों में, जो कि पहला ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए 6 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे और 2 ओवर का पावर प्ले और कुल मिलाकर उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद फील्डर पहली गेंद उनकी पारी का लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाज नौशाद और निजाम को बदलकर इस वक्त नौशाद के हाथों में गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है और अपनी ओवर पारी की पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। वाइड का इशारा, गेंद को अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए जाने दिया था विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है वेल्डन कल्ला कट्टे के लिए, 1 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से वाइड का इशारा और नौशाद जो कि गेंदबाज है, जिस तरह मदर इंडिया बुलियार जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 रन जोड़ चुका, 45 रनों का लक्ष्य। और जिस तरह 2 वाइड्स वेल्टन कल्ला कट्टे के गेंदबाजों ने फेंका था, उसी तरह 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं मदर इंडिया बुलियार के आरंभिक गेंदबाज, लेकिन अगली ही गेंद पर विकेट इस वक्त प्राप्त करने में सफल। एक्स्ट्रा क्विकर पेस थी और गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे चटक रहा है बल्लेबाज को वंचित करने के बाद मिडल ऑफ स्टंप पर। देखिए किस तरीके से हुआ था यहाँ पर और एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन। और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है 2 रनों के योग पर। हिफाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 0 पर गोल्डन डक के रूप में और 2 रनों के योग पर वेल्डन कल्ला कट्टे अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निस्संदेह जहां तक 45 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप की जरूरत है वेल्डन कल्ला कट्टे के बल्लेबाजों को। और पारी की पहली ओवर में विकेट खोने के बाद इस वक्त कुछ हद तक दबाव उनके ऊपर दिखाई देता हुआ और 2 लगातार वाइड फेंकने के बाद एक बेहतरीन कमबैक इस वक्त कर चुके गेंदबाज नौशाद। विकेट उखाड़ने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद जावेद और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज नौशाद की गेंदों का। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज जावेद के लिए नौशाद की गेंद। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बुड़ना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली कहते थे, लास्ट मोमेंट गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर की दिशा में और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, काफी बाहर की ओर निकल रही थी गेंद। और इस बीच बाई का इशारा अंपायर का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो 2 वाइड इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके और उसके बाद 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया और इस बार इस गेंद पर 22 रन प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। पहली बार हनीफ इस वक्त सामना करते हुए नौशाद की गेंदों का। नौशाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार हनीफ सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और जब तक गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर वेल्डन कल्ला कट्टे। और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गली के फील्डर को इस वक्त शॉर्ट रन पर तैनात किया गया है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था, करारा प्रहार करना चाहा था गेंद पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई और पहुंची सीधे शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज अपनी गेंदबाजी लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, बेहतर फील्डिंग, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। हालांकि अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को रोक लिया था बेहतर फील्डिंग के जरिए, लेकिन जब तक
थ्रो पहुंचे, बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर पहुंच चुके थे। एक रन पूरा करने के बाद 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 for the loss of 1 wicket, and in comparison after first over Mother India Boliar scored 6 runs. Meantime Weldon Nakallagatte scored 5 runs for losing 1 wicket. YFC Bajal ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ YFC Bajal and ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, नया ओवर शुरू होता हुआ और जावेद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी। अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर क्यों निकलती हुई लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और पैर पर टकरा कर गेंद जब तक फील्ड हो शॉर्ट थर्ड रन फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket at the start of the second over in fact। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त इनटू द गैप एज वेल, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं। जब तक गेंद को 20 गज के दायरे के बाहर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज। और जहां तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का तो 2 मात्र फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। तो पावर प्ले के अंतर्गत ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सिंगल रन एडेड टू द टोटल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद फुल इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट की दिशा में। फील्डर दौड़ कर डीप एक्स्ट्रा कवर से और जब तक वो गेंद तक पहुंचे थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास समय था कि वो 2 रनों के साथ अपने स्वस्थान पर वापस लौट सके। थोड़ी सी विड थी ऑफ स्टंप और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त स्कूप किया था गेंद तक पहुंचते हुए 2 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत नॉन स्ट्राइक रन पर यह विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। और रन के लिए सिर्फ नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज दौड़े थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और सीधा थ्रो पहुंचा फील्डर का गेंदबाज के हाथ में और गेंदबाज को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई उन्हें रन आउट करने में और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका। इट्स 11 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress। They are looking just little bit in trouble now, chasing the victory target of 45 in 6 overs. They are struggling 11 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress। तो number 4 बल्लेबाज number 4 batsman is now comes out to the middle wearing number 18 jersey for Weldon Kalakatte is Basit और वो इस वक्त बातिश और वो इस वक्त सामना नहीं कर रहे नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। ये गेंद इस बार बादल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑफ कटर डिलीवरी। गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन गेंद along the carpet कहना पड़ेगा, बिल्कुल जमीन के सहारे आए और अंतिम क्षण में थोड़ी सी डिविएट होकर अंदर की ओर आते हुए गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चुके। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। what was happened, that was a fantastic delivery from the bowler and he's just got the rid of the batsman और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। The problems are now more building up for Weldon Kalakatte। 3 wickets, 3 top interest wickets already back into the pavilion for them for adding just 11 runs on the board and a fantastic piece of bowling performance continuing here from Mother India Boliar। और यहाँ पर एक गेंद अभी भी बाकी है और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए इस ओवर में गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अंसार का आगमन यहां पर हो चुका है
और अंसार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज निजाम की ओवर की अंतिम गेंद का रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर थोड़ी से पीछे मौजूद, चतुरता के साथ हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त बल्ले पर लेने के बाद। और जब तक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 12 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन बने थे 5, दूसरे ओवर में रन बने 7, कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 12 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs and let's straight away coming back to the equation. 45 minus 12, that means 33 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs, and the asking rate is now gone up to exactly 8.25 runs per over. तो इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार बल्लेबाज अंसार। और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। केवल 4 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। सुबह के 11 इस वक्त बजते हुए धूप अपना प्रकोप इस मैदान पर ढा चुका है, और कहर कहना पड़ेगा इस मैदान पर ढा चुका है। और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का प्रकोप भी यहाँ पर बढ़ता नजर आता है, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस भीषण गर्मी तले आज का पहला मैच यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ। ये गेंद अच्छी गेंद थी और उन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड जस्ट प्ले दैट वन ऑन द वन साइड एरिया एंड ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर फॉर वेल्डन कलाकट्टे स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। और 23 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी, और रन्स इस वक्त चाहिए 32। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर एंड 1 more विकेट फॉलन। He just checked the shot at the last moment. स्ट्रोक को इस वक्त चेक किया था। Have a look at this in the replay. किस तरीके से हुआ था देखिए, राउंड द विकेट गेंद इस वक्त फेंकी गई थी और अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक को रोक लिया था और आखिरकार खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल, गेंद सीधे पहुंची सिले मिड ऑफ फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 4, रन्स बन चुके हैं सिर्फ 13। निस्संदेह नीलाकाश तले बादल तो इस वक्त दिखाई नहीं देते हुए, लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त वेल्डन कल्ला कट्टे के ऊपर साफ मंडराते हुए। 13 रनों पर 4 विकेटों को खो चुका है। और इस वक्त मदर इंडिया बोलियार्स के गेंदबाज बुलंदियों पर नजर आते हुए। दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप नाउ। Rashid, in these critical circumstances, the number 6 batsman is now comes out to the middle. वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त तैनात। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड्स को ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था और वाइड का इशारा कुछ हद तक सोच विचार करने के बाद अंपायर इकबाल ने इसे वाइड घोषित किया। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अंदर की ओर आते हुए स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड। गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को उछाला स्ट्रेट हिट एरिया पर। जब तक चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस गेंद को फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाज मुस्तफा गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग की दिशा में और रन्स इस बीच इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। तो हर गेंद पर
हर गेंद के बाद दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और एक हर गेंद पर रन इस वक्त बनाना जरूरी बन चुका है उनके लिए। और गेंदबाज मुस्तफा एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, शॉट फाइन लेग पर इसे बिना देखे रन लेके हड़बड़ाहट दिखाई बल्लेबाज ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और कुल मिलाकर एक गेंद अब बाकी उनकी इस ओवर में, और विकेटों को इस वक्त सही करते हुए अंपायर, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए, और ये जो हल्की सी हवा जो इस वक्त गुजर रही है मैदान की दाईं से बाईं और खिलाड़ी और दर्शक दोनों को काफ़ी हद तक राहत ठंडक दिलाती हुई इस भीषण गर्मी से, और इस भीषण गर्मी तले इस वक्त संघर्ष जारी है आज के इस पहले मैच में। विल्टन कल्लाकट्टे और मदर इंडिया बुलियार के खिलाड़ियों के बीच में अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि नॉट क्वाइट गेट दैट वन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। बेहतर ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर में रन्स बने सिर्फ 4। पहले ओवर में रन्स बने थे 5, दूसरे ओवर में रन्स बने 6, तीसरे ओवर में रन्स बने 3। तो यहां पर पहले ओवर में 5 बने थे, दूसरे ओवर में 7 बने, तीसरे ओवर में रन्स बने 3 ओवर के बाद स्कोर है इस वक्त 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर मुस्तफा का यहां पर समाप्त हो चुका है। आधा सफर तय हो चुका है, अर्धांश ओवर समाप्त हो चुके हैं, आधा सफर तय होना बाकी है, और आधे सफर में इस वक्त उन्हें रन्स बनाने हैं ठीक 30 रन विजय के लिए। Exactly 30 runs more. Now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries with a required run rate of exactly 10 runs per over. और चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ निजाम, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। ओवर की पहली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद वाइड, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद निजाम की एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, लगातार दूसरा वाइड, अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज इस वक्त 2 लगातार वाइड फेंक चुके हैं, और तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में 2 अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन इस वक्त प्रदान कर चुके हैं सामने वाली टीम को। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद चिप गया जस्ट ओवर एक्स्ट्रा कवर फील्डर सेट, गेंद पहुंची डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और छलांग लगाकर गेंद पर पहुंचना चाहा इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, उनके सिर के ऊपर से निकली, और आखिरकार गेंद को जब तक बैकअप किया जाता डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद ड्राइव किया, इस बार मौका जरूर, लेकिन ये मौका इस वक्त गंवा चुके हैं मिड ऑन के फील्डर। हालांकि जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी गेंद तक लपकने की, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद जमीन पर गिर गए, और आखिरकार बल्लेबाज जीवदान और 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके। अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गॉन फॉर अ क्विक सिंगल, इनफैक्ट ही लॉस्ट हिज विकेट, अपना विकेट यहां पर गंवा चुके हैं। जोखिम भरा रन चुराना चाहा था, और यहां पर उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। अपना विकेट गंवाने के बाद इस वक्त बल्लेबाज पेविलियन वापस लौटते हुए, और यहां पर 5वां विकेट गिर चुका है कल्लाकट्टे का 19 रनों के योग पर। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल फॉर वेल्टन कल्लाकट्टे। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगला मैच YFC Bajal will takes over Class 11 Chokebetu in the next match, and because of that I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है, नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है, और गेंदबाज इस वक्त यहां पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट।
Still, the problems are continuing for the bowler Nizam about his perfect length in the line at this situation. और एक बार फिर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर तब विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त निजाम। ये गेंद चिप गया स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर स्वीपर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का, तो कोशिश जरूर इस वक्त कर रहे हैं बल्लेबाज विल्टन कल्ला कट्टे की करारे प्रहार करने का, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। और निजाम अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। जिस तरीके का पिच इस श्रृंखला के लिए बनाया गया है, गेंदबाजों के लिए काफी सहकारी होता हुआ, यहाँ पर गेंद लगभग काफी तेज रफ्तार के साथ जमीन के सारे बल्लेबाजों की ओर आते हुए, और बल्लेबाजों को कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को गेंद को खेलने में। देखिए पिछली गेंद भी किस तरीके से लॉन्ग द कार्पेट आए थे एक्स्ट्रा क्विकर पेस के साथ, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 22 for the loss of 5 wicket after completion of 4 overs, 23 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 11.5 runs per over. So quite difficult task, but not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them, and let's see what will happen in the remaining last 2 overs. TV monitor पर इस वक्त दिखाया जा रहा है 23 रन 12 गेंदों पर बनाने हैं, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े, और रन मिलेगा जरूर, वाइड का भी इशारा यहां पर हो चुका है, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 24 for the loss of 5 wicket, 21 required in remaining 12 balls. 10.50 रन प्रति औसत से रन बनाने हैं 21, जबकि गेंदें बाकी हैं 12 यानी 2 ओवर में, और गेंदबाज गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बैक टू द बॉलर की दिशा में, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद निशाना दागा था इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 24 for the loss of 6 wickets now. They are looking deep in trouble. So 11 balls remaining, 21 runs required, और गेंदबाज इस वक्त निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, और गेंद इस वक्त टकरा चुकी है स्टंप्सों पर, और इस गेंद पर कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज। स्ट्रोक्स इससे पहले की खेले गेंद उनके बल्ले को वंचित करते स्टंप्सों पर जा टकराई। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए। तो 7वां विकेट गिर चुका है। इट्स 24 for the loss of 7 wickets, 10 balls remaining, 21 runs required. तो सिर्फ 3 विकेट सुरक्षित, और इक्वेशन और भी कठिन होता हुआ इस वक्त कल्लाकट्टा के लिए। अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अगर रिवर्स शॉट इस गेंद पर खेलने की कोशिश नहीं करते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला पॉइंट पर, गेंद पहुंची लेकिन मिसफील्ड, और गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में नेट पर टकरा चुकी है। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन
प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, 19 टू गेट नाउ। और एक बार फिर से ये गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड। 27 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 18 टू स्कोर नाउ फॉर विक्ट्री। और निजाम एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट टर्न की दिशा में एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। और कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदें इस वक्त फेंकी जा चुकी है 5 यानी 7 गेंदें बाकी और 18 रन चाहिए। ये गेंद उछालना चाहा, चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी और ये डॉट गेंद के साथ ओवर की मुकम्मल यहां पर हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 7 विकेट के नुकसान पर 18 रन की दरकार अंतिम ओवर में बचे हुए 3 विकेटों की मदद से। अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके और छक्के ही वेल्डन कल्ला कट्टे का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं इस अंतिम ओवर में। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस मेगा श्रृंखला का। और जहां तक सवाल है इस अंतिम ओवर का, तो देखते हैं इस अंतिम ओवर में बल्लेबाज वेल्डन कल्लाकट्टे के 18 रन बना पाते हैं या नहीं। गेंदबाज मंसूर इस वक्त मोर्चे पर लगाए गए हैं और वो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नया ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार गेंद को ट्राई किया खूबसूरती के साथ सिली ऑफ फील्डर द्वारा मिस फील्ड। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर दूसरे रन के लिए स्ट्राइकर है, नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो करते हैं, निशाना सही बैठता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी पर पर्दा गिर सकता था, लेकिन गेंद को रिसीव करने के बाद गेंदबाज ने थ्रो किया स्ट्राइक रन की और फलस्वरूप बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 29 16 runs they have to score for victory, 5 balls to go in their innings। मंसूर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं बच पाएंगे और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। एंड 29 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स नाउ, 16 नीडेड इन रिमेनिंग लास्ट 4 डिलीवरीज। 4 चौकों की जरूरत अंतिम 4 गेंदों में 2 विकेटों की मदद से वेल्डन कल्लाकट्टे को विजय के लिए। नंबर 10 बल्लेबाज का आगमन होता हुआ और मंसूर गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए मंसूर की गेंदों का और अपनी अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा जरूर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, लेग बाय का इशारा एंड नाउ द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ वेल्डन कल्लाकट्टे। 15 they have to score in remaining 3 deliveries, 2 sixes and a boundary required in the last 3 deliveries। again चूके that's it, bowled out, 1 more wicket fallen, wicket number 9 down, 30 for the loss of 9 wickets and now it's almost all over for Weldon Kallakatte in the last 2 deliveries if the bowler cannot bowl any no ball or wides in remaining last 2 balls. So 15 runs required in the last 2 deliveries and they got last wicket kept intact. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ YFC ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು। नेक्स्ट वन चूके ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, लास्ट बॉल रिमेनिंग, 15 रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री एंड द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज मंसूर इस वक्त तैयार, मैच की अंतिम गेंद down the track, misses, not quite mid-wicket, that's it, 14 runs comprehensive victory for Mother India Boliar against Weldon Kallakatte and with that 14 runs victory they are through to the next round of this tournament. Next match YFC Bajal will take over class 11 Chokkabettu and that match starts with the shot while
I request Javed, the bowler Javed of Mother India, please, Javed of Wilton Kallagatte, to please report to the stage to receive the 500 rupees cash prize to grabbing the wicket of Mansoor. Javed of Wilton Kallagatte. So, comprehensive victory for Mother India by 14 runs against Weldon. And now the next match, YFC Bajal will take over Class 11. The second match of the day 3 of YFC Trophy Season 2 2023 is now coming up live exclusively right in front of you. And we'll be back right after the short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में जब जब यहाँ पर आज का दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. धन्यवाद. थैंक यू. The man of the match, the award goes to the man who performed with the bat as well as in the ball. He scored 7 runs and captured 1 wicket for conceding just 6 runs in his 1 over. Mustafa of Mother India Boliar adjudged the man of the match. I request Mustafa of Mother India Bowler, please come on to the dais and receive the man of the match prize from organizer. Thank you. And we'll be back within a moment with Satish. Thank you.
Scorer. So, welcome back for the match number 2. YFC Bajal versus Class 11 Chocobetu. After winning the toss, captain of Class Chocobetu elected to field first, so that opening batters of YFC Bajal, they are in the field. In the middle of pitch, Asgar as well as Ansaf. Asgar is in striker's end, Ansaf is in non-striker's end, and bowler will go into starts the proceedings here. It's a 5 overs game. Please note 2 overs going to be a power play, and 4 bowlers can bowl 1 over each, and 1 bowler can bowl 2 overs. Here is the first ball. Right arm over the wicket balls. Beautifully balled. Right on the money, right on the target. But this time ball is just dripping down the legs outside the run rec stump, so that leg by call by umpire. First run comes up here for team YFC Bajal. YFC Bajal being the team, the host of this cricket tournament, local team participating and they are enjoying their home condition here in this most beautiful cricket ground here in Shantinagar. One without loss of any wicket. Bowler Zahid for Class 11. Class 11 Chocobetu. One more very reputed the team from Chocobetu, the region of Krishnapur and Chocobetu and Suratkal. This time going for the single chance of run out, but wide throw coming from the field at a short cow point region, so that batsman Ansaf is off the mark, and with that single scoreboard moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. The fielders in the deep, one at mid wicket and the one at deep wide is long off. There is a short back with point, short cow point, short mid off. One fielder is short mid on, short mid wicket and short square leg. Here is the next one. Right arm over the wicket outside the run next time. Going to be a punishable from umpire, and Arif gets his the first exercise of the morning. And good morning to Arif Jokate. And today the last day of this cricket tournament is officiating along with Nasir Bajal at square leg. Third umpire Mr. Iqbal of Gori Young Boys, going for the drive, missing it completely, but ball not missing the leg. It's going to be a leg by, and that leg by scoreboard numbers on to 4 without loss of any wicket. Fantastic day for cricket. It's a bright sunny morning today itself. We are witnessing some very hot condition today. 31 degrees Celsius of temperatures recorded morning itself. Outside run off time, beautifully balled. That is a very good line to ball to the right hand batsman. Little bit outside the run off option, but well within the reach of the batter, and there is no chance at all for any run. Zaid bowling a very tidy line and length. 4 without loss of any wicket. Now looks like the batsman has got problem with the bat. He wanted to change his bat. Wait and see. Ansaf not satisfied with the bat. And this is match number 2 we are watching of this prestigious YFC Trophy Season 2 2023, which is proudly organized by YFC Bajal, Nanthoor, Mangalore. And I request the fielding team and the batting team to make it past. ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಪಿಚ್ ಕಡೆ ತಿರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ BFC ಬೆಂಗ್ರೆ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಮಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ BFC ಬೆಂಗ್ರೆ. So Ansaf will going to face this. Ansaf drives her nicely down to Radisha, long on, almost in the mid-wicket region. Ansaf is a very good striker of the ball. He's an experienced campaigner, got experience of playing for the Gori Young Boys as well for for a few years, and he's from Shine Mangalore. Of course, his first is started his career for playing for Shine Mangalore. He's a very good, decent cricketer and very good batter. And here is the next one outside the leg stump, going to be a wide with that excess cover numbers on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number 6 on the board for the loss of without loss of any wicket in the over number first in progress. Zahid get ready bowling to Asgar. Asgar is a very good striker of the ball, facing his next delivery, and Zahid right arm over the wicket bounce. This time Asgar tried to post that one, tried to clear the infield, but not really getting that one from middle of the bat. So good over, decent over there from Zahid. Just 6 runs came from that over. After completion of over number 6, searching for the right track, the team YFC Bajal managed to get 6 without loss of any wicket. Coming back this tournament, absolutely it's a fantastic cricket tournament organized by YFC Bajal Nanthoor, of course under the great leadership of Nazir Bajal, Ashraf
Janab Ashraf, the corporator of Mangalore City Corporation, and then of course our local hero is none other than Jabbar for YFC Bajal, and then of course each and every organizing committee member done all hard work to make this possible. 6 without loss of any wicket, and first bowling change, and from the commentary box, and looks like the bowler has been introduced from the commentary box, and it's Dawood is from the commentary box, and will go into bowl second over. Classic Chocobeto, just like the water name they got classic. Some good classical players are there in that playing 11 of Classic Chocobeto. And here is Dawood, right arm around the wicket to the right-handed batsman Asghar. Ansaf the protection plays it down to short middle, not for run, dotted delivery, and each and every dot ball will go into be the celebration for this fielding team. Classic 11, no, exactly. They're playing a 5 overs game, and each and every run going to be very crucial here. Right arm over the wicket. This time bowled him, cleaned him up, beautifully bowled there by the bowler. This time Ansaf playing with the wrong line, try to clear the infield. The intention is that there from Ansaf is to get over the top of the mid-on fielder, but by doing that he's just missing the line completely. The wide of the crease that ball is bowled, and look at that one, nowhere near to the pitch of the delivery spat, and he missed it completely. Then bowler not missing that opportunity to hit the stumps. So first wicket is get back into pavilion. Asghar is a batter, is back into pavilion. The 6 for the loss of Ansaf is a batsman, is back into pavilion, and Asghar is still there in the middle, and Abuka is a new batter in. I will go into face his first delivery. Abuka, the very popular name, very experienced campaigner. Of course, I'm watching him for playing for Mazda Kannur, even in the above 40, the Masters Trophy. Outstanding performer. And watching him is performing in Urua Cricket Ground UCG. Such a great bat player. And oh, that was a beauty. Absolutely beauty. That ball is nipped back what the batsman is expecting. The more than that ball is, they got a deviation. Such a different delivery compared to the previous one. He bowled Lekata. This time a sharp incoming delivery. Little bit ball is missing. Just a whisker that ball is missed the stumps. Otherwise, it's very close call. Absolutely close call. And the batsman survived. And again, the beautifully bowled. The bowler is really doing a fantastic job here. Is Dawood creating the problem for the experienced campaigner. And Abubakar is famously known as Abuka, but proper name is Abubakar, the very good wicketkeeper batter for the side. Is just struggling to get his first run. Dawood has been outstanding. 4 deliveries, just 1 wicket, and no run conceded yet. Again outside line of stump, and just steering it down to short third man division for a single. With that single, Kobarna moves on to 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Excellent going here for Chocobetu, and because they're on the toss, selected to field first, and they're really bowling as for their field and as for the condition required. That brings Asghar into strike now, and Dawood bowling its final time. Right now over the wicket, bowler's back drive, beautifully driven, just quickly hits the infield, running down to deep long off boundary, but the fielder will going to cut it off. The long on fielder is running very quickly towards the direction of the ball. In the straight version, he fields the ball and returns the ball, but meantime the batsman crossed off for a couple of runs. So with that couple of runs, Kobarna moves on to 9 for the loss of 1 wicket. Excellent running with the wicket, it's a very good looking stroke, straight down the ground, and they got a couple of runs for that. So first gone, it's 9 for the loss of 1 wicket. 2 overs gone, it's 9 for the loss of 1 wicket. So 2 overs completed. The third over will going to start, and wait and see which bowler will going to start the third over.
So, third over will going to start. Razik. Razik brought into attack. Razik with the jersey number 00. Razik will go into start the proceedings. Jersey number 00. The most of the players if we go to the international cricket, and the few players wearing that 00, and I still remember Arshal Gibbs wearing that 00, and a very um, aggressive opening batsman Arshal Gibbs wearing the 00, because when he started his career, then the year is 2000, so 00, and that's what he is mentioning, that 00 in his jersey number 00, Arshal Gibbs. Then after that he is converted and went to 01 in the year 2001, and when he was playing for South Africa, and lot of stories behind the jersey number of cricket players, and everybody knows that Virat Kohli wearing a jersey number 18, 18, and that's one reason, because his father is died in that particular date. It's emotional touch in that jersey number of Virat Kohli, because here is one more chance of run out there, but umpire says it's out. Batsman lost his bat. Abu Bakar. He's lost his bat. That's why he's finding himself short of his crease. And that's what happening sometime. Bad luck. Absolutely bad luck. Look at that one. Good return from the fielder. The bowler this time able to complete the... Oh, that bowler directed. Absolutely directed. And batsman well short of his crease. Just if we see in the replay what really happened. The ball hits the stumps. Just I want a little bit need to go back to see that the batsman absolutely short of his crease, and umpire rightly so. No question of asking for the third umpire. It's gone. So wicket number 2 is gone. It's 11 for the loss of 2 wicket. Just we were talking about the jersey number 18, the story. The Virat Kohli wearing that number, because when he was performing against Bangalore in Ranji Trophy, then when he was batting in the middle, the news which came from his home, that his father is died. So even listening that news, he's continues his batting and scored 80 plus runs, and that's what the story behind jersey number 18. And after that, for the memory of his father, is put 18, jersey number 18 behind his jersey number. What a fantastic stuff here from Chokabetu, and all the bowlers are doing a great job here. We were talking about that jersey number 00, but here is a 00 just sending every batsman for 0, and the 2 ducks for his bowling. What a 2 ducks, what a jersey number of that bowler, and he is producing some ducks of the opposition players, and that's the speciality of that jersey number, what the bowler is wearing. And one more duck is back into pavilion of YFC Bajal, are looking in a trouble. 11 for the loss of 3 wickets. So new batsman in is Azim with the jersey number 33. Lot of responsibility in the shoulder of the new batsman Azim, because the wickets are falling, and very hard to combine the partnership against disciplined bowling performance. Again, nicely plays it down. That is a good technique to play when the bowler is bowling along the carpet. The reverse sweep and sweeping the ball is very important. So 12 for the loss of 3 wickets. They're coming back for the second, and they're going for the second, and quite easily. And with that, couple of runs covered, numbers on to 14 for the loss of 3 wicket. We are coming back to the jersey number, and especially in underarm cricket, the over number 3 completed after completion of over number 3, and umpire Iqbal is sitting behind me, and Iqbal knows that for our time, our olden days, there is no jersey number, because there is no jersey at all for us, isn't it? There is no one there to donate jersey. Even we are playing with a bad foot, there is no shoes at all.
But in the present cricket, everything is provided by the owner of the team. Every tournament they are getting new jerseys, new shoes, everything is provided. But nowadays we are playing for our team, spending our own money. And Iqbal is the one. After the jersey which is launched, I think is after IPL that the concept of so I think is the World Cup, the concept of jersey is implemented, and Iqbal is wearing that same jersey number 00. Right, Iqbal? Yes, I am right. I am seeing him wearing that 00 jersey number when he is playing for Gori Young Boys. And but I want to listen the story of that jersey number 00 from Iqbal. Any other hidden story in that 00? And but I think everyone has got their emotional stories in every jersey number. It's a 14 for the loss of 3 wicket. Around the wicket balls. Outside and off slam going for a drive. One more wicket is back into pavilion. The disappointment which continues here from YFC Bajal's batsmen. The march past continues from pitch to pavilion. And one more wicket is back into pavilion. Going for the slash. And got a healthy outside edge of the bat. Healthy edge. And wicketkeeper behind the stump has got enough time to run across this right to take the catch. One more wicket is back into pavilion. It's 14 for the loss of 5 wicket. Yes. But it's very nice to see that after the cricket lovers enjoying the game of cricket of Iqbal, Gori Iqbal, in the during 80s, end of beginning of 90s and 2000, is dominated. Definitely is dominated under-arm cricket. But after that is retirement. But cricket lovers watching him by doing the umpiring job. It's very good to see. Even Nasir Bajal, Arif Jokate, they're all former cricketers. Absolutely, whenever the former cricketers are coming to the field of umpiring, it's so good because they know exactly each and every aspect of the cricket, the rules and regulation, and the body language is so important. They know exactly the what condition of the cricket. It's good to see that the former cricketers coming to that cricketing field in the official field as umpire, and even of course some players coming into the commentary field as well. If you see the international cricket, the most of the commentators are the former cricketers. They're getting the chances and getting more than what the field umpires getting. And 15 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. So badly required one big partnership and one big over for YFC Bajal if they wanted to win the match, because so far team classic 11, their classic bowling performances continues. Zahir bowls, nicely turns that one down to mid-wicket division. Technical good cricketing stroke there from Tausi, and he picked up a single for that. With that single, score numbers on to 16 for the loss of 4 wicket. That brings Shiva into strike. Now Shiva, the left-hand batter, well, can he able to get the advantage of the power what left-hand batsman is getting? Again, nicely driven, but lack of placement straight to the hands of short extra cover. They're trying for the run out, but not quite enough to stop the single from Shiva. With that single, score numbers on to 17 for the loss of 4 wicket in the over number. And 17 for the loss of 4 wicket. 4th over is in progress. Right arm over the wicket. Nicely driven, but lack of placement. Again, the fumble from the fielder. Chance of run out, but umpire will going to ask for the third umpire. But the question is raising here is that the bails are off. Of course the bails are off. Whether the bails which is off from the ball or from the hand, that will go into a $1 million question here. That's why umpire Nasir Bajal to try to take the advantage of the third umpire. And the ball which is came into the hands, and ball will definitely going to hit the stumps, I think so. But umpire have to see that, and whether the ball touch the wicket or either hand touch the stumps, that's what they're going to be the problem here. And Iqbal will going to see, and even the technician will going to get whether the ball which is touched the stumps or wicket
it's a not out. Whichever going to touch, but batsman is safe. That's a big issue here. It's not a big issue that whether the ball hits the stumps or hand hits the stump. Whatever it happens, batsman is safe because he's already crossed the line. So that's what umpire is thinking about. Not out, which is a call. And Nasir Bajal did a right job that because the bowler is so confident he got a wicket. That's why he's asking for the third umpire, not to take any risk. 18 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Classic Chocobeto. Classic performances continues from the bowling. Zahir bowls. Oh, just look at the wicketkeeper behind the stump. He's been very confident. He's very confident he's got a wicket. But umpire is not that much of confident enough to raise his finger. That's why he's asking for the third umpire to give the judgment. And will it go to be out or not? It's the second time it's referred for the third umpire. And as for the rules and regulation of present cricket is concerned, the on the line always going to be out, and there need to be a little part of your boot inside the line, and that's what umpire may be having a little bit doubt in the mind whether the boot, whether the shoes of the batsman, which is in the air or it was inside the line. That might be the question here is raising. If it is on the line, it's going to be out. If it is outside the line, it's going to be out. And it's going to be a close. I want to little bit zoom which is required from the technicians to see that, because while he's zooming you can get whether any part of the boot is inside the line, little part. So it looks like the batsman, maybe the on the line what umpire want to see, the on the line is definitely going to be out. But umpire have to get a clarify. It's going to be a very close one. It's a very difficult one. It's not so easy. And when the bowler removes the bails, now the ball came to the hands of the wicketkeeper. Wicketkeeper removes the bails. Now it's a not out. It's a not out. Little part, a little bat, fractionally the little part inside the line, and that's why it's a safe. Of course, good work, absolutely good work there from wicketkeeper behind the stump. Fantastic work, no doubt at all. But unfortunately, when the bails are off, then a little bit part of his bat is bails which is not uprooted. Of course, he's done a stump when his back foot is a little bit lifting off. When the bails are off, he is just able to put his shoes inside the line. But it's a very difficult one for the third umpire. And Iqbal, once again, I have just mentioned, is a legend. And you know exactly what really happened. And it's definitely the benefit of doubt going into the favor of batsman. Right arm. Bowls again, a wicket keeper. This time it's been outstanding. Again, this time the batsman knows. The batsman knows he's walking. This time batsman is walking. But the third umpire need to give the decision because the field umpire referred for the third umpire. But the batsman is so confident. He is very confident I am out. That's why himself is walking. And I think it's gone. Absolutely gone. Good sportsman spirit shown there by the batter. He's not really waiting for the decision of the third umpire. He knows exactly he's out of the crease. But fantastic work continues here from wicketkeeper behind the stump. Automatically done. It's not just like as a clean collection. It's automatically done. And it's a fantastic job continues here from the wicketkeeper behind the stump. 18 for the loss of 5 wicket. 18ಕ್ಕೆ 5. 19ಕ್ಕೆ 5. Let me correction. 19. Wide deliveries, so helping the total score of YFC Bajal to take into 15. 19 for the loss of 5 wicket. So last over is in little correction. Again, wait for, it's definitely going to be very interesting. They're going for the single. The Arif and
the umpire Nasir Bajal will go into to see that whether the deliberate padding. If the batsman is not offering a stroke, it's not a run, not a run. If it is not, it need to see that the intention of the batter, and if it is a deliberately done, it's a no run scored. If it is not deliberately done, then a run is considered. It's a deliberate. What umpire says, absolutely right, because the batsman is not really surprised seeing that ball is onto his legs, so he's not really offered the strokes and let the ball hit his legs. So is going for the run. Umpire rightly so, not given any run for that leg by. It's batsman once again back to his bowling mark. 19 for the loss of 5 wicket. Razik. Again, this time they're appealing for the caught behind. They're appealing for caught behind. They're very confident, but umpire not confident enough. The wicketkeeper saying that he's got a wicket, but here is an opportunity of run out in the non-striker's end. But umpire is not having got evidence enough that going to be a wicket, the catch behind the wicket. It's a very difficult one, wicketkeeper, sometime, because just look at that one. Is just coming down the track using his feet. It's a ball. It's a boot. And ballooning up in there, but might be the very difficult one. Maybe the ball is grounded after ball hitting the bat, grounded, then ball hitting the boot. That's why umpire says not out, rightly so. Again, down to mid wicket region for a single, and with that single, scoreboard moves on to 21 for the loss of 5 wicket. It's over number last in progress. YFC Bajal will be able to get another 5 to 10 runs in 3 balls. It's going to be a fighting total. The last thing what YFC Bajal is wanted to do here is that remaining 2 deliveries, they need to get some runs. They need to get some runs. Coming down the track again, using his feet. They're going for... oh my goodness! The batsman is not running. Nizam striking the ball, but there is the opportunity of single. The non-striker is almost running towards the striker's end, but the striker is going back. Striker is going back. Maybe they're thinking about they need to deal with the last 2 deliveries of their innings, and he's very confident that I can get one big shot out of that 2 balls. If it is not able to do that, so it's going to be a loss of 1 run. If they're going to lose the match by single run, that run will going to be a very crucial. 21 for the loss of 6 wicket. Arif is a new batter. He's walking towards non-striker's end. And Razik is looking so far very good, fantastic piece of bowling. The bowling is second over. Coming down to track, nicely driven towards a mid wicket, but a very good collection and a good throw coming from the field. A chance of run out and direct it. Umpire says not out. The couple of runs is conceded here, and of course the throw which is came from the fielder in the mid wicket is so good, but the bowler is collecting the throw in front of the stumps. That's what the problem. They need to be behind the stumps, then it's going to be, but 2 opportunities will going to create it. One is to direct it if you stand behind the stump. Then second one is the opportunity of collecting ball. Just look at what I'm talking about. If it is behind the wicket, it's going to be a chance of direct it, and second chance to making a run out. But he's collecting the ball well in front of him, the stumps, and the batsman is safe. 23 for the loss of 6 wicket. Again, nicely bowled there by Zakir Razik. Then over number by completed, and over number 5 also completed. So at last, YFC Bajal, the managed to get 24 runs in their stipulated 5 overs, and they set a record of 25 to win the match for the opposition. Chocobetu, Chocobetu, class 11 Chocobetu. And just look at the scorecard. Absolutely disappointment. There is no double figure. All we can see that single digits. And the highest score which is going to be a 4. 2-4. There was one from Asgar and one from Tausi. And all we can there see that disappointment performance continues. Nizam is unbeaten with the 3 runs. But that all that because of class bad bowling performance from class 11 Chocobetu. The Zahid is the leading front of, and 1 over 4 runs, no wicket. And Dawood is very impressive, 1 over 3 runs, 1 wicket. And Razik picked up 2 wickets in 2 overs. And then Zahir also bowled good over, 4 runs and 1 wicket. But extras really helping the total. 5 extras is the highest total score. Highest score which is contributed for the total of that's a bowling summary and batting summary of both teams. And we are coming back to the chasing. And before the chasing, we're going to start off
Class 11 Chocobeto, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And Gopi definitely going to explain the many things about untramped cricket and even international cricket, because he is the one from 28 years. From long 28 years, he's got a lot of experience as a commentator, and it's always my privilege that I'm having sharing mic with him in the last 16 years with the 200 plus cricket tournaments with him. And it's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Before that, I request Shine Bantwal as well as BFC Bingre. This is a second call for you, the second and last call for you to come and report your team in our official chart. ದಯಮಾಡಿ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ BFC ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. And it's over to Gopi, and he will go into tell everything about the cricket, especially about Gori Iqbal and many stories, hidden stories of Iqbal. And I think some more than me, Gopi will go into explain you everything about Gori Iqbal. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, और क्रिकेट गतकाल के अंतराम क्रिकेट के बारे में काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपने दी। तो इसके लिए हम सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से आपका हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि 16 साल से मैं आपके साथ माइक शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखला पर साथ मिलकर आंखों देखा हार सुनाएंगे। और जहाँ तक सवाल है, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा आप में है। आप एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे अपने क्रिकेटिंग डेज में। मैं तो सिर्फ आंखों देखा हाल सुनाने वाला कमेंटेटर हूँ, लेकिन आप खिलाड़ी के साथ साथ कमेंटेटर भी रहे हैं, तो खिलाड़ी भी रहे हैं कमेंटेटर के साथ साथ। तो मेरे से ज़्यादा तजुर्बा आप में है, और इसलिए ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे को आपके साथ इन 16 सालों में माइक शेयर करने का मौका मिला। तो एक और बात है, तो इकबाल ओटी आउटस्टैंडिंग टेक्निकल बैट्समैन, जिसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कि अपने क्रिकेटिंग डेज में ओटी के रूप से जाने जाते हैं, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल बैट्समैन कम अटैकिंग। तो मैं जरूर, जहाँ तक मेरे 27 साल के कमेंट्री के करियर में देखा है, इकबाल उन बेहतरीन अंडरआर्म क्रिकेट बल्लेबाजों में से, खिलाड़ियों में से एक जाने जाते हैं, जो मैंने आंखों देखा सुनाते हुए जिक्र किया है। तो यहाँ पर करीबन 20-25 साल पहले जब गोरी यंग बॉयज उन्नति में था, इस बार पहली गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की, और गेंद को इस वक्त बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर। तब इकबाल बैकबोन कहलाते थे, आधार स्तंभ कहलाते थे गोरी यंग बॉयज के, और उनकी कई बेहतरीन पारियां मैंने देखी है। और निस्संदेह आज वो अंपायरिंग का कार्यभार निभाते और अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन अंपायरों में से एक जाने जाते हैं। तो हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आगे अंपायरिंग फील्ड में उनका भविष्य उज्जवल हो। और जहां तक सवाल है, सीधे इस मैच में लौटते हैं। तो इस वक्त सतीश और इकबाल दोनों का अभिवादन करते हुए एक बार फिर से हम इस मैच में लौटते हैं। 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और क्लास 11 जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और माफ कीजिए द्वितीय बारी में बल्लेबाजी करता हुआ, इस बार गेंद को अजीब और गरीब ढंग से खेला स्लिप डाउन पर। और क्लास 11 जो कि द्वितीय सत्र में इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ अपना पहला विकेट खो चुका है। इस वक्त लक्ष्य है उनके सामने 25 रनों का, 25 द टारगेट सेट बाय YFC बजाल फॉर क्लास 11 चोकाबेट्टू। और जहां तक सवाल है, इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का, तो 23 और रनों की जरूरत है इस वक्त। तो इस वक्त 2 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है, इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का 23 और रन चाहिए। नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है।
दाऊद का आगमन यहाँ पर होता हुआ और दाऊद इस वक्त स्ट्राइक रेंज की ओर कदम बढ़ाते हुए फैजल तौसीफ माफ कीजिए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है एक बेहतर साझेदारी की जरूरत है इस वक्त क्लास 11 चौका बेटे को। और अगली गेंद ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। Two for the loss of 1 wicket. तो यहाँ पर इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था तो ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव करती है इस वक्त लिमिट ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास रन चुराने का कोई अवसर नहीं है और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए तौसीफ। और जहाँ तक YFC बजाल का सवाल है जो कि मेजबान टीम है इस श्रृंखला का, तो इस वक्त उन्हें उनके गेंदबाजों को अगर 23 रनों के अंदर रोका रखना है बल्लेबाजों को तो सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की इस बार बेहतर गेंद थी। अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला। इससे पहले के शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता 3 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 4 overs remaining in the innings. 22 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 5.5 runs per over. ये तो 25 टारगेट है तांडित है 22 they have to score for victory. In fact 3 for the loss of 1 wicket and 25 the target for them. Still 22 they have to score for victory and now they are 3 for the loss of 1 wicket after completion of first over. और गेंदबाज दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए निजाम और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार जाहिर और ओवर की पहले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाऊद माफ कीजिए स्ट्राइक लेते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला था खूबसूरती के साथ। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले किस तरीके से गेंद कुछ हद तक मिडल ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और अंतिम क्षण में गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला एंड फील्ड क्लियर करते हुए और पावर प्ले का फायदा यहां पर उठाने में सफल और गेंद आसानी के साथ कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है क्लास 11 चौका बेटे को एक साझेदारी इस वक्त पार्टनरशिप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त निभानी होगी और ये दोनों बल्लेबाज उस कमी को पूरा करने की कोशिश यहां पर करते हुए और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से निजाम गेंदबाजी करने के लिए तैयार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी ड्राइव किया गेंद को गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्वीपर इस वक्त मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत इस वक्त YFC बजाल के गेंदबाजों को ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर लॉन्ग द कार्पेट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर
और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और ये गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन मिलेंगे एक इस गेंद पर। डीप एक्स्ट्रा कवर स्वीपर जब तक गेंद पर पहुंचे और गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ बदल सके। 9 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। एक बार फिर से गेंदबाज निजाम की गेंद है। ये गेंद इस बार गेंद को बल्ले तक आने दिया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, एंड दैट वाज स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन टू अ डीप एक्स्ट्रा कवर एंड ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है अगर क्लास 11 चौका बिट्टू के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें अब तक 7 रन बन चुके हैं। और निजाम एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन फॉलो थ्रू में ठीक तरह से गेंद को फील्ड करने में सफल है। और जब तक खुद दोबारा अपने दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 11 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs. So good over in class 11 Chokabitu's point of view came to an end. 8 runs came from it, and after 2 overs, it's 11 for 1. तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चंद दिन पहले नेत्रावती ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेली गई थी, वहाँ उसमें विजेता होने वाले विजेता और रनर्स अप जो टीमें हुई थी, इनमें बेंगलुरु और जॉली फ्रेंड्स बजाल दोनों इस श्रृंखला से, इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब दिलचस्प बात यह है कि इस श्रृंखला में नया चैंपियन यहाँ पर कौन बनेगा, नया विजेता और उपविजेता कौन कहलाएगा, इसका जवाब आज शाम को हमें मिलेगा। तो इस वक्त संघर्ष जारी है आज के दूसरे मैच में क्लास 11 चौका बिट्टू और YFC बजाल के बीच में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए तौसीफ, जो कि अपना दूसरा ओवर, पहला ओवर बेहतर वो फेंक चुके हैं, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और 1 विकेट भी उन्होंने पहले ओवर में प्राप्त किया था। और अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए ये गेंद, पहली गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई जमीन के सहारे। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस बीच नहीं मिलेगा, इसको डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े जब तक फील्डर पहुंचे, थ्रो पहुंचे स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन चुरा चुके थे। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी विजय के लिए 12 और रन चाहिए। सेकंड विकेट दांगे, थर्ड विकेट कुड़ाई, फर्स्ट बका फोर्थ अब ये नंबर है कांटेक्ट नंबर इजा इस बार लेग स्टंप पर आते हुए तो इस वक्त स्कोर रुक चुका है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ स्लिप ऑफ की दिशा में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 रन चाहिए, 14 गेंदें बाकी, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। और इस वक्त क्लास 11 चौका बिट्टू को चाहिए एक बेहतर बल्लेबाजी, जबकि YFC को चाहिए एक बेहतर गेंदबाजी। और देखते हैं क्या होता है इन बचे हुए 14 गेंदों में। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, गेंद पहुंचे पॉइंट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन निशाना इस वक्त स्टंप्सों पर नहीं टकराया। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, निशाना स्टंप्सों पर टकरा था, तो वहां पर कुछ हद तक मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज, लेकिन अंतिम क्षण में निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलते हुए स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर
third in progress. 13 balls to go in their innings, and 11 more runs now they have to score for victory. The equal battle is now continuing here. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया खूबसूरती के साथ, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद आती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट के गेंद को इस वक्त खेल दिया कवर पॉइंट पर। जब तक डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के समाप्ति, 3 overs completed, 15 for the loss of 1 wicket, 10 runs to get from remaining 2 overs, that means in 12 balls, and the equal battle is now continuing here. Next match, Shine Bantwal will takes over BFC Bengre, and that match is now coming up live exclusively right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for the next match. And let's straight away coming back to this match, and 10 required of 12. There was a long discussion going between the fielders of YFC Bajal that who will bowling the next over. और देखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी किसको सौंपी जाती है। फिलहाल इस वक्त एक लंबी बातचीत यहाँ पर जारी है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो कई बेहतरीन जानकारियां अंडरआर्म क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में मेरे काबिल दोस्त सतीश ने दी, और निस्संदेह ये जानकारियां हमें अंडरआर्म और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में और जानने में काफ़ी सहकारी होंगे, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसी कई जानकारियां हमें मिलती रहे। तो यहाँ पर 2 ओवर का खेल बाकी है, 10 रन बनाने हैं, और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सुकेश इस वक्त अपनी नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, डॉट गेंद हो चुकी है यहाँ पर। पहले सोचा कि गेंद को शफल होकर रन साइड पर उछाला जाए, अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदला, गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आया, लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए, और विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया अपने आगे की ओर आते हुए। 11 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए, और मैच में कशिश अभी भी बरकरार रहा। दोपहर के 12:05 यहाँ पर बच चुके हैं, और धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ। निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला YFC ट्रॉफी 2023-2023 एडिशन 2, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया YFC बजाल नंतूर मैंगलोर ने इन एसोसिएशन विद द लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन, इनके सहयोग से। और ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई जनाब जब्बार इनके सारथ्य में। और आज इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन का द्वितीय मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद हल्के से ओवर पिच गेंद थी, इस बार मिसफील्ड हो चुकी है, वहां पर मैं गेंद को पकड़ने में सफल। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। गेंद पर झपकना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अपनी दिशा को बदलते हुए सीधे उनके बाईं ओर से निकले। नेट पर टकराने के बाद जब तक दोबारा खुद उनके साथ उनके द्वारा फील्ड हो, पीछे की ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन पूर्ण करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 8 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 10 डिलीवरीज। 10 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त क्लास 11 चौका बैठने को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार YFC बजाल के गेंदबाजों को। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, मिसफील्ड, बल्लेबाज को दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा सही रन पर, लेकिन नहीं जी नहीं, यहाँ पर बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। थोड़ी सी मिसफील्ड होते हुए स्वीपर कवर फील्डर द्वारा, और जहां तक सवाल है इस वक्त दूसरे रन का, तो दूसरा रन इस वक्त तेजी के साथ बल्लेबाज ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा पूर्ण कर लिए है, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 6 रिक्वायर्ड ऑफ 9 बॉल्स नाउ।
और इक्वेशन कुछ हद तक आसान होता हुआ इस वक्त क्लास 11 चौका बिट्टू के लिए। और अब दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त बल्लेबाज गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अच्छी गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में। गेंद को जगह बनाकर ड्राइव करना चाहता लेकिन जगह नहीं बना पाए, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेला और नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज दौड़कर काफी आगे चले गए और आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइक रन पर गेंदबाज द्वारा। और ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज राहिल और तीसरा विकेट इस वक्त खो चुका है यहां पर क्लास 11 चौका बिट्टू 19 रनों के योग पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 6 balls to go, in fact 8 balls to go and 6 more runs now they have to score for victory. तो एक और बल्लेबाज 00 नंबर की जर्सी पहने हुए मैदान पर उतरते हुए। जहां तक 00 नंबर का सवाल है, मेरे काबिल दोस्त सतीश ने अंग्रेजी में काफी बेहतरीन जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में दी इस 00 संख्या के बारे में। और यहाँ पर देखना यह है कि इस वक्त 00 जर्सी पहनकर जो बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके अपनी टीम के लिए वो क्या करते हैं। ओह terrific, this is an outstanding delivery। और यहाँ पर गेंद को देखकर परख कर खेलना चाहता लेकिन अंतिम क्षण पर चूके और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, absolutely fantastic delivery, just missing outside the off stump and beaten completely by that pace and the wicket keeper completed the work behind the stumps. Absolutely outstanding delivery, bowled around the wicket। और अब एक बार फिर से मैच बराबरी पर आ चुका है और 6 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 7। 6 runs to get from 7 balls and a fantastic over continuing here from the bowler सुकेश। और एक गेंद इस ओवर में बाकी, अगर ये गेंद भी सुकेश डॉट करते हैं तो निस्संदेह अंतिम ओवर में रोचकता और यहां पर बढ़ जाएगी। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। राजिक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में। तो 7 गेंदें बाकी, 6 रन चाहिए इस ओवर में अंतिम बार। सुकेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, सुकेश की यह गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और यहां पर पैरों पर गेंद टकराई, इस बार शॉट स्क्वायर लेग पर रन आउट का खतरा और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। अब 6 गेंदें बाकी और रन से चाहिए 6, 6 of 6। ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಗೂ BFC ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದು ಎರಡು ತಂಡದವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ all the players of Shine Bantwal and BFC Bengre to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और यहाँ पर 6 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में विजय लक्ष्मी किसके पक्ष में जाता है। So 6 of 6 and the last over, the match deciding over is now going to start. In fact, the bowler starts the fresh proceedings.
शिवा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 6 गेंदों में चाहिए 6 रन विजय के लिए। 6 ऑफ 6 और पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया, नॉट क्वाइट पिट लेकिन गेंदबाज पहुंचे इस वक्त शिवा फॉलो थ्रू पर अपनी दाईं ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे, डाइविंग लगाते हुए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 20 for the loss of 5 wickets and 5 more runs. Now they have to score for victory in remaining 5 balls. और जहां तक सवाल है एक तो यहाँ पर ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ BFC ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So 5 of 5, here we go. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए शिवा फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और इस बीच विकेट कीपर ने कहा कि स्लिप डाउन फील्डर जो खड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा पीछे की ओर भेज दिया जाए और फील्डर को इस वक्त पीछे की ओर भेज दिया गया है. अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, चतुरता के साथ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. 4 गेंदें बाकी है, 4 रन बनाने हैं और निस्संदेह अभी भी ऐसा करना पड़ेगा. बराबर का टक्कर यहां पर जारी है तो मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. स्टिल द मैच स्टैंड्स इन अ बैलेंस. हर गेंद के साथ बातचीत चलती हुई इस वक्त फील्डर और गेंदबाज के बीच में फील्डिंग के रणनीति के बारे में और हर गेंद के बाद बातचीत चलती हुई क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों के बीच बल्लेबाजी यानी बैटिंग के रणनीति के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में. तो देखते हैं इन बचे 4 गेंदों में क्या होता है. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. शिवा दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. शिवा की गेंद इस वक्त गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद पर टकराई, शॉट टचमैन की दिशा में गेंद पहुंची और इस बार ये विकेट यहां पर गिर चुका है. विकेट यहां पर गिर चुका है. टॉप एज पर शायद वहां पर गेंद टकराई थी, गेंद पहुंची शॉट टचमैन पर और आखिरकार अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. अब गेंदे बाकी है 3, रन से चाहिए 4. तो इस वक्त एक वक्त था तब 9 गेंदों में 6 रन बनाने थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए YFC बजाल के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और अब मैच को बराबरी पर लाकर यहां पर खड़ा कर चुके हैं. अंतिम 6 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों ने की. YFC बजाल खासकर सुकेश जिन्होंने पिछला ओवर फेंका था और इस ओवर में शिवा बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए. अब 3 गेंदें बाकी है, रन से चाहिए 4. तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. राहिल सीनियर इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए मौजूद और जहां तक राहिल का सवाल है इस वक्त उनके लिए डीप मिड विकेट पर एक फील्डर तैनात ऑन साइड पर. लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर और लॉन्ग ऑफ कुछ ज्यादा दूर इस वक्त तैनात नहीं और डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर इस वक्त पीछे की ओर जाते हुए ऑफ साइड पर. और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार शिवा दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राहिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. 4 of 3 डिलीवरीज दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अभी भी विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट करते हुए और सब कुछ इस वक्त तैयार. और शिवा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राहिल के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके और वाइड का इशारा. 1+1, 2 runs now added to their total and with this couple run the tide is now turned. 3 गेंदों पर 4 रन बनाने थे और इस वाइड और 2 रनों की बदौलत अब बनाने हैं 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन. तो वाइड इस वक्त फेंकी थी लेग स्टंप से काफी बार और निस्संदेह ये वाइड ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर क्लास 11 चौका बेल्टे को इस मैच में वापस ला चुका है. अब
2 रन बनाने 3 गेंदों पर। देखते हैं शिवा अगली गेंद पर क्या करते हैं। यह गेंद बेहतर गेंद, हल्के से पुश किया, शॉर्ट कवर पर 1 रन मिलेगा। 1 रन मिल चुका है और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए जबकि गेंदें बाकी है 2। तो लक्ष्य, माफ कीजिए, इक्वेशन इस वक्त काफी आसान लगता हुआ, और सिर्फ 1 रन चाहिए और मैच को बचाना है। तो इस वक्त शिवा को 2 लगातार डॉट गेंदे फेंकने होंगे। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद, और इस बार विकेट कीपर के हाथों में रन आउट। अंतिम गेंद पर अंतिम रन चाहिए, लास्ट बॉल रिमेनिंग and the last run required. If the match ended in a tie, winners will be decided by toss. तो यहां पर देखिए क्या हुआ था। हल्के से गेंद को पुश करना चाहता, मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, चूके पूरी तरह विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। अब 1 गेंद बाकी और 1 रन चाहिए विजय के लिए। What a fantastic match is now progressing here. कभी मैच इधर, कभी मैच इधर तो कभी उधर। अब देखना यह है कि अंतिम गेंद पर मैच किधर जाता है, किसके पक्ष में जाता है। तो ಬೆಂಗರೆ BFC ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. BFC ಬೆಂಗರೆ, all the players please to be reported here for signature in the official chart. So 1 ball रिमाइनिंग एंड 1 रन रिक्वायर्ड। काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई, शिवा को टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ समझाते हुए कि अंतिम गेंद पर किस लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी इस वक्त करनी चाहिए। और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है। आफरीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मैच निर्धारित गेंद का ऐसा कहना पड़ेगा। अब क्लास 11 चौक्का का भविष्य आफरीद के हाथों में, जबकि YFC बजाल का भविष्य गेंदबाज शिवा के हाथों में। देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या होता है। अगर मैच टाई होता है तो विजेता को टॉस के जरिए निर्धारित किया जाएगा। द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। दर्शकों की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होती हुई और अंतिम गेंद, मैच निर्धारित गेंद, मैच डिसाइडिंग बॉल कम्स। और इस वक्त शिवा तैयार आफरीद के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार चूके बैक टू द बॉल की दिशा में, रन आउट, चूक चुका है, निशाना चूक चुका है। और इसी के साथ अंतिम गेंद पर क्लास 11 चौक्का registered a thrilling victory against YFC Bajal in the last ball of the match, and with that last ball thrilling victory they are through to the next round of this competition. So absolutely fantastic match came to an end. I think this is the match of the tournament has been came to an end, which won by class 11 Chokobettu in the last ball thriller against YFC Bajal. So a fine match came to an end, and man of the match award of this match goes to Dawood, who scored 12 runs with his batting, and he captured 1 wicket for conceding his 3 runs in his 1 over. And because of this all-rounding performance, Dawood adjudged man of the match. I request Dawood of class 11 Chokobet to please come on to the dais and receive the man of the match award from man of the match prize from the organizers. So the next match, Shine Banpal will take over BFC Bengre, and that match is now coming up live exclusively right in front of you. And we'll be back right after the short break with my friend Satish in English, when the next match will going to commence within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಸೈನ್ನವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This is the last and final call for the team players, those who are not signed. It's going to be a final call for you to complete the formalities of signatures. Otherwise, the organizer will going to take the decision. Please note, both the teams, Shine Bantwal as well as BFC Bingre. It's going to be a final call for the players, those who are not signed yet.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ BFC ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಹಿ ಮಾಡದ ಎರಡು ತಂಡವನ್ನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಹಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. And this is the final and last call. Last 5 minutes which is given for you to complete your signature. Shine Bantwal as well as BFC Bengre.
ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬೆಂಗರೆ BFC ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. Welcome back, and once again back to cricket now, as a tossing ceremony will going to start here, and between two teams. I request extra player from both the teams, please be reported in the commentary box. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟಗಾರರು, ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ 5 ಓವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 22 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 5 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. 18 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ 5ನೇ ಓವರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ 2 ಫೀಲ್ಡರನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಇದು. ಕೇವಲ 3 ಫೀಲ್ಡರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 4 ಓವರನ್ನು 18 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ನೀವು ತಾವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. 5ನೇ ಓವರು 18 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. 22 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ 5 ಓವರನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶಾರ್ಕ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲಾಲ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ BFC Bengre is a must match, and after winning the toss, captain of BFC Bengre they elected to field first. I request 12th man extra player ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಶೈನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ BFC Bengre captain won the toss, elected to bat first, so that Shine Bantwal all the players are walking towards the middle. Extra players ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. 2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ BFC Bengre ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೆಸರುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. Twelfth man, extra players. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. So opening batters are coming towards the middle here. Imran, two Imrans out there, Imran Junior and Imran Senior, and the bowler will go into ball. No foul. Will go into start the proceedings. The time will go into note here. The time is exactly 12 past 58. The time noted 12:58, and before 1:20, you need to complete your 5 hours quota. So drone cameras are flying around here, they're capturing the beautiful moments of this cricket tournament, and thanks to King Sports once again for that fantastic and very quality live coverage of this prestigious YFC Trophy 2023. And here is the first ball. Bowler Naufal will go into starts the proceedings from the commentary box, and Imran will be the striker. Imran Bengre will go into face his first delivery outside and off stamp, and going to be a wide, big wide, and with that extra they started their journey, one without loss of any wicket. Ali Saz friends Ulal Agu Shark Bajal ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1+1 declared area. Ball went under the banner, so that umpire rightly so Iqbal declared as 2 runs, so that without a single delivery
they open the account. The team Bengre, they off the mark. BFC Bengre after winning toss selected bat pass. First next ball outside the line of leg stump. Batsman tried to turn that one onside decision, missing it completely, but ball hitting the leg, so that leg by call by umpire. With that extra score, Namuzan to 3 on the board for the loss without loss of any wicket in the over number first in progress. Now Fall is bowling the power play, keeping one fielder at square leg, one at the mid wicket and mid on. Fielder one at wideish long on, one at long off. The two fielders outside the circle in the deep. And in the offside region, short mid off, short extra cover and short cover point. And there is no fielder in the third man and backward point. Again, driven that one. Imran Surebail is picked that one down to mid on region, not for run. And little bit steady start from these two opening batters after getting three valuable runs in the form of extra. And scoreboard is a 3 on the board. Here is again right arm over the wicket balls. This time lofted that one down to mid wicket region. Long chase here for the fielder. And of course the fielder will going to cut it off, but here is a batsman crossing off for a couple of runs here. And good placement here from Imran. This time that ball is once again dripping down the leg stump, outside the leg stump, and batsman quite nicely off the toes plays it down to mid wicket region, a little bit in front of square, and before the mid wicket fielder to run across to his right to field the ball. Both the batters are completed a couple of runs. With that couple of runs, Kobar Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket here in over number the first in progress. As Naufal again bowling away from Azza. Right arm over the wicket pass. Umpire Ball again tries that one. They're going for the quick circle. Chance of run out, and it's not a good hand. This is not a good hand to throw. It's definitely going to be opportunities created in the non-strikers end, but fielder in the mid-on region trying for the run out, because after striking the ball, batsman always struggling to reach his home towards non-strikers end, because striker is always ready for the run, but non-striker is always ready for the run, but the striker is the one after striking the ball, then he starts the run, then opportunity always created in the non-strikers end. It's not in the strikers end. And that's why the batsman survived from that run out. One more single in the form of leg by, the second leg by of this over, and with that leg by run scored Namuzan to 7 without loss of any wicket in the over number first in progress. So very bright sunny afternoon. Time is exactly 1 o'clock. I already mentioned the fielding team have to make a fast. They need to complete their 5 overs within 22 minutes. That means they need to start their 5th over within 16 minutes. This time a reverse sweep comes into play, and up and over the infield, and before the fielder from the cow point region to run back towards the deep back point region to collect that one. Ample time for Imran to get a couple of runs. So with that couple of runs, Kobar Namuzan to 9 on the board without loss of any wicket. Two Imrans out there in the middle, Imran and Imran Surebail, and they got a very good start with the bat as well as with the extras. The extras definitely going to play a big role here, isn't it? Each and every the team wanted to restrict the extra runs. Welcome back once again, and over number 2 is in progress. Bowler Sadiq brought in the attack, starts with some extra delivery. This time lofted, the fielder is not trying for the catch, and mid-wicket fielder is not really trying for the catch. He's just wanted to get that one after one bounce, and the
The batsman survived. Of course, mid-wicket fielder, the outfielder need to be very quick, isn't it? That opportunity which is really created for that catch, but the fielder is a little bit going towards a safer end and driven that one to mid-wicket for a single then. And with that single, Skubana moves on to 12. Now it's a 13 because of a white. 13 for the loss of without loss of any wicket. The bowler Sadiq is really struggling to get the line and length, and it's the third wide of this over. And as much of wide delivery we're going to bowl, the opportunity of winning this ball is going to be difficult. Now umpire asking for the third umpire. Leg umpire Iqbal referring to the third umpire, and the third umpire will go in to see. The third umpire Nasir Bajal will go into give the decision here about that stump out, and stump out will be definitely going to be a very interesting to see that Iqbal and whether it's going to be out or not out. The third umpire need to get a very good angle. Very good angle is required for to get the best result of that stump out. So not out, which is a call from umpire, third umpire, not out, and no damage done. The batsman is safe. His back leg is safe, and good work there by the wicketkeeper behind the stump, but not good enough to get the result. So Shine Buntwal conceding some runs in the form of extras. Sadiq again. Right arm around the wicket balls. Again outside and above stump, well within the reach of the batsman. Ball is just within the zone of the batsman, so that umpire rightly so not interested. Right arm balls outside the leg stump, again going to be a wide. One more extra, one more single. With that single, Skubana moves on to 14 on the board, and without loss of any wicket. So many deliveries which is bowled wide, and if you bowl the number of wides, it's very difficult for you to complete the over. And if you're not able to complete the over, the penalty umpire will definitely going to give. And it's definitely the over number 2 is in progress. It's also almost 1 past 7 minutes. That means 9 minutes has been taken already. To this is just the second over is in progress. Right arm round the wicket balls. Balled him, cleaned him up, beautifully bowled. And this time batsman going for the reverse sweep, big reverse sweep. Imran missing it completely. The first delivery which is targeting on the middle stump, the ball by Sadiq, and Imran choosing the wrong delivery for the reverse stroke. It's a quicker one, faster one, and on the middle stump, beaten by the pace. And Imran is back into pavilion. So first wicket is gone, and scoreboard is 14 on the board. 14 for the loss of 1 wicket. So new batsman in is Iqbal, walking towards the middle. Sadiq is the bowler. Salam brought into attack to bowl that third over of their innings. Right arm over the wicket to right-hand batsman Iqbal. Iqbal drives that one in a vacant area down to deep long on region. And a good collection there by the fielder in the deep long on. It's not so easy for the fielder in the deep long on. Little bit up and downs in that region. So that with that singles covered numbers on to 15 on the board. 15 for the loss of 1 wicket. Salam to Iqbal. Iqbal drives that one and down to deep long on region for a single. With that single score numbers on to 16 on the board. Iqbal, the very popular name is umpire Iqbal, and right of him is batter Iqbal of team Bengare. Right arm over the wicket Imran. This time he lofted it, but not really getting the distance right. This is not an easy ground to get the distance, isn't it?
Any technical batsman, any powerful striker of the ball, it's need to see that the direction of the wind is always going to be key to get the distance right. But in the afternoon, not really having that much of wind, but he's choosing one of the longest spot of the ground. Deep mid wicket, not a easy one to get the distance. Of course, we are witnessing some sixes, which is well in front of the wicket, straight down the ground. The 2-3 sixes we are witnessed, 1-6 which is 2-6 we are witnessing towards a deep backward square leg region. When the wind is passing in that direction in the evening, and otherwise most of the batsmen trying for the big shot, but falling short. The falling short of the boundary line. And once again, the Imran disappointed even that he hit the ball very nicely from the bat, but couldn't manage to get the distance right. 16 on the board for the loss of 2 wicket. New batsman is Arshad. It's one more very popular name as far as Andhra cricket is concerned. One who represented for KFC Kodikal. Again, nicely driven down to deep cover point region. There is a short extra cover fielder and across his left to fields the ball. Ample time for Arshad to complete the singles. Very useful cricketer, Arshad. Is a very good cricketer, good batter, and a very good fielder. And the scoreboard is now 17 on the board for the loss of 2 wickets in the over number 3rd in progress. Salam bounce. This time ball is in there. Chance here for the fielder, but again the ball is falling short of that fielder. They're looking for the second, and they completed that couple of runs. Oh my goodness! Not a quick fielding there from the fielder. The senior fielder of the side for the Bantwal couldn't manage to run quickly to front to field the ball, and that pays the penalty for that. Couple of runs for that. When with that couple of runs, scored Namuzan to 19 on the board without loss of slip correction. 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress as Salam. Right arm over the wicket balls. This time tries up easily and quite safely down to deep extra cover region. They're coming back for the second. Chance of run out, and Arshad struggling. Arshad is struggling and finding himself short of his crease. One more big wicket is back into pavilion. And look at that, the fielding effort there from the fielder at deep extra cover, and the throw is so good enough to get the run out, and the Arshad is struggling, and there's no chance at all for the second run, and Iqbal is wanted a couple, but Arshad is running for the second run, and that's why it's not a mistake of Iqbal. The Arshad wants a couple, and it's too late for him, seeing that ball is coming to the end of non-striker. The bowler completes the job. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress, 4 in progress, lead by correction. 4 completed, 3 completed, and 4th over going to start here. And we are noting the time, it's 1 past 12, 3 completed. It's a 4th over is in progress. And the 4 minutes, which is they need to quick wide from the bowlers, because of they bowled some wide balls. The 2 wickets fallen. For that we are deducting 30 seconds for that. Jalal is the batter, and Naufal is the bowler. This time top edge, but ball will go to land safely towards the deep wide-ish long on, and with that single score Namuzan to 21 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 4th in progress. Here is again Naufal, right arm over the wicket, balls to Iqbal going for the dry, appeal for leg before wicket. Umpire Arif has got evidence enough that ball going to miss the leg stump, leg by call by umpire. With that extra score Namuzan to 22 on the board. Each and every run going to be very crucial, because it's not an easy condition to bat on for any teams. The leg spinner balls a wide fit, beautiful work done by the wicketkeeper behind the stump. He won that wide ball, but they will going to get the wicket for that, because wicketkeeper done a fantastic job behind the stumps. The batsman out of the crease, and Jalal is back into pavilion, stumped out by wicketkeeper of the quite deliberately bowled there by the bowler. Looks like the batsman coming down the track and just bowled outside the leg stump, and batsman out of the crease. The wicketkeeper behind the stump did a very good job here. And 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress.
Wow, there's one more opportunity for the wicketkeeper behind the stump because that ball defeats the bat and by call by umpire, the batsman out of the crease tried to push the ball on the offside region and wicketkeeper behind the stump just missed the opportunity to make one more stump out. Excellent piece of bowling there by now fall in the delegation. It's a few bowlers I'm watching in this particular tournament. Those who are bowling the leg spin bowlers, leg spin attack. And so far, it's just been absolutely flum in front of wicket. Iqbal looking for the big reverse stroke, misses it completely, and umpire not missing the opportunity to raise his finger. Absolutely, is a fantastic delivery and very good execution of leg spin bowling performance. Just look at that one. Flum, absolutely flum in front of wicket, and easy for the umpire to raising his fingers. So one more wicket is back into pavilion. It's a 24 for the loss of 5 wickets, and Bengre are now looking a little bit under pressure. The over number 4 is in progress, and the time is exactly 12:14. They are in a very much in a time because the fall of wickets will going to reduce the time. Fall of wickets, the batsman takes time to occupying the crease. It takes 1 or 2 minutes for that. If you find 5 wickets falling means at least 2 minutes will be given the grace time. So that means the fielding team is in a time. I don't think there is any penalty for fielding team. No penalty. And cover point region, there is a single. With that single score, moves on to 25 for the loss of 5 wickets. And last ball of this over. 25, which is the total score. Oh, fantastic. Wicketkeeper has been outstanding. And one more fantastic cricket stump out. And again, the quick work there from wicketkeeper. But fantastic piece of bowling performance which continues here from Naufal. Just look at that one in the replay. Went for the reverse sweep and look at the work. Just in a blink of eyes, it completes the job. Magnificent work there from the wicketkeeper behind the stump. And look at the work there from Atrani behind the stump. The quick work, that is a quick work, absolutely quick work. We are seeing that in a replay, slow motion, so that we are not getting that much of speed enough. But if it's a naked eye, it's just in a fraction of second, it completes the job. And that's a very good work there from Atrani behind the stumps. So I think the fielding team is in the right time, and there's no penalty. And I think thanks to the fielding team because you are bowled very quickly and following the rules and regulation of the time. And so that last over going to start. Arshad will going to start the last over. Arshad bowling away from us. One more leg spinner. Lofted, and he will go and get the distance. Just I mentioned about this is not an easy ground to get the distance, and I think it's going to be a first sixer of this day number 3. This is the first sixer of the day number 3, and that shows how difficult it's going to be. And Imran, there are 3 Imrans in the playing 11s of team Bengre, and Imran C, he got 6 for that lovely shot. Just with the direction of the wind, I'm just mentioning about the shot selection is going to be very key. With the direction of the wind, you can get the distance, and the batter hit the ball right from the middle of the bat, and he got the distance for that. And score moves on to 31 on the board. 31 on the board. It's a 12-6 altogether. Before it's 11-6, is a 12-6. Oh, one more full toss delivery. One more full toss delivery, but not an easy full toss. Almost that ball is in the above that below the knee, below the waist level. So that very difficult for the batter to hit that full toss. One more single is added total with that single score. Moves on to 32 on the board for the loss of 5 wickets. 6 wickets are back into pavilion. Bowler once again Arshad, the third time in this over. Right arm round the wicket to the right-hander batsman Mustafa this time placing the ball to mid on, chance of run out. A quick work required this time there. Looks like the batsman looks like if the batsman made his home or not. Wait for the umpire signal. Umpire Iqbal straight away asking for the third umpire to give the decision. Again Nasir Bajal, the third umpire, will going to give that decision of that run out. Well, the batsman going to be safe or not, wait and see. Looks like
Batsman might be made it, but it's all about the third umpire's decision to see that batsman cross the line or not. But as for the rules and regulation of the cricket is concerned, some part of the bat need to be inside the line. On the line always going to be out. If it's a lit part inside the line, it's going to be a not out. Umpire Nasir Bajal still having some clarification from the technicians of Bidra Media, a clarification from King Sports. So not out, which is a call. Batsman is safe, and here is over number 4. 5 will going to continue 4 time in this over. Right arm around the wicket. Drives powerfully, but this time he'll go to find. Oh, good attempt, very good attempt there from the fielder. The ball just falling short of the fielder. It's not an easy catch, of course, a tough one, but he's attempted his level best to take the catch. Moving to his left, and when the ball is going to land it, he got just a hand onto that, and unfortunately couldn't manage to complete the catch. 35 for the loss of 6 wickets are back into pavilion. Last 2 deliveries left in their innings. Again, batsman going for the single, and wide call by umpire. 2 wides, bonus run. So each and every run going to be a very important. 37 for the loss of 6 wicket. The very good score on the board in the limited over matches. 5 overs, 37 is going to be a good score. Still 2 deliveries left, and each and every run after this is going to be a bonus. Beautiful shot, absolutely perfect placement down to deep cover point position, but not more than a single. Good return coming from the fielder. With that single score, numbers on to 38 on the board for the loss of 6 wicket. Last delivery of the innings is coming up. Imran has played a very good role and is played a small cameo for his team. Very important runs which came from the bat of Imran C. 10 runs already in just 4 deliveries. Right arm over the wicket, going for the big shot. Wicket keeper behind the stump, uprooted the stumps, but here is very confusion is going on here. And it looks like it's the last ball of the over. Umpire says it's all over, and a dotted delivery to finish the over. And I think the batsman is safe in that striker's end, no damage done. And altogether it's a dot ball the last over. So 38 is the total score. 39 going to be a target for team Bingre, and Shine Bantwal is managed to get 39 runs. BFC Bengre, the managed to get 38 runs and is at a target of 39 to win the match for Bantwal. And wait and see Bantwal will go into Shine Bantwal going to get this big total of 39. It's always going to be a big total in this condition, and unless batters will go into bat well, it's going to be a difficult task, but not impossible in cricket. Anything can be happen. And before the over will go into innings will go into start, we'll take a short break. After a short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you so much.
I requested the 12th player of both teams to please report to the stage immediately to tell the player's name. धन्यवाद सतीश। तो 39 रन लक्ष्य और यहाँ पर ड्रोन कैमरा जो कि लहरा रहा है, देखिए किस तरीके से मैदान का हाई व्यू इस वक्त नजर आता हुआ, बिल्कुल साफ इस वक्त नजर आ रहा है। सुंदर सा विशाल सा मैदान इस बजाल नंतूर का, और निस्संदेह एक बेहतरीन वर्क इस वक्त करते हुए टेक्नीशियन किंग स्पोर्ट्स के, और यहाँ पर ड्रोन कैमरा द्वारा जो कि चित्रित ये मैदान का हाई व्यू यहाँ पर नजर आता हुआ, काफी ऊंचाई से इस मैदान को शूट इस वक्त करते हुए ड्रोन कैमरा द्वारा, और निस्संदेह काफी हरा भरा इस मैदान के सीमा रेखा से बाहर काफी हरे भरे वृक्ष इस वक्त नजर आते हुए, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए। तो सतीश को एक बार फिर से धन्यवाद अभिवादन करते हुए एक बार फिर से हम मैच की ओर बढ़ते हैं, और 39 रनों का लक्ष्य इस वक्त शाहीन बंटवाल को बनाने डीएफसी बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 रन निर्धारित 5 ओवर में बनाए। 39 रनों का लक्ष्य अब उनके सामने, और इस बीच उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद आसिफ और सलाम, जबकि गेंदबाज इकबाल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 39 they have to score for victory, and their innings now going to start. First ball लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और इस डॉट गेंद के साथ एक बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज, और स्कोर बोर्ड रुक चुका है 0 पर। एक बार फिर से एक बॉल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट, आई थिंक सो, in fact it fell just short of a fence and gone over the fence after one bounce. Absolutely magnificent struck came from the bat of the right-handed batsman. He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over long-on fence in a strider version for a boundary. This is an absolutely fantastic struck, और बल्लेबाज आसिफ के बल्ले से चौका लग चुका है। काफी ऊंचा गेंद उछाला था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खाती हुई और सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 4 रनों के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाइनात के बल्लेबाज के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप बाहर, हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद पहुंची, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। ಶಾರ್ಕ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾರ್ಕ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. इस बार गेंद सीधे पहुंची, मिड ऑफ पर गेंद को उछाला था, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। सलाम की पार यहां पर समाप्त हो चुकी है। गोल्डन डक के रूप में पहली गेंद पर गेंद को उछालना चाहते थे, एनफील्ड क्लियर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके, और मिड ऑफ पर गेंद को लपक लिया गया, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। स्कोर है इस वक्त 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। नौफल का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और इस वक्त जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो शाहीन बंटवाल को इस वक्त चाहिए एक साझेदारी पार्टनरशिप, और इस वक्त अंपायर कुछ पवेलियन की ओर इशारा करते हुए कुछ कहते हुए तो
इस वक्त 5 रन बच चुके, 1 विकेट के नुकसान पर, और पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। द नंबर 3 बैट्समैन इज कम्स आउट टू द मिडल, नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इकबाल की गेंद को ये गेंद ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, एंड ही इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट. Just rocked to the back foot. He played inside out cricket and played that one superbly. Square of the wicket and he finds the gap as well. Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को खेला था देखिए. गेंद थी इस वक्त मिडल ऑफ स्टंप पर. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया इनफील्ड क्लियर करते हुए, और गेंद आसानी के साथ कवर पॉइंट सीमा रेखा के को पार कर चुकी है. एप्पल फ्लाई के बोर्ड पर इस वक्त टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग्स इट अवे एंड दिस टाइम वन मोर बाउंड्री. Consecutive boundaries for the batsman, and he is now on fire. 13 for the loss of 1 wicket. Just the first over completed, and this is an absolutely terrific start for Shine Bantwal. 39 रन उन्हें बनाने थे जब उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी निर्धारित 5 ओवर में. पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतरीन शुरुआत वो कर चुका है, 13 रन जोड़ चुका है. अब 26 और रन चाहिए विजय के लिए. 4 ओवर का खेल बाकी, और स्ट्रेट अवे रिक्वायर्ड रन रेट अब उतर कर आ चुका है 6.50 रन प्रति ओवर. 7.80 the required run rate needed for them when they started their innings, and after first over they scored 13 runs, and because of that the required run rate straight away coming down to 6.50 runs per over. 26 they have to score in remaining 24 deliveries, that means in remaining 4 overs. और दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज फारूक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. तो पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंद पर नौफल 2 चौका झड़ चुके हैं, और इस बार सामना करते हुए आसिफ. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, लगभग मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और विकेट कीपर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर चुके हैं. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. फारूक इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं. 23 गेंदें बाकी है, 26 रन और चाहिए विजय के लिए. 26 more runs now they have to score for victory in remaining 23 deliveries. और फारूक दाहिना तो ऊपर द विकेट आसिफ के लिए. अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचना चाहा, वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 2 रन यहां पर जोड़े जाएंगे. 2 runs added to the total in this delivery. 1+1, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फारूक. दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, रन्स इस बीच नहीं मिलेंगे, और आसिफ माफ कीजिए स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए. तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 15 रनों पर, और फारूक एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, जगह नहीं बना पाए, और अंतिम क्षण में खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल. फलस्वरूप गेंद पहुंची सिल मिड ऑन पर, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. फारूक एक बार फिर से तैयार. पावर प्ले इस वक्त जारी. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, लेग स्टंप से बाहर. सिर्फ गेंदबाज ने अपील की थी इस गेंद पर, अंपायर ने सही तरीके से नकार दिया क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और रन से चाहिए 24 इस वक्त विजय के लिए. एक बेहतर ओवर अब तक फारूक का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन वाइड के रूप में वो अब तक प्रदान कर चुके हैं पहले 4 गेंदों में, और 4 गेंद वो डॉट इस ओवर में फेंक चुके हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके, और डॉट गेंद नंबर 5 इस ओवर में फारूक द्वारा, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए इस ओवर में. तो 5 डॉट गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं, और एक बार फिर से गेंदबाज फारूक इस ओवर में अंतिम बार तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. आसिफ. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, बेहतर फील्डिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फील्डिंग, डाइविंग लगाकर अपनी बाईं और गेंद को रोका, और कम से कम 1 रन अपनी टीम को बचाते हुए, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 overs completed, 23 required in remaining 18 deliveries, that means in remaining 3 overs with the required run rate of exactly 7.67 runs per over. So
And as for the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. और 23 रन चाहिए 18 गेंदों में. 23 they have to score for victory in remaining 18 balls. That means in remaining 3 overs. और कुछ बातचीत के बाद इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है इमरान के हाथों में. और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023-2023 इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत, इस श्रृंखला के तीसरे और अंतिम दिन का तीसरा मैच यहाँ पर एक शानदार प्रगति करता हुआ YFC बजाल नंतूर मंगलोर इन एसोसिएशन विद लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन, इनके सहयोग से इस श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया गया है जनाब जब्बर इनके सारथ्य में. और ये श्रृंखला इस वक्त, ये टूर्नामेंट इस वक्त एक बेहतरीन प्रगति करते हुए. और गेंदबाज इमरान नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद 2 ओवर के बाद इस वक्त फील्डिंग फैल चुका है. और तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इमरान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. 23 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 बॉल्स. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर. स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. इन फैक्ट इमरान दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी. स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप बैक थर्ड मैन की दिशा में. गेंद जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. और 17 गेंदें बाकी है और 17 गेंदों में इस वक्त उन्हें रन्स बनाने हैं 21. 21 they have to score for victory in remaining 17 deliveries. और इमरान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. डीप बैक ऑन थर्ड मैन, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद. और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई. वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. अभी भी अपने सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए गेंदबाज इमरान. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया. नॉट क्वाइट मिटिगेट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट. और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. पहले ओवर में 13 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक इस वक्त कर चुके हैं BFC बेंगरे के गेंदबाज. और एक बार फिर से इमरान की गेंद. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इनटू द गैप एज वेल. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. गेंद को जिस तरीके से स्विंग किया गया था मैं रिप्ले में देखना चाहूंगा एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड देयर. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद को उछाला था बेहतरीन. स्ट्रोक्स में कुछ गलत नहीं था लेकिन टाइमिंग्स थोड़ी सी गलत और प्लेसमेंट भी थोड़ा सा गलत. और बेहतर कैच यहाँ पर लपका इस वक्त डीप मिड विकेट फील्डर ने. और इसी के साथ स्कोर रुक चुका है यहाँ पर 20 रनों पर और दूसरा विकेट गिर चुका है. और आसिफ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ತರ ಆಟಗಾರ So number 4 batsman in fact he now comes out to the middle. 19 more runs required for victory. Rafreed नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार इमरान की गेंदों का. इमरान इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोटा गेंद. इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर इन दिस सिचुएशन. गेंद इस वक्त बल्लेबाज गेंद को खेलने में चूके थे और वो खुद नहीं जान पाए कि गेंद कहां गई है. रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई. 2 कदम आगे बढ़ा है और विकेट कीपर ने यहां पर विकेट चटका दिया. और यहां पर देखने वाली बात है कि जब विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर वापस अपना बल्ला रख चुके थे या नहीं. जस्ट वी हैव टू लुक एट ऑन द रिप्ले.
Not out is the call, and everything remains perfect for the batsman. और यहाँ पर एक गेंद डॉट हो चुकी है, 14 गेंदें बाकी हैं, रन से चाहिए 19. 19 runs more required in remaining 14 balls. और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इमरान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार इन हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड दिस इज गॉन मेनी अ माइल्स. इट्स अ बिग स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ एंड जस्ट हैव अ लुक एट द स्ट्रोक. दिस इज एन एब्सोल्युटली एफर्टलेस. Just look at that one in the replay. Square of the wicket, loved that one. And this is an absolutely effortlessly played by the batsman. 6 runs into the account of him. और बेहतरीन स्ट्रोक अफरीद के बल्ले से लगता हुआ. और ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला. गेंद जाती हुई बैकआउट थर्ड की दिशा में. गेंद तक पहुंचते फील्डर मिसफील्ड. वहां पर 2 रन मिलेंगे. तीसरे रन नहीं मिलेगा. थ्रो पहुंच चुका है यहां पर. तो 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर. और पिछले 2 गेंदों की बदौलत जिसमें बल्लेबाज अफरीद ने 8 रन बटोरे, अब समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ यहां पर शाहीन बंटवाल के लिए. तो यहां पर कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति. 3 overs completed and now they are looking in a good situation. 28 for the loss of 2 wicket, 11 required of last 12 deliveries. और कुल मिलाकर इस ओवर में 12 रन बने. 12 runs scored in this over and because of this over I must say Shaheen Bantwal are now back in the match. 11 रन चाहिए 12 गेंदों में. अब जहां तक सवाल है बीएफसी बेंगरे का, तो इस वक्त उन्हें डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त जरूरत इस मैच में कमबैक करने के लिए. रिक्वायर्ड रन रेट जो है इस वक्त 5.50 रन प्रति ओवर. और इस बीच गेंदबाजी सौंपी जा रही है गेंदबाज के हाथों में. और इससे पहले कुछ बातचीत इस वक्त जारी फील्डर के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए. बातचीत अभी भी जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. दोपहर का वक्त 1:45 यहाँ पर बचते हुए और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है. और आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद अपने प्रखर किरणों को सूरज मैदान पर फैलाता हुआ और धूप की प्रखरता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई और इस बढ़ते हुए धूप की प्रखरता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में. कुल मिलाकर YFC ट्रॉफी 2023 सीजन 2 इस मेगा श्रृंखला का तीसरे दिन का तीसरा मैच यहां पर प्रगति पर और विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है यहां पर बीएफसी बेंगरे और शाहीन बंटवाल के बीच में. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया खूबसूरती के साथ. सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए पहले ही भाप लिया था पॉइंट पर जो फील्डर मौजूद है थोड़े से पीछे. रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला बैकफुट पर जाने के बाद और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. 29 रन 29, 10 रिक्वायर्ड, 11 balls to go in their innings. और गेंदबाज फारूक गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया. इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में. यहां पर गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास समय अवकाश 1 रन प्राप्त करने का. 30 रन बन चुके हैं. 30 now for the loss of 2 wicket, 9 to get now from 10 balls. और डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त गेंदबाज को कमबैक करने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं. फारूक ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. 1 रन मिलेगा और वहां पर क्लीन कलेक्शन. 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है
31 रनों पर 31 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. 8 runs required of 90 deliveries. Still the equal battle is now on. फारूक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद गई टू स्क्वायर और सिर्फ 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में, और सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा। काफी तिरछा स्ट्रोक को खेला था इस वक्त, 2 स्क्वायर अर्ली, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 32 रनों पर। इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 7 to get now फ्रॉम 8 बॉल्स। फारूक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा, लेकिन यहां पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर वंस अगेन। यहां पर देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं, और अब तृतीय अंपायर देखते हैं क्या निर्धार देते हैं टीवी मॉनिटर पर। इस वहां पर क्या हुआ था इसे देखने के बाद He's gone, और गेंद स्टंप्सों पर अंतिम क्षण में टकरा चुकी थी, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो निर्णायक मोड़ पर एक सफलता इस वक्त प्राप्त कर चुका है बीएफसी बेंगले, और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रनों पर। 7 गेंदें बाकी हैं, 7 रन चाहिए विजय के लिए। 7 balls remaining and 7 runs they have to score for victory. Still the match is now in balance. और नए बल्लेबाज का यहां पर आगे बढ़ना होता हुआ, और फारूक का जहां तक सवाल है, इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी वो कर चुके हैं। अब तक सिर्फ 4 रन अपने 5 गेंदों में इस वक्त दे चुके हैं, पहले 5 गेंदों में, और अंतिम गेंद अब बाकी उनका ओवर का, और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। The last ball in this over is now coming up from Farooq. नए बल्लेबाज, the new batsman is now going to face, और माफ कीजिए नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, और इस वक्त फारूक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए अफरीद, जो कि अब तक माफ कीजिए जैद, और यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट तरबान पर, अपील जारी है, बल्लेबाज अपना बल्ला बैट दिखाते हुए दौड़ पड़े थे, और आखिरकार 1 रन वो पूर्ण कर चुके। इट्स ऑफ द बैट, कोई इशारा नहीं अंपायर द्वारा, बल्ले का अंदरूनी किनारा या बाहरी किनारा शायद टकराया था, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 33 रनों पर। 33 now for the loss of 3 wickets, 6 required of last over, that means in remaining 6 deliveries. Next match, YFC Bajal will take over Shah's Ulal, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Mustafa, the bowler, is now brought into the attack, and he is now going to start the match deciding over. मैच निर्धारित ओवर लेकर इस वक्त मुस्तफा गेंदबाजी शुरू करते हुए, 6 रन चाहिए 6 गेंदों में, और पिछले मैच की तरह ये मैच भी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, 6 of 6। Here we go, पहली गेंद लेकर मुस्तफा दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके, और बल्लेबाज रन के लिए भी दौड़ पड़े। वाइड, 1+1 2 runs added to their total, और इन 2 वाइड रनों के साथ अब इक्वेशन seems to be much easier now for शाहीन बंटवाल। 4 required of 6 deliveries, 4 रन चाहिए 6 गेंदें बाकी, और समीकरण बिल्कुल आसान इस वक्त नजर आता हुआ, और इस बीच गेंदबाज तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त बीएफसी बेंगलुरु को इस मैच पे वापस आने के लिए। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंचे लॉकआउट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, और दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी मिड ऑन फील्डर द्वारा, और इसे देखते हुए डेंजर एंड की ओर कदम बढ़ाए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड से, और आखिरकार यशस्वीतम ये दूसरा रन पूर्ण करते हुए। अब सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए, और गेंदे बाकी है 5, 2 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 5 बॉल्स। और इस बीच मुस्तफा गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, निशाना इस बार जी नहीं, अंपायर ने कहा कि नहीं, यहां पर शायद हाथों से विकेटों को चटकाया गया था, बिल्स उड़ाए गए थे। 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड। सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए अब विजय के लिए, गेंदे बाकी हैं 4, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त शाहीन बंटवाल अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। तो मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार चूंकि गेंद सीधे लगभग बल्लेबाज पर को टकराने के बाद वहीं पर गिर गई, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 गेंदें बाकी हैं और 1 रन चाहिए विजय के लिए। 1 रिक्वायर्ड ऑफ 3 डिलीवरीज। लगभग सारे फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में, और मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट पर, रन आउट का खतरा, और आउट हो चुका है, आउट हो चुके हैं। अब 2 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए 1, तो 2 लगातार डॉट गेंदें यहां पर फेंक चुके हैं मुस्तफा, और अगर यह भी गेंद वो डॉट करते हैं तो निस्संदेह अंतिम गेंद पर रोमांचकता और बढ़ जाएगी। 2 बॉल्स रिमेनिंग, 1 रिक्वायर्ड। नए बल्लेबाज जो मैदान पर इस वक्त उतर रहे हैं उन्हें कुछ समझाते हुए स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज और अपने स्वस्थान पर यहां पर लौटते हुए। तो 2 गेंदों पर रन से सिर्फ 1 इस वक्त बनाने हैं। So 1 required of 2 deliveries. The pressure is now building up on both sides. Runs चाहिए इस गेंद पर बल्लेबाज को, रन्स रोकने हैं इस गेंद पर गेंदबाज और फील्डर्स को। तो देखते हैं क्या होता है। और मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। क्या मुस्तफा इस गेंद को डॉट कर पाएंगे? क्या बल्लेबाज इस गेंद पर रन ले पाएंगे? देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। और इस बीच मुस्तफा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, दाहिने हाथ के गेंदबाज मुस्तफा की ओवर की अगली गेंद का। और here we go, मुस्तफा दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये क्या हो, लेग स्टंप से बाहर, वाइड, एंड ही फिनिश द मैच विद अ वाइड। और इसी के साथ शाहीन बंटवाल ये मैच को जीत चुका है 2 गेंदें बाकी रखते हुए बीएफसी बेंगलुरु के खिलाफ। और इस रोमांचक जीत के साथ, बीएफसी बेंगलुरु के खिलाफ रोमांचक जीत के साथ शाहीन बंटवाल इस श्रृंखला के, इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। तो एक बेहतरीन मैच, एक और बेहतरीन मैच तो यहां पर समाप्त हो चुका है। So man of the match of this match award goes to the player who performed in bat as well as in ball. He scored 11 runs in just 7 deliveries and he captured 2 wickets for conceding just 10 runs in his 2 overs scored. And because of this all-rounding performance, he bagged the man of the match award. And the player none other than Naufal of Shahin Bantwal adjudged the man of the match. I request Naufal of Shahin Bantwal, please come on to the dais and receive the man of the match prize from the organizers. Naufal of Shahin Bantwal adjudged the man of the match of this match. Next match, YFC Bajal, which takes over Shah's Ulal, and that match starts with just short while. And we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the match will going to resume right after the short break.
तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Welcome back once again. Good afternoon, cricket lovers, and we are back into the match. The last match of the first round: Shark Bajal versus Saz Friends Ulal. And now it's a match will going to start in a short while. And before that, we can see that drone camera of King Sports is covering the beautiful view of this cricket ground. Absolutely fantastic. Shantinagar cricket ground here in Bajal has been looking in outstanding with the coverage of the greeneries, and you can see that locations absolutely fantastic. And the all we can see that our areas which is covered with the beautiful and greeneries out there, and we can see that some the views from the height. It is definitely going to be one of the fantastic view of this coastal area, and the Netravati river, which was one of the very holiest river passing just besides and this cricket ground, and Netravati river which is passing here, so that this name is given the Netravati cricket ground. And the last 2 weeks back, the Netravati trophy which is organized, and what a fantastic view of this cricket ground. And just we can see that the highland we can see that drone camera is covering, and these all areas out there with this fantastic nature's beauty. The nature beauties is absolutely the greeneries, and we are coming to this the Bajal ground, Netravati ground here in Bajal, and YFC Trophy 2023 Season 2, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor, Mangalore. And now it's a match between Shark Boys Bajal, the runner-up of last year. Shark Bajal, they are the winners of runners-up of YFC Trophy 2023 Season 1. And of course, NM Cricketers Mangalore against NM Cricketers Mangalore, they lost the match in the final, and NM Cricketers Mangalore to become the champion in the Season 1 of this cricket tournament. And wait and see how Shark Boys will going to start their journey in this Season 2 of this cricket tournament. I request the fielding team, please go for field immediately. We are having a shortage of time. Needed your cooperation. The officials walking towards the middle. Nasir Bajal as well as umpire Iqbal of Gori Young Boys.
So Sauce Francis Ulal, after winning the toss, selected to field first, so that I request the opening batters, please go for bat immediately. The opening batsmen of Shark Boys Bajal, please enter the ground, and Shark Bajal will going to start their journey in this particular tournament, YFC Trophy 2023, being the runner-up in the last season, edition 1 of this cricket tournament, and wait and see how well they will going to get starts here against one more very good team. For one more very good team, that is Saz Friends Ulal. So Saz Friends Ulal has got some good players in the side, some experienced campaigner in their side. The leading from the front, it looks like Zubair is the one is leading this team with his experience. We have Izaz there in wicketkeeper behind the stump. And Taslim, one more fielder down at mid-on, long-on experienced campaigner for the side of Ulal. So that they are having some good players in the side. And Shafiq there in the cover point region, one more experienced campaigner. And altogether it's a very good combined and experienced teams for team Saz Ulal against Shark Boys Bajal. It's a great contest. Umpire is ready. Everyone is ready. Scorer is ready here. And Shahrukh will go into be the striker. And Iqbal is in non-striker's end. And one way of fielding team, the bowler Izaz. Izaz Junior will go into ball for the first ball. Izaz Senior behind the wicket, and Izaz Junior, he's got a ball in his hand to start the proceedings. First ball of the match, 5 overs match, please note, and 2 overs going to be a power play. One bowler can bowl 2 overs. First ball, and straight away off the mark. Shahrukh not confident looking dry, but managed to get the single, the mistimed one. And before that, mid-off fielder will go into collect that one. The ample time for the batter to collect the single. So first run coming up here for the defending runner-up of this tournament, YFC Trophy 2023 season 1. The defending runner-up, they become the runner-up. And NM Cricketers Mangalore, the defending champion, is out of the tournament. And Torpedoes Khana defeating NM Cricketers Mangalore in the semi-final and enter into the finals, in the quarter-final in fact, and enter into the finals. Again, nice looking drive, but again the ball is went towards a short square leg region before the square leg fielder fields that one, returns that one. Again, both the batters completed single. Both the opening batters off the mark with that single. It's a 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Bright sunny afternoon. The time is exactly 5:02, and within 22 minutes, if the fielding team need to complete their 5 overs quota, as per the rules and regulation of this cricket is concerned. Right arm round the wicket bounce. This time going for the sweep shot, but ball missing his bat. Izaz is not missing the opportunity to gather the ball. The good bowling there from Izaz, as Izaz Junior bowled a little bit outside and off time, seeing the batsman going for the sweep shot, and Shahrukh completely missed out the delivery, and there is no chance at all for any run at all. Score remains on 2 without loss of any wicket in the over number first, and power play is on. Right arm over the wicket passes umpire Iqbal. This time again went for the reverse sweep. Again not really getting that one from the middle of the bat, but no problem whatsoever for the batter to complete the singles with that single score. But Namuzan to 3 in the over number first in progress. Decent line there from Izaz, the kind of line and length which is required in the power play overs. The bowler so far is really bowling a very tidy line and length. Iqbal is on strike now. Izaz balls beautifully bowled, and this time Izaz a little bit from direct hit. It's a direct hit, but umpire says it's a batsman is a safe, and by call by umpire, rightly so, and batsmen have made it. But Izaz is a little bit fumble there from Izaz, but even the direct hit will not going to give the result here. Rightly so, umpire in a naked eye, the Iqbal can judge that the batsman is a safe, rightly so. The no run is done, and over number first in progress, and which is first in progress. The scoreboard is a 4 on the board for the without loss of any wicket.
Again, bowler bowling with a short run up. Izaz. Right arm around the wicket. Short fine leg, square leg, mid wicket, short mid on. Deeper, wideish long on, long off, short mid off, short cover point, short backward point region. The fieldsman. Here is the next one. Last ball of the over. Again, bowler's back now. Chance of run out. Missed out by Izaz. Ball went straight to the hands of fielder on his follow through. Just moving to his right. Fields the ball, but fails to collect the ball. And the ball just slipping out of the hands. And the batter got a single. So, steady over. And a very good steady over there from Izaz. 5 runs came from that over. And a steady start from the opening batters of team Shark Boys. A little correction for Shark Boys. Bajal, they managed to get 5 runs in first over. That means first over, which belongs to fielding team, because it's a power play over, and probably the power play is always going to be a key for each and every batting team to get some runs. But in this particular over, the bowler bowls great over. The fielding team, I already mentioned, 21 minutes, 22 minutes. They need to complete your 5 overs quota. Umpire will go in to note the time, and just like we are mentioning about the time sense is so important for each and every team to complete their 5 overs quota within the stipulated time. So Zubair is brought into attack, the man who got a lot of experience behind him for representing for Young Friends Surua for the long time. One of the key player, the frontline bowler for the side of Young Friends Surua, and now he's representing for his home team, the Shark Boys. Saz friends Ulal, little bit correction. Saz friends Ulal, and wait and see how well you're going to contribute from the bat. The Mangalore Express, which is the nickname of Zubair, and wait and see how well he will going to justify that Mangalore Express. Right arm over the wicket balls. First ball, the bowler's back drive, chance of caught and bowled. Just a wide off that fielder. They're coming back for the second, and they made it quite easily in the end. Little bit late reaction there from the bowler, isn't it? And Zubair has bowled a slower one in the occasion, and the batsman tried to hit the ball. Ball is in there for a while, but Zubair couldn't manage to react quickly to that catch, so that batsman survives. Not only survives, but he got a very important couple of runs for his team. 7 without loss of any wicket. Appeal for leg before it is gone. Absolutely gone. He's just trying to play across the line, try to swing that one on the onside region. So whenever Zubair's ball that line, he always gets a wicket. Just look at the line what he's bowled, and absolutely he's shuffled across the line of the delivery. That's why the umpire has got no hesitation. If he's standing there and trying to play the ball, definitely it's going to be a survival. But he's shuffled across the line of the delivery and finding himself right in front of a stump. And umpire Nasir Bajal has got no hesitation in his mind to raise his fingers. First wicket is back into pavilion of team. For team Shark Boys Bajal. So Shark Boys Bajal lost their first wicket, and Zubair, who is the one picked up a wicket in the form of leg before wicket, and the batsman is back into pavilion is Shahrukh after contributing 5 runs, facing 60 deliveries. Replacing him, Shamshu. And leg by call by umpire. One more addition to total. Addition of that single scored Namuzan to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Zubair again right arm over the wicket, balls beautifully bowled again. Appeal for leg before wicket, but this time my ball is doing too much, and doing too much in the sense is bowling a big off cutter. The big off cutter which is going to miss the leg stump, and rightly so. Umpire Nasir Bajal saying that ball just missing the leg stump, and leg by signaled with that single scored Namuzan to 9 for the loss of this time. Loose stroke. Oh, what a catch! What a catch taken there by the jersey number 15. Izaz Junior is the fielder down at mid-off region. I want to see it in a replay. The kind of catch, because that ball is a mistimed lofted stroke there from the batter. And look at the fielder where he was standing in the edge of the circle. Not quite able to get the timing. Ball is coming very slowly. Just look at that. Absolutely fantastic one. The timing of the jump is so good in that occasion, and he takes a very good catch. Wicket number 2, which is back into pavilion.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ಲೇಯರ್ ಡಗೌಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. 2 ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ first ball, next ball, it is outside the off stump. Good over, and absolutely good over there from Zubair. Outstanding over, just like I mentioned about the experience, which is definitely going to be key for the success of this over. 2 wickets in that over for Zubair after completion of over number 2, searching for the right track, and Shark Boys Bajal managed to get only 9 runs at the rate of exactly 4.5 runs per over. And 4.5 runs per over is always going to be a total which is not underestimated, but I think it's going to be a steady start from the batters of Shark Boys Bajal. But still there are 3 overs remaining, and wait and see how Shark Bajal will going to get some runs in the remaining 3 overs. So Zubair's over is considered only 2 runs and 2 in the form of leg by, but 2 wickets as well in that over. So altogether it's a fantastic over. It comes to an end. 5 in the first over, 4 in the second, and 9 runs, which is total score of the team Shark Boys Bajal. So one more experienced campaigner. We are talking about Taslim, a very very disciplined cricketer for the side. Taslim has got experience, the more experienced player for the side, and wait and see how Taslim will go to contribute from the ball. And good all-rounder, can contribute from the bat, and a very good bowler as well. And he's got 1 deep long on, 1 at wideish long on, 1 at a deep backward square leg, 1 at deep long off and deep cow point, and fielders out there in the deep in the outside the circle. Short fine leg is there, short mid on is there, short cow point, short backward point, and that's the field set here for the right-hander batter of the bowling of Taslim. Iqbal is on strike. This time Taslim balls. The batsman went for the sweep shot and appealed for leg before wicket, but umpire called it's a leg by. It's not a leg before wicket. It's a LBW. It is a leg before wicket. It's not like LBW, because ball just going to miss the leg stump because of that the line which is bowled a little bit midline leg stump, and rightly so no hesitation from umpire to call that leg by. 10 for the loss of 2 wicket. Taslim again. Right arm over the wicket, balls to Naushad. Naushad this time went for the sweep shot and swept it on very nicely down to square leg. Running out and looking for the fumble, and they made a fumble, and they grabs the opportunity to come back for the second, and they completed very easily in the end. So that's the strategy, the game plan there from the batters, because after sweeping the ball, you know exactly the fielder is the need to cover the ground a lot from deep backward square leg to short square leg region. So that time I think the batsman were able to run quickly. The fielder always under pressure to need to collect the ball neatly. Any fumble, small mistake, that could be a couple of runs. Good thinking. Scoreboard numbers on to 12 for the loss of 2 wicket. Again went for the reverse sweep. Ball is not far away from Izaz in the stumps, looking for the run out, but this time the batter quickly realizing that non-striker quickly realizing that there's an opportunity for run out which is created, so turns back very quickly, and then back into non-strikers, and no damage done, but a very important dotted delivery. Taslim again now bowling with a short run up, bowling away from us, right arm over the wicket to the right-hander batter. Again this time ball is in there for a while, but we need for the umpire signal it's a leg bite, so nothing has happened here, just a leg by. One more addition. So Taslim bowling a very strong line and not giving any opportunity for the batsman to freeze the arm. So one more single is added, total 13 for the loss of 2 wickets. So in this particular over, 2 leg boys and 1 couple of runs and 1 dotted delivery. Altogether 4 runs came in just 4 deliveries, and a bowling 5th time in this over. Right arm over the wicket, bowls to beautifully bowled, fantastic one. Taslim this time bowled a different line after his bowling almost midland leg stump. This time he bowled outside the line of off stump, and batsman tried to make a cover drive but missed it completely, and there is no chance at all for any run. Again
bowler back to his bowling. Mark Taslim showing his all his experience, what experience he's got the last 10 to 15 years in under-arm cricket. And bowled him, clean him up with a beauty. Yoko length, in the fact it was a low full toss. His batsman misreading that one, and the ball is in a different line, the bat which is in a different line, and that's what ball is missing his bat. And Taslim strikes in this over once again for his team. Wicket number 3 is back into pavilion, and Taslim this time bowling a little bit wide of the crease, and just he knows that he wanted to look at that one. It's just wide of the crease. It's just a full toss. It's not a Yorker land delivery. It's a full toss between a low full toss, and the batsman just misreading, beaten by the pace. Of course, it's a full toss, but the ball has got extra pace in the ball. Beaten by the pace, the batsman is back into pavilion. One more wicket is back into pavilion, and scoreboard is now remains on. 13 on the board. 13 on the board for the loss of 4 wickets. So deep in trouble now. The team, the defending runner-up of the previous edition, the edition 1 of this prestigious YFC Trophy 2023, and which is proudly organized by YFC Bajal, Nanthoor, Mangalore, in association with the Little Kingdom Phones, Bahrain. And so far is a wonderful cricket tournament is progressing here under the great leadership of we are talking about Nazir Bajal and Janab Ashraf, the corporator, and of course the organizer of this cricket tournament, Jabbar, and his teammates done a great job. Leg by call by umpire, one more addition to total with the addition of that single scored Namuzan to 14 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Zubair continuing, and he got opportunity to bowl the second over, because he's bowled magnificently in the first over, 2 runs and 2 wickets in the first over, and he's bowling second time in this over. Right arm over the wicket balls. Batsman this time lofted that one, and fielder is there in the deep, so that batsman have to settle for the single. Good piece of fielding there by the fielder in the deep, and quickly returns that one into the hands of the bowler. So no question of second run. So with that single, Skobert moves on to 15 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. So very quiet cricket is going on here, and both the batters are dealing with the singles. Lovely improvising there. This time they're running hard. And they're coming back for the second. A little bit misfield there by the fielder. Again, they're grabbing the opportunity to complete that couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 17 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Excellent placement there from Naushad again. Just allow the ball to coming into his bat, then closing the face of his bat and turning that one down to square leg region for a couple of runs. Now one fielder is situated down to square leg region for that stroke, and one fielder which is removed from the third man region. This time went for the reverse sweep, appeal for leg before wicket. Umpire not convinced enough to get the leg before wicket. It's a very confident appeal there from the bowler as well as the wicketkeeper, but umpire not having evidence that ball going to hit the stumps there. Might be the ball just going down the leg stump because of the impact of the line. Maybe that the ball going to miss the leg stump, and umpire rightly so, Nasir Bajal is not interested. Score is on to 18 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Zubair again bowls goes outside leg stump, going to be a delivery which is well within the reach of the batsman. Batsman just missing the golden opportunity to swing his bat. This full toss really surprised the batsman, isn't it? Because that ball has got extra pace in his face, and he's just beaten by the face of the delivery. This time I think it's going to be a catch. I think it's going to be a maximum. Once the ball is coming just left the bat of the batsman, looks like it's going to be a maximum, but ball is just losing the strength, isn't it? Because of the direction of the wind is not really helping that stroke. But just look at that one, hoisting it over, magnificently struck, but unfortunately ball is landed into the hands of the fielder at wide dish long on. Taslim the fielder and wide dish long on, judging the catch very well. And if the batsman able to hit that one little bit square of the wicket, we can get the distance, because in day number 1 we are witnessing 2-3 sixes in that square leg region. But the batsman is just choosing that area which is one of the longest part of the ground, and unfortunately is back into pavilion. So one more wicket is back into pavilion, and bowler Zubair once again picking up a wicket here for his team. 3 wickets for Zubair, and altogether it's 18 for the loss of 4 wicket in the over number 4 which is completed. Now last over going to start from the commentary box end.
It's 18 for the loss of 4 wickets. So over number last will going to start from the commentary box end, and it looks like it's going to be the bowler is jersey number 13. So Nasir brought to the attack, one more experienced campaigner with the jersey number 13. Outside and leg stump, and going to be a wide 1+1, 2 more run to the total. The bonus run starts with for the final over. Each and every run going to be very crucial. And YFC Bajal is getting that extra runs and extra deliveries as well. It's a 20 for the loss of 4 wicket in the over number last in progress. Again, bowler bowling with a short run up. Right arm round the wicket balls. Again, that going to be a one more wide, one more extras. So bowler is really struggling here, and Nasir is the one really fails to get his line and length, and the scoreboard remains on 21 for the loss of 4 wicket in the over number last in progress. Looks like it's a very hot and sunny afternoon. It's not so easy afternoon, and umpire just giving giving that water break for the batter, because it's not so easy. I already mentioned about that is a hot condition, and what we're talking about, the temperature is a different temperature when you're coming to this ground. It's a different temperature. If you see anywhere in Mangalore, it's not that much of hot, but when you're coming to this ground, and that's why the umpire Iqbal always calling this the nickname the Sri Lanka ground. He's always telling that we are coming to the Sri Lanka ground, Satish. It's not so easy, and of course it's absolutely the Sri Lanka, the temperature of Sri Lanka. Even I think you are compared that one to the West Indies as well, because the temperature is always going to be very high, and we need to give that special thanks to the cameramans especially, because they are the one just going getting the shelter of the umbrella, small umbrella, and under that they managed to complete their duty. It's not so easy in this condition. So all umpires as well as the cameramans, they are the one is really needed the words of appreciation for their work. And here is the bowler again bowling from the commentary box, and right arm round the wicket balls. This time top edge. It's going to be a chance here for the fielder, and he takes drops a catch. He taken that one very lightly. So that it's costing 2 runs. Dropping the catch is not a big loss. After dropping that catch, the batsman getting 2 valuable runs. That's going to be very costly. 23 for the loss of 4 wicket here, and what could be a certain wicket here for Nasir, and he's just unlucky here. Didn't got wicket for him. Shakil is the captain. Will go into face next ball. Again, highly indisciplined bowling performance there from the bowler Nasir. Is so many deliveries bowling here. The already bowled the 2 wides, and now again the one more wide deliveries. Altogether is considering some runs, important runs for the opposition team. It's a 24 for the loss of 4 wickets. Some tries that one straight to the hands of fielder. Chance of run out in a no strikers, and that is gone. Just looks like this time that the same fielder who dropped the catch is not really making a mistake this time. Is not just making a patchwork. Is just making a patchwork after dropping the catch. This time neat collection and a very good return into the hands of the bowler, and then one more wicket is back into pavilion. It's a 24 for the loss of 5 wickets in the over number final in progress. So new batsman is walking towards the middle after the dismissal of the captain Shakil. Shakil is back into pavilion. Now Akeem came into middle. So Naushad is in non-striker end, and now Naushad is in striker end, and again they want to be one more wide. Oh my goodness, it's definitely going to be a bonus runs coming here, and
Nasir gifting some runs for the opposition. They're not having enough runs, but now they looks like going to get enough runs here. 24 for the loss of 5 wicket. 25, and now it's going to be bowled. And at last Nasir gets a wicket here. But I think it's that 3-4, the wide balls which is bowled by Nasir. And if you deduct all that extras which is conceded by the bowling team, and I think there's no enough run. There's not enough run for Shark boys Bajal. And now still they have to play another 3 balls. 3 balls remaining. And scoreboard is 25 on the board. 25 ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ. So Nasir bowling a prolonged over, absolutely prolonged over. 4 extra deliveries bowled. Just 13, which is the jersey number of Nasir, bowling right arm around the wicket. Again, one more wide, 5th wide of this over. 26 on the board. A lot of exercise here for umpiring ball after the lunch break. Of course, he didn't have a lunch break yet. And this time again, chip that one. Down to deep cow point region. Running hard, looking for the second. In comes the throw. And the throw is not really having enough power. Throw is not really having enough power, so the batsman completed a couple of runs. A valuable couple of runs came from the bat of Sajid. With that couple of runs, scored was under 28 for the loss of 6 wicket. The important runs coming here in the last over. Nasir is bowling expensive over. Not from the bat, but himself is conceding some runs. And of course, the batsman really having a little bit nasty blow. Not from the bat, not from the ball, but a dust which is coming out, which is hitting his eyes. And looks like after been a very good sportsman spirit which is shown there by Izaz behind the stump, helping to get the dust out of the eyes of the batsman. Again outside line of off stump, going for the single. With that single, scoreboard numbers on to 29 for the loss of 6 wicket. The over number last in progress and last delivery of their innings is coming up. Akim will go into the striker. Can he able to get one big shot here to get a good good total? This time going for the big shot. Ball deflected from the leg. They completed a single, looking for 2, but there is no chance at all for the second. Leg by call by umpire. That's it. Completion of over number 5. And the Shark boys Bajal at last managed to get the competitive total of 30 runs. And they set a target of 31 for the 31 to win the match for team Ulal. So the big over, absolutely big over. 12 runs which is came from that last over of Nasir. That means it's extras actually in that particular over, 7 to 8 extras. And altogether I think Shark Bajal, boys Bajal may be thinking about it, might be the enough runs in the board. And if they wanted to justify that enough runs on the board, they need to bowl very well, because the team which is we're talking about, Saz friends Ulal, they definitely got some good batting department. They got some experienced campaigner in the side, and it's going to be very interesting. Meanwhile, the next match is going to be a second round match of the day number 3, and that match will be played between Class 11 Chokobettu versus Mother India Buliar. Demadi ಎರಡು. So I request Mother India Buliar as well as Class 11 Chokobettu, all the players complete the formalities of signatures as soon as possible, and please get ready for the next match and complete the tossing ceremony. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರುವ ಮುಂದಿನ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So meanwhile, change in commentary box as well. After that lunch break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you so much.
शुक्रिया सतीश। तो जहां तक सवाल है इस वक्त शाज उल्लाल के लिए, इस वक्त लक्ष्य 31 रनों का और पहले बल्लेबाजी करते हुए शार्क बजाल ने ठीक 30 रन बना निर्धारित 5 ओवर में और 31 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा है। 31 रन बनाने हैं ठीक 6.20 रन प्रति ओवर का औसत से, exactly 6.20 runs per over they have to score for victory in their 5 overs for Shaz Bajal to qualify for the next round of this competition. तो इजाज और सादिक का आरंभिक बल्लेबाज, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो रिहाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 31 रन बनाने शाज उल्लाल को शार्क बजाल के खिलाफ, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई पहले गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार था इन हाथों पर द विकेट लंबे कद के गेंदबाज, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉट फाइन लेग फील्डर चुके हैं और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1+1 2 रन ब्रिंग्स द रन्स अकाउंट ओपन फॉर शाज उल्लाल। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके की गेंदबाज यहां पर गेंदबाज रिहाद करते हैं। तो इस वक्त रिहाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, जबकि सादिक का सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद थी और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। कोई भी सही गेंद तब तक फेंकी नहीं गई और गेंदबाज रिहाद एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम के अन्य खिलाड़ियों से कुछ सलाह मशवरा प्राप्त करने के बाद अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। गेंदबाजी के रनअप में इस वक्त मार्क करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिला और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सिर्फ एकमात्र सही गेंद अब तक फेंकी गई है शाज, माफ कीजिए, रिहाद द्वारा। और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो इजाज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और रिहाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लेग सबसे बाहर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची ऑफ साइड पर, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 4 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, जमीन के सहारे गेंद आई थी और अपील इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त अंपायर बढ़ते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की ओर और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार वो लेते हैं। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ था असल में हमें पता नहीं लगा, लेकिन देखते हैं यहाँ पर तीसरा अंपायर क्या निर्धार देते हैं।
not out. The decision came from the third umpire and everything seems to be perfect for the batsman. और स्कोर यहाँ पर रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और खिलाड़ी इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, तो विकेट कीपर के पैरों पर टकराने के बाद गेंद, विकेट कीपर के पैर पर गेंद टकराने के बाद विकेटों पर टकराई थी, तब बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर सही तरीके से अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और एक बार फिर से बातचीत जारी है अंपायर और खिलाड़ियों के बीच। तो सब कुछ सही सलामत बल्लेबाज के लिए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। और एक बार खेल फिर से पुनरारंभ यहाँ पर होता हुआ और 31 रन से बनाने हैं। ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಲಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली टू मेक अ साइन इन द ऑफिशियल चार्ट. तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त गेंद को स्वीप किया. गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग नेट से बाहर और इस बीच 1 रन मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और कुल मिलाकर इस ओवर में 2 गेंदें अब बाकी है. और तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रिहाद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके, 3 रन वाइड के रूप में प्रदान कर चुके अब तक. यह गेंद ड्राइव किया इजाज ने जगह बनाते हुए, लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए. गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका. 6 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार ड्राइव किया, मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, कांट फाइंड्स द गैप एज वेल. और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स नहीं मिलेंगे. 6 रन इस ओवर में प्रदान किया रियाद ने. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर शाज उल्लाल 6 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. 25 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means in 4 overs with the required run rate of exactly 6.25 runs per over. बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किंग स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है. इस बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है YFC बजाल नंतूर मंगलोर ने इन एसोसिएशन विद लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन इनके सहयोग से. और ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई आज इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन. और इस तीसरे और अंतिम दिन का चौथा मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर प्रगति पर. और इस वक्त मुकाबला जारी है शार्क बजाल और शाज उल्लाल के बीच. शार्क बजाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर में 30 रन बनाए. शाहजहुल्लाल को इस वक्त बनाना है 31 रन. और इस बीच गेंदबाज फारूक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार इजाज. और ओवर की पहली गेंद ये गेंद इजाज के लिए स्वीप किया इस वक्त. शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, मिस फील्ड है लेकिन बैकअप होता हुआ इस वक्त स्क्वायर लेग पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 7 रन बन चुके हैं. 7 without loss at the start of the second over in fact. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फारूक दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फारूक अपनी ओर की
अगली गेंद लेकर तैयार, दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन नेट पर टकरा कर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त 4 रनों के लिए। स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार था और गेंद सीधे जाकर 2 स्क्वायर नेट पर टकराई और उसके बाद अपने दिशा को बदली और हल्के हल्के टिप्पा खाते हुए सीमा रेखा को पार कर गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त सादिक के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर 20 रन और चाहिए विजय के लिए, 22 गेंदें और बाकी उनके पारी में 20 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 22 बॉल्स। और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त फारूक तैयार, सादिक इस वक्त सामना करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात और डीप एक्स्ट्रा कवर केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक के लिए। और फारूक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए सादिक के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत। और जहां तक का सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर फील्डर झपके गेंद पर, लेकिन ठीक तरह से पहले प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने में असफल। दोबारा जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोर को बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और फारूक एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार इजाज सामना करते हुए फारूक की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार ड्राइव किया इजाज ने, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल। गेंद पहुंची मिड ऑन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, तो यहां पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और फारूक एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद चेक किया खूबसूरती के साथ, एनफील्ड क्लियर करते हुए और गेंद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इनसाइड आउट क्रिकेट वो खेलते हुए इस वक्त विंडो ऑफ स्टंप पर गेंद थी और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त स्कूप किया था। देखिए किस तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला, विकेट से हटते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए गेंद सीधे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के एप्पल प्लाई बोर्ड पर इस वक्त टकराती हुई और 4 रन इस वक्त जुड़ चुका है। शाज उल्लाल के खाते में 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ शाज उल्लाल और इस बीच फारूक का अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, इजाज एक बार फिर से सामना करते हुए और ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट और गेंदबाज ने गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 17 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स विद द रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 8.5 रन्स पर ओवर scored by शाज उल्लाल, chasing the victory target of 31 in 5 overs. 14 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs with the required run rate of exactly 4.67 runs per over। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो इस वक्त लक्ष्य कुछ हद तक इक्वेशन आसान नजर आता हुआ, लेकिन ना बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त शार्क बजाल के गेंदबाजों को। अगर एक या 2 कसे हुए ओवर्स वो यहाँ पर फेंकते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में वो वापस आ सकते हैं और उस कोशिश में गेंदबाजी इस वक्त सौंपी जा रही है। गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक के लिए। नौशाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, जबकि सादिक का
सामना करने के लिए तैयार। और ओवर की पहली गेंद लेकर 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त नौशाद तैयार सादिक के लिए। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए करके ठहरते हुए इस वक्त सादिक का ये गेंद इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। मौका इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के लिए, लेकिन कैच छूट चुका है। कैच यहां पर छूट चुका है। मैं समझता हूं वहां पर रिहाद फील्डर मौजूद थे और यहां पर निशाना टकरा चुका है, तो कैच से जरूर बचे सादिक, लेकिन रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवा चुके हैं इजाज इस गेंद पर। तो देखिए यहां पर क्या हुआ था, गेंद को उछाला था स्क्वायर लेग पर, डीप कवर पॉइंट पर, टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। कैच इस वक्त छूट चुका है और जैसा ही दोबारा अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करके गेंद को थ्रो किया उन्होंने और यहां पर नॉन स्ट्राइक रन पर इजाज का विकेट गिर चुका है और यहां पर रन्स उनके खाते में इस वक्त इस गेंद पर बने 1 और 1 विकेट इजाज का गिर चुका है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 13 रन और चाहिए 17 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। 13 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 17 डिलीवरीज। दर्शकों की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। सुबह जितने दर्शक से उससे कुछ ज़्यादा दर्शक यहाँ पर नजर आते हुए और आज इस टूर्नामेंट श्रृंखला का अंतिम दिन और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, शफीक, जो कि नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सादिक का दाहिना तो बढ़ता विकेट। नौशाद की गेंद स्विंग किया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट एंड जस्ट वी आर वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। इट्स जस्ट अ सिंगल, he hit that one 2 squarer and because of that he's got only a single। अगर थोड़ा सा सीधा गेंद को इस वक्त स्कूप करते, लॉफ्ट करते तो निस्संदेह छक्का उनके पक्ष पे आ सकता था, लेकिन इस वक्त रन मिले सिर्फ 1 और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, लेकिन स्ट्रोक्स काफी बेहतर था इस वक्त। इस बार अपील और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। लेग बिफोर विकेट के रूप में यह विकेट गिर चुका है। जोरदार अपील को पुरस्कृत करते हुए अंपायर ने इस बार अपनी उंगली उठा दी और यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका है। देखिए किस तरीके से हुआ था, एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट, द बॉल पिच्ड ऑन द लाइन और मिडिल स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कर आती हुई उनके पैर पर गेंद टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई। उन्हें आउट घोषित करने में सही निर्णय अंपायर द्वारा और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है सादिक के रूप में। इट्स 19 for 2। नाइस नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अभी भी अपने विजय से 12 रन दूर शाज उल्लाल और इस बीच अपने अगली गेंद लेकर गेंदबाज नौशाद तैयार था। तो बढ़ता विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। अगर 12 रन बनाने से बल्लेबाजों को रोकना है तो गेंदबाजों को खासकर इस डिपार्टमेंट पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, वाइड के डिपार्टमेंट पर। और यहाँ पर लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त और 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुट चुका है। 20 रन बच चुके हैं दोनों आरंभकार को खोने के बाद। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शॉट्स को लेकर दिशा में। अच्छा रिस्पॉन्स नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा था और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज नौशाद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए इस बार शॉट फाइन लेग के दिशा में, विकेट कीपर स्वयं गेंद तक पहुंचे और इस बीच अंपायर का इशारा एक और वाइड का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त प्राप्त करने में कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करते हुए गेंदबाज तो वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं। अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। तो बढ़ता विकेट
गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, एक बार सही गेंद घोषित, कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और हालांकि लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल चुकी है और शायद अंपायर ने इसे सही गेंद घोषित किया कि बल्लेबाज रिवर्स शॉट ऑफर कर रहे थे। तो इस बीच स्कोर रुक चुका है। 22 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. तो वाइड इस वक्त घोषित, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और अंतिम कार स्क्वायर लेग अंपायर से पूछताछ करने के बाद अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया क्योंकि बल्लेबाज रिवर्स शॉट ऑफर नहीं कर रहे थे और एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार, अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और आखिरकार एक रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है लेग बाय के रूप में 23 रनों पर, 24 रनों पर, एक 2 विकेट के नुकसान पर। So 24, 7 runs to get for victory. तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, एक लंबा ओवर यहाँ पर प्रगति पर नौशाद द्वारा। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थे और गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 overs completed and after 3 overs chasing the victory target of 31 in 5 overs, they are looking in a good situation. Ulal managed to score 24 for the loss of 2 wickets. Just 7 runs they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in 12 balls, and at this situation, equation seems to be much easier for them. रिहाद अपना दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ शाज उल्लाल की पारी में 7 रन चाहिए 12 गेंदों में। कमबैक करने के लिए इस वक्त गेंदबाज को चाहिए डॉट गेंदें और विकेट इस मैच में। और ओवर की पहली गेंद लेकर लंबे कद के खिलाड़ी रिहाद अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए फॉलो थ्रू में गेंदबाज गेंद तक पहुंचे जरूर लेकिन गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में सफल और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज रिहाद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार खूबसूरत, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन टू डीप एक्स्ट्रा कवर प्लेड बाय द बैट्समैन और कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके, गेंद इस वक्त विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए थ्रो को रिसीव करने में असफल, कलेक्ट करने में सफल और इस बीच वाइड का भी इशारा हो चुका है। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ विजय के और निकट होता हुआ यहां पर शाज उल्लाल 28 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, जस्ट 3 रन्स टू गेट फॉर विक्ट्री फॉर शाज उल्लाल और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा क्विक डिलीवरी एंड ही हैज जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन और एक्स्ट्रा पेस के साथ इस गेंद को फेंकी गई थी। लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस गेंद को फेंकी थी गेंदबाज ने, रिहाद ने। देखिए किस तरीके से एक्स्ट्रा पेस और इस गेंद की तेजी को समझ नहीं पाए, लगभग गेंद जमीन के सहारे आई थी और आखिरकार बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ बैठे और उस अंतर को चीरती हुई गेंद लेग स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए बेहतरीन गेंदबाज रिहाद द्वारा। ऐसे ही चंद और गेंदों की जरूरत इस वक्त गेंदबाज को
अपने टीम को वापसी पर लाने के लिए। अभी भी 3 रन और चाहिए विजय के लिए, 9 गेंदें बाकी। 3 रन्स टू गेट फ्रॉम 90 ओवर्स। और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है। निजाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और रिहाद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप पर आते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, जस्ट 2 रन्स टू गेट फॉर विक्ट्री। अगली गेंद रिहाद, दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए, और रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1, 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ शाज उल्लाल रजिस्टर्ड कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री by 7 wickets against Shark Bajal, and the 4th match of the day 3 of YFC Trophy Season 2 2023. And with this victory, with this 7 wickets comprehensive victory, Shaz Ulal are through to the next round of this competition. So man of the match, so man of the match, the award goes to Zubair, the bowler who bowled brilliantly in this match, conceded just 3 runs, 2 runs in his 2 overs quota, 5 runs in his 2 overs quota he conceded, and captured 3 wickets, 2 overs no beaten, 5 runs and 3 wickets. And because of this outstanding spell, Zubair of Shazulal bagged the man of the match award. I request Zubair of Shazulal, please come on to the dais and receive the man of the match prize from organizers. Zubair of Shazulal adjudged the man of the match. Next match, the first match of this second round of this pool, will be going to play between Mother India Boliar versus Class 11 Chokebetto, और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापसी करेंगे सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಲಿಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಚೊಕೊಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಲಿಯಾರ್ So thank you very much and welcome back once again for the match, the free quarter final of this prestigious cricket tournament, and Mother India Boliar after winning the toss selected to field first against Class 11 Chocobetu. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
2 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. So welcome back once again back to the match. So welcome back once again. We are talking about this match, and the match will be played between Class 11 Jacobetu versus Shine Bantwal. Repeat correction, Mother India Boliar. After winning the toss, Mother India Boliar elected to field first. So I request batsmen of Class 11 Jacobetu, please go for bat immediately. Please don't waste the time. I request batting team, please send your opening batters as quick as possible. Umpires walking towards the middle. The officials for this match, umpire Nasir Bajal as well as umpire Arif Jokate. I request extra player of both the teams, please report to the commentary box immediately. Extra players ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ commentary box ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. So everything is ready here. Opening batters. So Ashraf as well as the first ball nicely driven and towards a deep long off region for a single, and with the single there off the mark, and Class 11 Jacobetu. So first wicket is back in the pavilion, and it looks like it's going to be a duck here for the batter. Zahir this time tried to hit the ball but not really getting that placement right, as a short mid wicket fielder takes the catch, and wicket number first which is back in the pavilion. So Ashraf is back into pavilion, and Zahir is there in the middle. Zahir is in non-striker's end, and now jersey number 45 is just slowly walking towards the middle. So a lot of contribution for the success of this cricket tournament. Special thanks to Jaid, who really donated that apple fly. Is one of the sponsor of this cricket tournament, and thanks to Jaid, who donated as apple fly advertisement for this cricket tournament. Thank you very much, Jaid, on behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers. Outside the line of flag stamp, and going to be a extra, one more extra, with that extra score numbers on to 2 for the loss of 1 wicket in the over number
uh, first in progress. Always is going to be a key to get a very good start. And again, the bowler bowling right arm, really struggling. Again, the bowler will going to bowl the next ball. The name of the bowler is Nizam, and with the jersey number 7. Right arm over the wicket balls. This time set that one died to score like this. And chance of run out there. Direct. It might be the close one. Not only the close one, but I think the batsman definitely going to be out because the batsman struggling to reach his home down to striker's end, and there is no chance at all. There is of course opportunity of a single there, but a very risky one. Ashraf survives. Again done. Look at the wicket keeping there from Mansoor. It's been outstanding. Just like I'm mentioning about one of the few wicket-keeper batsmen in the present cricket. It's very quick behind the wicket, especially when you're gathering the ball outside the line leg stump. When ball is passing between the legs, it's not so easy to by wicket-keeper to collect the ball because judging the line is not so easy. It's just an experience actually. This is only the experience, the judgment which is made by the wicketkeeper behind the stump. It's not seeing the line, but they are making the judgment. Of course, ball will go to coming this line, and just an imagination. And with that imagination, the gathering the ball, not only gathering the ball, but it's their completes the job. And fantastic work behind the stump. Here is the next one. Right arm of the wicket balls outside the non-leg stump, going to be punishable from the umpire. And with that extra score, moves on to 5 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Bowler really struggling, Nizam, as it really fails to get the line and length because each and every extra runs will go into be the big one in this particular tournament, especially when you're playing the 5 overs game. You need to restrict this all extras. Right arm over the wicket. Bounce this and tries that one nicely down to deep cow point region for a single. With that single, score moves on to 6 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. The team Mother India Boliar, after winning the toss, selected to field first so that Chakobitu in class 11 Chakobitu and their boys are batting first this time. Must have that one straight to the hands of fielder. Chance of not out in the non-strikers, and this time Arif referring for the third umpire for the run out, and we have to see whether the batsman is a safe or not, but it's going to be a touch and go. Absolutely it's a touch and go, and just wanted to sweep that one. After swept the ball, he's just started his run, and look at the throw from the fielder. Absolutely good one, but we need to see that the batsman's bat, well, it going to be in the air or ball which is the bat which is a drags in the right time or not. It's going to be very very touch and go. Sometimes it's very difficult, isn't it? And I always in international cricket, if you see that the dragging the bat is so important, and that's what I'm talking about. If you drags the bat, then you will always be safe. If you try to put the bat into the crease, then you are going to be a trouble. And but it's going to be touch and go, absolutely touch and go. But we can umpire have to see that the batsman safe or not. Now umpire will going to give the decision. It's a not out. A batsman is a safe. He drags the bat in the right time, and it's an absolutely perfect one. Over number first completed. After completion of over number first, it's a 7 for the loss of 1 wicket. And sometimes it's happening in cricket, isn't it? And the bowler is very confident that he's got a wicket in the form of run out, but sometimes it's happening because bowler only looking towards stumps, but he's not looking towards a batter. That's why it's really surprised from the face of the bowler. Why didn't umpire call that out? But batsman is safe, rightly so. Good decision, right decision. So over number first completed. After completion of over number first, it's a 7 for the loss of 1 wicket. So coming back to the second over, it's going to be a second over will be bowled by the jersey number 10, and the jersey number 10 it's not Sachin Tendulkar, mind you. It's Naushad, and just coming back to the jersey number 10, and legend Sachin Tendulkar wearing that jersey number 10 in cricket, international cricket. And white call by umpire, and with that white scoreboard moves on to 8 on the board. Just coming back to some we are talking about the previous match also, and earlier we are talking about jersey numbers. We are talking about 00, where we are talking about Gori Young Boys Iqbal,
wearing that jersey number. This time chance of run out is going to be. This time I don't think it's going to be a batsman is safe. I don't think the batsman will going to be safe or not. But the umpire will going to tell you. The third umpire will going to tell you whether the batsman is safe or not. The quick work done by the fielder. Just look at that one. Nice returns that one down to square leg region, and good piece of fielding there by the fielder. Excellent field, and look at the throw. But I want to see that the batsman whether the safe or not. But seeing the body language of the batsman, it looks like batsman is very confident that he is safe. But umpire have to see that whether the batsman is safe or not. Iqbal is the third umpire. This is a heartbeat of the batsman. And whether he's going to be out or not out, because it's a very slow heartbeat. That means the batsman is thinking that it might be the safe, and but even I think the Mansoor's face I'm watching, Mansoor is not confident. Mansoor is confident. He's saying he's out, but here is umpire need to be confident. Umpire says the batsman is safe. The second time, again, the batsman is safe, and the second time the batsman looks is very safe, and two opportunities which is missed out, and class 11 Chocobetu survive from the run out second time. Some lovely delivery, fast and quick there from the bowler. Absolutely, we are talking about the jersey number 10. The bowler is bowling here. We are talking about the jersey number 00, the square leg umpire. We are talking about Harif Chocobetu, the square leg umpire, wearing that same jersey number 00. Outside the black stamp, going to be one more wide. Lot of indisciplined bowling performance. Again, the one more extra. So Arif is the one is represented for South Sporting Jaipur in his olden days. Then he's wearing that same jersey number 00, and is performed very well wearing that jersey number. This is absolutely psychological advantages. This time he lofted just over the infield. The fielder behind the ball, the captain himself behind the ball. But before the fielder will going to cut that one, here is the batsman completed a couple of runs. Useful cricketing stroke, and just getting over the top of the infield, especially in the playing in the power play overs. A little bit correction. Yes, it's not a power play overs, because of course it's a second power play over, and only two fielders outside in the deep, so that batsman completed that couple of runs before the fielder going back. Absolutely fantastic piece of fielding there by the fielder. Not a fielder, it's a bowler himself is fielding the ball, and there's no chance at all for any run. Naushad 12 on the board. Naushad back to his bowling mark. Right arm over the wicket to the right-hander batsman Zahir came as an opener for the side. Drives that one. Again, they're going for the very quick single, and with that single, score Namuzan to 13 on the board for the loss of 1 wicket. 13 for the loss of 1 wicket. The over number 2 is in progress, and the last delivery is left in this over. Last delivery of the over number 2, and last delivery of the power play. And batsman is on strike, Rahil, and this time they're going for the run, but it's a run out. Yes, it is a run out. Is that run out, umpire, or catch? It's a catch. It's not run out. But after hitting a glove, the ball went into the hands of the fielder. So that umpire, rightly so, is called that is a caught. So one more wicket is back into pavilion. It's 13 for the loss of 2 wickets, and we are talking about umpire Arif Jokate, and still remember Gopi in that olden days when Arif is batting for South Sporting Jaipur. Is one of the few players having a high bat lift, and Arif is one is just like in international cricket. At that time is a Lance Klusener of South Africa is having a high bat lift, just like a baseball player playing a cricket. Just that might of high bat lift. Only the one few cricketer in underarm cricket if you get the high bat lift, and Arif Jokat is the one he's having a high bat lift.
And it's not so easy in underarm cricket because high bat lift is so difficult to play the underarm cricket because you need to bring your bat very quickly when it's going to be a high bat lift. And there's one few player having a high bat lift, and Arif Jokat is the one who having a high bat lift batter in those days. Again, nicely balled along the middle and leg stump. Mansoor and Ramdarka is back into attack and is balled well. And the previous match, I don't think is ball, but this time he's bowling right arm over the wicket. Again, nicely driven down to mid wicket. And chance of run out in a no strikers end, but throw is not enough. But look at the effort there for Mansoor to collect the ball. Whether it's a wicket keeper, whether it's a bowler, but he will going to do his own job and try to make the run out, but fails to collect the ball. Again, the bowler back to his bowling mark. Bowler Mansoor bowling with a short run up. One more single added to total. This time nicely placed that one down to short square leg region for a single. With that single, scope number 15 for the loss of 2 wicket. Mansoor again. Mansoor is not a regular bowler, but is coming back to the cricket which is playing for young friends Ruwa. But when you're coming to your local teams, the home team playing home teams, and definitely the ball Mansoor will going to get the opportunity to bowl, and we will see how well he's going to grab the opportunity being the bowler of the side. 16 for the loss of 2 wicket, bowling right arm over the wicket to Ashraf. Not Ashraf, it's Dawood is a batter. Again, now going beautiful shot, nice looking drive, cover drive, imperious cover drive there from Dawood, right behind the line of the ball with a good timing. He picked up single. That single scope was on to 17 for the loss of 2 wicket. In this last time in this over, bowler bowling Mansoor with a short run up. Mansoor is famously known as a Manchu. And Mansoor run tadka right arm over the wicket bounce. Nice looking flick shot, but chance of run out. Will it going to be a chance here? This is the third time. This is the third time that fielding team tried to get the run out. The 2 times the batsman survives, but this is going to be a third time. Will it going to be a chance here for run out or not? But this time I think so. The Mansoor is always going to be a quick worker. Because this is not like the similar run out, because whenever the Mansoor will going to get the balls, he will going to make the stumps very quickly. But here is not to see that the batsman will going to be safe or not. It's one more testing time here for umpire Iqbal, and of course a lot of examination here for third umpire from the field umpire today in this particular match. And again, it's the third time in this particular match, and field umpire referring for the third umpire. Now it's a very difficult one. It's a close one, and when the bat is landed, whether the bat will, after landing, the bails are off or not, what that umpire have to see. Again, the third time the batsman is safe. Oh my goodness. Because it is absolutely touch and go. But I think when the bails are off, then right time batsman is putting his bat into the crease, and again is safe. And 18 for the loss of 2 wickets. And everything that technique will go into be justified, tested. Even experience of umpires definitely going to be tested. But more than anything else, special thanks to the technicians of King Sports, especially the man behind Izaz, as well as the square angle cameraman giving that Sheikh Abba is the one at the square angle cameraman is providing that opportunity, because always when you are coming to the run out chances, stump out chances, the square angle cameraman will going to give the exact
the picture to get the best result of the decision of run out or stump out. 19 for loss of 2 wicket. Again, right arm over the wicket, bounce. Again, going to be a wide. One more wide. The bowler is struggling to get his line and length. The bowler Mubarak. So 20 for the loss of 2 wicket. 20 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Altogether, it's a fantastic cricket tournament is in progress. It's not so easy to organize the 3 days of cricket tournament, and altogether we are seeing that effort of the organizer of YFC Trophy 2023, and because of some cooperation from some dignitaries and help from the organizing committee, everyone is contributed for the success of this cricket tournament, and because of that there's a fantastic tournament is progressing here in this Faisal Nagar. And here is again 21 for the loss of 2 wicket. Fourth over is in progress as Mubarak right arm over the wicket bounces. Zahir again nicely swept that one right between the two fielders. Chase here for the fieldsman, but one of the fielder in the sense the deep cow point fielder going to stop that one, fields that one, and here is about the batters completed a valuable couple of runs. With that couple of runs, Koban Namuzan to 23 for the loss of 2 wicket. So Dawood will got a couple of runs here. If that scores to 23 for the loss of 2 wicket. Again, Dawood will go into face the next delivery from here is Mubarak. Oh, beautiful, absolutely beautiful. And again, Dawood plays it quite nicely on the mid wicket region, and he got a couple of runs. And the Dawood is a kind of batsman who loves to use the wrist and really loves this wrist work. Always a little bit shuffled across the line of the delivery. 2 balls remaining. $25 for the loss of 2 wicket. Again outside and a black stamp. One more wide. One more wide. Scoreboard moves on to 26 for the loss of 2 wicket. $26 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Mubarak right arm over the wicket again, beautifully driven, nice looking drive there from Dawood. Dawood is looking so good, and as far as hitting the ball and getting the placement is concerned, is technical, very sound player. As a 27 for the loss of 2 wicket. As far as technical is concerned, he's wearing the technical sound players jersey number, Virat Kohli, jersey number 18, so that he is also very technical sound. A beautiful shot again, the ball is in there, absolutely fantastic catch taken in the deep. Now shot the fieldsman at the deep cow point region. Once it looks like the ball will going to land it safely, but the fielder in the cow point region definitely has got a very good run in front and just kept the eye on the ball. Once ball is looked like it's going to be landed into the ground. He's got a very good hand. He got a very good pair of hands to get the catch. The wicket number the 3 which is back into pavilion for team class 11 Chocobetu. It's 27 for the loss of 3 wicket after completion of over number 4. So very interesting to see that the Mansoor himself coming to bowl the 2 overs and wait and see, will it going to be a right choice here for to him to complete 2 overs. Coming back to his first over, he conceded 5 runs, and wait and see how well he going to bowl that last over. And for Mansoor, one at deep mid wicket and deep long on. Long off is the deep cow point is there, and only 4 fielders are in the deep. This time reverse sweeping that one, and he got a declared area single. Just a single there. With that single, score moves on to 28 on the board. 28. So
So many balls went out of the ground, out of the park. Now umpire getting ball here. To ball remaining deliveries. 5 balls remaining of the innings of Class 11 Chocobetu. Class 11 Chocobetu has got some youngsters in their side. Small, the boys, youngsters, talented young boys. They are fighting hard for the victory. Mansoor, full toss ball, nicely driven. Again, Dawood is so good in that shot. Again, driven very nicely down to deep extra coverage and for a single. With that single, Skobar Namuzan to 28 for the loss of 3 wicket. And what a fantastic innings is played there by Dawood. He's not missing any deliveries, converting each and every balls into the scoring one, and try to get some runs as much as possible. 28 for the loss of 3 wicket. Last 4 balls remaining in their innings. Now looks like 29 lit the correction, and 1 fielder at cow point, 1 at deep long off, deep long on, deep mid wicket, deep backward square leg, and the 3 fielders in the onside region in the deep. This time single-handed swap. It's going to be a chance. No, it's not like a chance. It's a single. Unfortunately, unfortunately for the batter, it's going to be a single. So with that single, Skobar Namuzan to 31 on the board. Nice looking drive. Look at that Dawood shuffled across the line of the delivery, swept that one very nicely because of the direction of the wind. Ball after landing in the playing area, then ball went out of the net into the non-playing area. So as for the rules and regulation of this particular cricket ground is concerned, it's a single, and scoreboard is 30 on the board. Muvattu. So last 3 deliveries remaining. Last 3 balls remaining of their innings. Batsman is on strike. Zahid. This time opportunity of run out in a non-strikers end, and is gone. White call, but batsman is not safe in the non-strikers end. Dawood's good innings comes to an end. Unfortunately, he is back into pebble in the form of run out, and 1 run which is added to total in the form of wide, and the scoreboard now was on to 31. So decided a day of cricket tournament, and the first the winning teams will going to get very attractive trophy, which is situated in the left of our commentary box in our main stage. Very attractive trophy, the winner trophy, and they will going to get 60,000 cash prize along with the very attractive champions trophy. The runner will going to get 30,000 cash prize along with the attractive runner-up trophy. And best batsman, best bowler, man of the match, and man of the tournament will be awarded. So wait and see which team will going to be the luckiest one, and wait and see which individual players are luckiest to get the individual prizes. Meantime, the battle is on for the place in the quarter final. It's a 32 for the loss of 4 wicket. Again, Mansoor beautifully. Again, the wicket number. It's a wicket number. Looks like it's going to be a run out. Maybe the ball after hitting the leg and ball is landed into the hands of a wicket keeper, and wicket keeper completes the job. Just I want to see it in the replay. It looks like batsman just going for the run, and wicket keeper complete the formalities. So with that 1 wicket, scoreboard is 32 on the board for the loss of 4 wickets. Last ball remaining of their innings. Razik is the new batter in. So far, Mansoor did a great job in this last over, and even though he bowled 1 wide, but is restricted the big runs like boundaries. Now final time in this over. Mansoor, right arm over the wicket bounce. This time nicely driven down to deep wideish long on. They're looking for the second. They will going for the second. This time looks like his batsman is out here. The batsman is out here. Just a single. So good throw coming from the fielder. Excellent collection and excellent throw as well from the deep long on fielder. Charging in sprinting from the deep long on, and look at the throw. Very good throw indeed for Mansoor to complete the formalities of run out. Absolutely, the batsman short of crease. So that's it. Over number 5 completed after completion of over number 5. It's a 33 on the board for the loss of 4 wickets, and they set a target of 34 to win the match for team Mother India. And wait to see how Mother India Buliar will going to get this total. It's a fighting total. Class Chocobetu has got some good bowling department. They got some youngsters in the side, some energetic players in the side,
and it's always going to be the danger when it's going to be a hot-blooded. The youngsters, they will not going to give up this match easily, because the way they battled against YFC Bajal, and they won the match. Very, very tight match. That was a nail-biting finish. They won the match against YFC Bajal, and wait and see how well they will go into give competition for Mother India Boliar. But at the same time, Mother India Boliar, you cannot underestimate their batting department. Leading from the front, Mansoor is the one, is definitely going to be a key player in this particular match to get this 34. And if he talks with the bat, he's definitely going to be more interesting. And Gopi, more interesting to see here is that the time for you to explain there's a view of this cricket ground from the drone camera. One of the most beautiful cricket ground here in Faisal Nagar, which is covered with the beauty of the natures. And more than anything else, the Netravati river, which is passing just beside this cricket ground, it looks to be more beautiful cricket ground, just like we are having a ground in Bantwal, the JD Boys SVS cricket ground. The same scenario out here in this particular beautiful nature, which is beauty of our Karawali, the South Kent district as well. Altogether, Gopi, it's a beautiful view, and thanks to King Sports once again for that covering that nature beauty of South Kent district. And just look at the Netravati river, which is passing just beside this beautiful cricket ground. Altogether, fantastic scenario. एब्सोल्युटली सतीश, एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर किंग स्पोर्ट्स वाले लेते हुए। ड्रोन कैमरा इस वक्त लहराता हुआ और हाई व्यू इस वक्त दिखाई देता हुआ नेत्रावती नदी जो कि इस वक्त गुजर रही है, और कई इमारतें यहाँ पर दिखाई देते हुए, कई घर यहाँ पर दिखाई देते हुए, हरा भरा प्रकृति सहज वातावरण यहाँ पर। और निस्संदेह इस ऊंचाई से जो इस वक्त ड्रोन कैमरा इस वक्त तस्वीर जो ले रहा है, काबिल तारीफ है। और इसके लिए एक बार फिर से, जैसा कि आपने कहा, हम किंग स्पोर्ट्स का यहाँ पर अभिवादन करते हैं। और बेहतरीन मैदान का नज़ारा और हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ मैदान, नंतूर पदों का ये मैदान। और जहां तक का सवाल है, इस मैदान पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला YFC ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति होती हुई एडिशन 2। और यहां पर लक्ष्य जो कि 34 रनों का इस वक्त रखा गया है मदर इंडिया बोलियार के लिए। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, चूंकि पूरी तरह के लगभग जमीन के सहारे गेंद आते हुए, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके, और गेंद लेग से कुछ दूरी पर इस वक्त निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। रिजवान और मंसूर आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी जैद इस वक्त शुरू कर चुके हैं। और पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और इस बीच जैद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद को खेला तो जरूर, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट गेंद पहुंची मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो दो बेहतर गेंदें यहां पर गेंदबाज जैद फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला काफी ऊंचा, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है रिजवान के रूप में। गेंद को उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अगेंस्ट द विंड ही प्लेड, हवा के रुख के खिलाफ इस स्ट्रोक को खेला था, और गेंद अंतिम क्षण में अपना रफ्तार को खोते हुए हवे में इस वक्त लहराती हुई पहुंची सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। रिजवान की पारी समाप्त, 0 पर पहला विकेट खो चुका है मदर इंडिया बोलियार यहां पर। तो रिजवान का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त दिखाई देता हुआ मदर इंडिया बोलियार के ऊपर, और जो नए बल्लेबाज इस वक्त नंबर 38 की जर्सी पहने हुए मैदान पर उतरते हुए इस्माइल, जो कि स्ट्राइकर एंड की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस बीच गेंदबाज का, तो गेंदबाज जैद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट थ्रो, गेंद को पीछा करते हुए और गेंद को इस वक्त रोकने में सफल, और गेंद सीधे एप्पल फ्लाई के बोर्ड पर टकराती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए।
खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा था, देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंद को खेला था, इनटू द गैप एज वेल, मिड विकेट फील्डर की बगल से गेंद इस वक्त निकली थी, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के एप्पल प्लाई बोर्ड पर इस वक्त टकराती हुई और जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी गेंद तक नहीं पहुंच पाए और चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए, बेहतरीन स्ट्रोक इस्माइल के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है मदर इंडिया बॉलियार के लिए। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए जैद और इस्माइल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जैद तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई बैकफुट पर गई गेंद को ढकेला इस वक्त मिड ऑफ फील्डर की बाईं ओर, जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर मंसूर इस वक्त स्ट्राइक आ चुके हैं। और जहां तक सवाल है मदर इंडिया बॉलियार का जो कि 34 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का, तो इस वक्त मंसूर की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मंसूर में वो क्षमता एबिलिटी है कि वो एक लंबी पारी आक्रामक पारी यहां पर खेल सकते हैं। इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद पच्चीस स्क्वायर की दिशा में पैर फील्डर के पैर पर टकराने के बाद दोबारा खुद उन्हीं से फील्ड हो, थोड़ा सा दूर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक गेंद ओवर की समाप्ति, 1 विकेट खो चुका है, 7 रन बन चुके हैं, 7 for the loss of 1 wicket after completion of first over scored by Mother India Boliar, chasing the victory target of 34 in 5 overs set by class 11 Chokka went to them, but a pretty good start except they lost their 1 wicket, they managed to score 7 runs on the board। और जहां तक सवाल है बचे हुए स्कोर का तो 27 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं इस वक्त 24, 27 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 6.75 runs per over। और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए नए गेंदबाज दाऊद। और जहाँ तक क्लास 11 का सवाल है, पिछले मैच में YFC बजाल के साथ उन्होंने कड़ा संघर्ष करते हुए अंतिम ओवर में मैच को जीता था और यहाँ पर वही जोश इस मैच में भी यहाँ पर नजर आता हुआ और मदर इंडिया बॉलियार को 34 रन के लक्ष्य तक पहुंचता है तो एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। दाइनात ओवर द विकेट चिप किया, डीप मिड विकेट पर फील्डर गेंद वहां पर गेंद उनके हाथ में पहुंची, पहले फील्डर ने जाना नहीं कि गेंद उनकी ओर आ रही है, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद उनकी ओर उछल कर आ रही है काफी ऊंचाई से और अपने आप को संभाला और गेंद के नीचे आते हुए गेंद को बाखूबी इस वक्त लपक लिया एक बेहतर जजमेंट के साथ। देखिए किस तरीके से कितना ऊंचा उम्दा उछाला था और डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया फील्डर द्वारा। तो दूसरा विकेट गिर चुका है 7 रनों के योग पर, अब कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आती हुई मदर इंडिया बॉलियार अपने 2 चोटी के बल्लेबाजों को खो चुका है 7 रनों के योग पर। मंसूर इस वक्त एक छोड़ पर मौजूद 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नॉन स्ट्राइक रेट पर इस वक्त उपस्थित है, जबकि नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त 0-1 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए फैसल, और वो इस वक्त सामना करेंगे दाऊद की गेंदों का। तो दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर जारी और देखना यह है कि नए बल्लेबाज जिनका आगमन हो चुका है फैसल इस पावर प्ले ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। और इस बीच दाऊद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, तैनात राउंड द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को खेलना चाहता, ऑफ साइड पर गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद जब तक फील्ड शॉट कवर पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 8 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। सो इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग, बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है। और इस बीच दाऊद की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार मंसूर स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं और दाऊद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, तैनात राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट लेकिन 2 स्क्वायर, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। मंसूर खासकर ऐसे स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है, हमने कई बार देखा है, कई मैचेस में उन्होंने ऐसे स्ट्रोक काफी खेले हैं। यहाँ पर भी उन्होंने रिवर्स शॉट खेला था लेकिन 2 स्क्वायर, और इस श्रृंखला इस मैदान का डायमेंशन ऐसा है कि अगर आप 2 स्क्वायर गेंद को खेलेंगे विकेटों के पीछे तो सिर्फ सिंगल आपको प्राप्त होगा। जहां तक सवाल है यहाँ पर सिर्फ सिंगल
बल्लेबाज मंसूर प्राप्त करते हुए 9 रन बच चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज दाऊद गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे, नॉट क्वाइट मिडिंग इट दिस टाइम। 1 रन मिलेगा गली पर जब तक गेंद फील्ड हो, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो दाऊद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दूसरे छोड़ के बल्लेबाज सामना करते हुए ऑफ से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए दिशाहीन गेंद, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार दाऊद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, प्लम इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है फैजल का। थोड़े से सफल होते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद लाइन पर टिप्पा खाई। मिडल स्टंप को लगभग कंसंट्रेट कर आते हुए, और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। पगबादा प्लम इन फ्रंट लेग बिफोर विकेट के रूप में ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है, विकेट नंबर 3 गिर चुका है फैजल के रूप में 11 रनों के योग पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दे आर स्ट्रगलिंग नाउ इन द ओवर नंबर 2 ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर फॉर मदर इंडिया बोलियार। तो आज का 5वां मैच यहां पर खेला जाता हुआ। इस मैच के बाद शाज उल्लाल का मुकाबला होगा शाहीन बंटवाल के साथ। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए ये दोनों टीमों के सर्व सदस्य स्टेज को संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर, अपना ऑफिशियल पन्ने पर अपना हस्ताक्षर सही न दर्ज करने के लिए। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं और गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेला गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लेकिन गेंद पहुंची मिड ऑन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर्स कंप्लीटेड। सिर्फ 4 रन इस ओवर में दाऊद ने प्रदान किया। एक बेहतर ओवर रहा उनका, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा मदर इंडिया बोलिया स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स दे स्कोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs। 23 more runs now they have to score for victory in remaining 18 balls with a required run rate of exactly 7.67 runs per over। 18 गेंदें बाकी और 23 रन चाहिए विजय के लिए। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला YFC सीजन 2 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है YFC बजाल नंतूर मंगलूर ने लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन इनके सहयोग से, और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट जो किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन माहौल मैदान पर छा चुका है क्रिकेट के लिए। इस बजाल नंतूर के इस विशाल से मैदान में लगभग वृक्षों से घिर चुका है ये मैदान। कई छोटे और बड़े वृक्ष इस मैदान के चारों ओर इस वक्त दिखाई देते हुए, और उन वृक्षों के बीच कई घर यहाँ पर नजर आते हुए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक क्रिकेट के लिए पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका है। और इस बीच आज का 5वां मैच इस श्रृंखला के तीसरे और अंतिम दिन का 5वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। और गेंदबाज इस वक्त तैयार जैद, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 7 रन प्रदान किए थे, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था। अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद नेक्स्ट पर आते हुए मंसूर के लिए। विकेट कीपर ने तेज तरीके की विकेट कीपिंग जरूर की, लेकिन इस बीच बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी। जमीन के सहारे गेंद को इस वक्त जैद ने फेंकी थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, गेंद लगभग जमीन के सहारे पहुंची, लेकिन सबसे कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। और जहां तक सवाल है यहां पर रनों का तो रस नहीं मिलेंगे, तो एक जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो जैद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मंसूर इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। जैद की गेंद को 17 गेंदें बाकी 23 रन चाहिए। अगली गेंद मंसूर के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेला लेकिन कवर पॉइंट पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। मंसूर दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। और मंसूर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं इस वक्त। वो जानते हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक उनको मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर दूसरा रन
के लिए तेजी के साथ वो दौड़ पड़े और सफलतम दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलर। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी बिल्कुल जमीन के सहारे, स्लोवर डिलीवरी, जस्ट चेंज ऑफ पेस फ्रॉम द बॉलर और मंसूर इस धीमेपन पर चकमा खा गए और आखिरकार गेंद को पुल करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला, तो एक बार फिर से गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है और इस बीच जैद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, मंसूर के लिए स्विंग किया इस वक्त ऑन साइड पर, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट ही गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल 19 more runs now they have to score for victory। 19 रन और चाहिए विजय के लिए और फिर से एक बार जैद की गेंद, ये गेंद टिप किया ऑफ द टोज, गेंद को खूबसूरती के साथ मिड विकेट की दिशा में 1 रन मिलेगा तेजी के साथ फील्डर लब के गेंद पर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बंधे हुए और करारे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश इस वक्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन सफलता अब तक बल्लेबाजों के पक्ष पे नहीं आई है। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा मंसूर ने, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर। इस बार भी कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी बिल्कुल जमीन के सहारे और मंसूर गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहते थे, चूके पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। देखिए किस बेहतर लेग लाइन के साथ गेंदबाज ने इस गेंद को फेंका था और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 overs have been bowled, 18 more runs, now they have to score for victory in remaining 2 overs and the required run rate is now gone up exactly 9 runs per over। तो अंतिम 2 ओवर में बेहतर कमबैक कर चुके इस वक्त गेंदबाज क्लास 11 चौके बैठे के। पहले ओवर में 7 रन जैद ने प्रदान किए, तो उसके बाद दूसरे ओवर में दाऊद ने प्रदान किए 4 रन और उसके बाद जैद फिर से गेंदबाजी पर उतरे और सिर्फ 5 रन उन्होंने अपने दूसरे ओवर में प्रदान किए। तो कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 18 रन और चाहिए विजय के लिए, बचे हुए 12 गेंदे यानी 2 ओवर में। 18 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 बॉल्स, द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप एक्जैक्टली 9 रन पर ओवर। और स्ट्राइक इस वक्त मुस्तफा के पास, गेंदबाजी शुरू करते हुए राजिक, 12 गेंदों पर 18 रन चाहिए और इस बीच राजिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद, यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला लेकिन निशाना चूक चुका है। यहाँ पर निशाना स्टंप्सों पर टकरा था तो निस्संदेह यहाँ पर विकेट गिर सकता था मुस्तफा का, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। 17 रन बन चुके हैं, 17 रन और बनाने हैं और गेंदे बाकी है सिर्फ 11 और मंसूर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। जहां तक मंसूर का सवाल है, अब तक ठीक तरह से वो गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन गेंद जिस तरीके की बल्लेबाजी वो आमतौर पर अपनाते हैं यहाँ पर वो बल्लेबाजी अब तक वो खेल नहीं पाए हैं। और जहां तक सवाल है, इस वक्त गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, मंसूर ने पूर्वानुमान लगाकर छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाइड नहीं थी, सही गेंद थी, गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार था ना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद मंसूर के लिए परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद को स्वीप किया, नॉट क्वाइट मिडली गेंद, पेश का चतुर परिवर्तन इस गेंद पर गेंदबाज ने किया था, धीमी गेंद फेंकी थी और आखिरकार एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर। 16 और रन चाहिए, गेंदे बाकी है 9। 16 runs more now they have to score for victory in remaining 90 ओवर्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडली गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। सिले मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 19 for the loss of 3 wickets now, 8 balls to go in the innings, 15 more runs now they have to score for victory।
15 रन चाहिए 8 गेंदों पर। हर गेंद के साथ इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। मंसूर स्ट्राइक पर आ चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाज की गेंद, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, गेंद टॉप एज पर, सीलिमिड ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कैच छूट चुका है। ये कैच यहां पर छूट चुका है। आसान सा मौका यहां पर गंवाते हुए सीलिमिड ऑफ के फील्डर, और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में सफल। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंद के नीचे आ गए थे लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और कैच उनके हाथों से छूटता हुआ, और बल्लेबाज मंसूर यहां पर बचते हुए। और खासकर मंसूर जैसे बल्लेबाज को जीवदान देना काफी महंगा उनके लिए साबित पड़ सकता है। और यहां पर मंसूर न सिर्फ बचे बल्कि एक रन उनके और टीम के खाते में भी जुड़ चुका है। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 20 for the loss of 3 wicket, 14 runs now they have to score for victory in remaining 7 balls। 7 गेंदे 14 रन। मुस्ताफा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। राजिक इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लेकिन कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और इस बीच सही गेंद को जीता, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए। अंतिम ओवर में 14 रन Mother India bowler have to score for victory in remaining last over, that means in remaining 60 overs, and इस वक्त कुछ हद तक कठिन सा लक्ष्य जरूर मदर इंडिया बॉलियर के सामने, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, कम से कम एक चौका या छक्का इस वक्त मदर बॉलियर के भटकी हुई गाड़ी को सही पटरी पर ला सकता है। और इस वक्त स्ट्राइक है मंसूर, और मंसूर आमतौर पर काफ़ी विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी आक्रामक स्ट्रोक को खेलते हैं, और यहाँ पर उनकी पारी के अंतिम ओवर में एक आक्रामक बल्लेबाजी की ज़रूरत है उनके द्वारा उनके टीम को। और देखना यह कि इस अंतिम ओवर में वो अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। 14 to get from 60 overs। अशफाक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। मंसूर सामना करने के लिए तैयार, और 14 रन चाहिए 6 गेंदों में, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अशफाक दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। मंसूर के लिए यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मत स्ट्रेट लाइन। मंसूर चूके स्ट्रोक खेलने के प्रयास में स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। 14 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, और अब लक्ष्य और कठिन होता हुआ। दाहिने हाथ राउंड द विकेट मंसूर के लिए, ऑन साइड पर स्विंग किया, गेंद को मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। मंसूर का विकेट गिर चुका है। गेंद को स्विंग किया था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग, और इसकी वजह से ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट। देखिए यहां पर किस तरीके से मंसूर ने स्ट्रोक्स को उछाला था, जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद तक पहुंचे थे, गेंद को स्कूप किया था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करने में सफल, प्लेसमेंट भी सही नहीं, और इसी के साथ मंसूर का विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए क्लास 11 चौका बिट्टू के गेंदबाज, फलस्वरूप उनकी टीम, ऐसा कहना पड़ेगा उनकी टीम का तख्ता यहां पर भारी लगता हुआ। 4 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौका या छक्का ही यहां पर मदर इंडिया बॉलियर का भविष्य बदल सकता है। और इस बीच यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके एक और डॉट गेंद। अब 3 गेंदे, 14 रन चाहिए, 14 runs to get from 3 balls, almost a last chance in front of the batsmen of Mother India bowler, and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of class 11 चौका बिट्टू। अगली गेंद, यह गेंद चूके, और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा, और इस वक्त निशाना लग चुका है। तो अब ऐसा कहना पड़ेगा मदर इंडिया बॉलियर के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका है। अगर गेंदबाज इस बचे हुए 2 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो 14 रन बनाने हैं, गेंदें बाकी है सिर्फ 2। अगर 2 गेंद पर 2 छक्का भी लगाते हैं तो भी मैच को टाई करने में असफल रहेंगे। तो यहां पर देखना है कि इन 2 गेंदों में गेंदबाज सतर्क गेंदबाजी करते हैं या नहीं। तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। 14 रन टू गेट फ्रॉम 2 बॉल्स, और एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद चूके हैं, थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सो लास्ट बॉल रिमाइनिंग एंड 14 रन नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री।
तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मदर इंडिया बुलियार के गेंदबाज, माफ कीजिए, क्लास 11 चोकोबेटू के गेंदबाज अपनी टीम को विजय के अति निकट लाकर खड़ा कर चुके हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा, सिर्फ एक पड़ाव उन्हें पार करना है, एक गेंद उन्हें डालनी है अपने विजय दर्ज करने के लिए, और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। तो इस वक्त अंतिम मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार अशफाक, नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। एंड द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। अशफाक गेंदबाजी करते हुए दाईं हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया, सीधे नॉट स्ट्राइकर स्टंप्स पर गेंद टकराई, और इसी के साथ क्लास 11 चोक्काबेट्टू registered a 13 runs victory, comprehensive victory in fact, against Mother India bowler, and with that 13 runs comprehensive victory, they are through to the next round of this competition. तो जहां तक सवाल है इस मैच के मैन ऑफ द मैच का, तो मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच होकर क्लास 11 चोक्काबेट्टू के दाऊद को चुना गया, जिन्होंने बल्लेबाजी में 10 रन बनाए और गेंदबाजी में काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में 3 रन प्रदान करते हुए, सिर्फ 3 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटों को उन्होंने प्राप्त किया, और इस ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, सव्यसाची निर्वहन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कृत किया गया है। और मैं निवेदन करता हूं, मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं, दाऊद कृपया स्टेज पर आए और अपने मैन ऑफ द मैच इनाम का स्वीकार करे संगठकों से। तो एक बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है, और अब अगला मैच शाइन बंटवाल विल टेक्स ओवर शाज उल्लाल। वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। I request the captain of Shine Bantwal, ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತನ್ನ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನೇ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ.
Welcome back for the free quarter final and the Shine 112 versus Shark Bajal and the new series that captain after winning the toss of shall be correction Shah's friends Ulal won the toss and looks like they elected to field first. Shah's friends Ulal versus Shine 112 and new series that after winning the toss Shah's friends Ulal they elected to field first. I request the team Saz friends Ulal please enter the ground. Umpires are waiting for you. And I request the opening batters of Shine Bantwal please get ready. I request the Shine Bantwal captain please send your extra player towards the commentary box. Shine Bantwal ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು.
So welcome back once again. And after winning the toss, Saz friends elected to ball pass so that the bowler Iqbal will go into Izaz little correction will go into starts the proceedings and there's a little bit changes in the flying 11 of Saz friends. Fawaz is entering into the flying 11, strengthening the keeping and batting department of Saz friends. And wait and see how Izaz will going to get the start here for Saz friends. A 5 hours game, 2 hours going to be power play, and one bowler can bowl 2 overs, and 5 bowlers to be used as per the rules and regulation of this prestigious YFC Trophy 2023 is concerned, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor in association with the Little Kingdom Phones Bahrain. And we are into the big match, and a very good match between these two very good teams. First ball is us, bowling away from us, and time is exactly 4 past 11. And here is the first ball, round the wicket. This time a single-handed stroke down to short fine leg region, so off the mark with the single straight away. Salam got his first run, and he got his first run for his team as well. So first run, one without loss of any wicket. And that brings the another opening batter Asif into strike. For Asif there is a short fine leg, one at square leg where the square leg was standing left of square leg umpire Arif, right of square leg umpire. One at short mid wicket, mid on is there. One at deep mid wicket, deep long off is there. Short extra cover, short cover point, backward point. And that's a field set here for the right-hander batter Asif. Right arm round the wicket, balls beautifully bowled, perfect line to ball. When you are angling round the wicket, this is a perfect line to ball outside the line of off stump, and wicket keeper behind the stump. Fawaz is not making any mistake at all. He collects the ball back to bowler. So along with Zubair, today we are having Fawaz also representing for his home team, and for the Saz Ulal. Right arm over the wicket, bowls Izaz. Going to be a first extra of this innings. The big wide far away outside the line of leg stump is going to be a wide. With that extra score numbers on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Field umpire Iqbal, and at square leg umpire Arif Jokote, and in the third umpire it's one more experience Nasir Bajal. And as usual in our commentary box, myself Sadish Salian, the day number 3 Mr. Gopi Hinindi, and we have a scorer Mr. Faisal, and at the same time we have some official scorer of King Sports as well, doing a fantastic job. Next ball, it's right on the money, right on the target. And the batsman tried to hit the ball, but not really getting that one from the middle of the bat. And bowler on his follow through collects the ball and back to his body mark. Good comeback after conceding the wide in the previous delivery. Then he bowled a very tidy line to the batter, and Asif will go into face next delivery. It's very important to over for batting team, the power play. They need to get some runs in that power play. This time, what you're talking about, need to get for the power play. Oh, total misjudgment. Absolutely total misjudgment. When the fielder is just running behind, but he's not watching the ball, and the ball is almost landed in front of the fielder, the short mid of fielder. Quickly realizing that ball is not too far away from him, then he was saying that I'm not really seeing the ball, and that's why that the ball is landed safely, and the lucky escape here for the batter. And meantime, batsman completed a couple of runs. It's a 4 on the board. Here is the next one, right arm over the wicket, beautifully bowled, perfect one in the legation. Fawaz is appealing and is gone. So first wicket is back in the pavilion. Just I want to see it in the replay what really happened. It's a bowled out, and it's clean him up. Beauty of the delivery there from Izaz. It's a very good one indeed there from Izaz. He's got a wicket here, and a fantastic piece of bowling there from Izaz. He got the first wicket for Shine for Saz Ulal. So Bantwal need to get at least 25-30 runs is badly required in a 5 overs, because it's not so easy pitch to bat on. The bowlers are dominating so far in this particular tournament, and that shows that the number of boundaries and sixes which is scored in this particular tournament, the less number,
And whenever there is a less number of boundaries and sixes, it shows that it's a bowler's dominated game. It's not the batter's dominated game. And even the looks like the ball is pretty hard in the nature, but the ball is not that much of easy to hit the big boundaries and sixes. And some different technique which is required. The new batsman in is no fall. Nicely done between the two fielders. Down to deep backward square leg region. Fielder chasing the ball, but ball just winning the race against the fieldsman. Just I mentioned about it's not so easy for the batters to bat on, but in this power play there's opportunity. When there is a power play, there's opportunity because only two fielders in the outside the circle, and square leg fielder of course is tried his level best, but see that is just the last moment is given up. That ball just winning the race against the fieldsman. Running down to deep square leg boundary for 4 runs. A much required boundary came from the bat of the new batter Nanthoor, and with that boundary they got runs what they really wanted in the power play over 8 without 8 for the loss of 1 wicket. And equal battle is on, and each and every boundary and sixes is going to be a turning point of this match. And it's not so easy when you are try to chase 30 plus runs in this particular ground. So Zubair is brought into attack straight away after that expensive over 8 runs. It's always going to be expensive as far as the condition of this cricket ground and the pitch is concerned. 8 runs is definitely going to be a good start for Bantwal. Even they lost 1 wicket in that first over, but Shine Bantwal and little bit shining in the first over itself. They got 8 runs. Salam will going to take the strike. Zubair, and the previous match is bowled well, and the balls this time nicely plays it down the square leg, but unfortunately just a single for that stroke there from Salam, and with the single scope Namuzan to 9 on the board. This time Zubair bowled outside the 9 of leg stump, so that batsman quite easily dispatches that one into declared area, and 1 more run is added. Total 7 on the correction 9 on the board. Beautifully bowled. This time appeal for leg before wicket, but ball just missing that off stump. Impact of the line is outside the line of off stump. That's why it's a half-hearted shout there from the bowler, and there is no chance at all for any run. Again going to be a wide. Again the ball going to miss the leg stump for a long way, so that little margin for error, so that Arif has got no hesitation in his mind to signal the wide. Double figure straight away for Bantwal. 10 for the loss of 1 wicket. It nicely transferred square leg region. Chance of run out there in the striker's end, but wide throw coming from the fielder. And Nasir there at square leg region tried to hit the stumps, but misses the stumps. And the batsman got opportunity to complete the single. Good running with the wicket. Good understanding. It's very important when you are taking a quick singles. 11 for the loss of 1 wicket. Zubair. Right above the wicket, beautifully balled, perfect one. That was not too far away from the off stump. Even Pawaz is a little bit surprised that ball is snipped back into the batter, and just in a little bit ball is missing the off stump. Beautifully balled, perfect one there from Zubair. Slower one, much better line to ball to the right hand batsman. This time is a flighted one delivery, and getting some extra movement of the delivery, which is coming into the batter, and 1 more dotted delivery. Zubair balls again, similar kind, identical mirror display of previous delivery. Fantastic bowling performance there from Zubair, testing the temperament of the batsman in that particular over by bowling some dotted deliveries. And Nanthoor, after hitting a boundary, over completed. After completion of over number 2, it's 11 for the loss of 1 wicket in the over number 2. Is completed. 5.5 runs per over, 100 progressing here, and wait and see how many runs they will go into score in the remaining 3 overs. Looks like 1 more experienced campaigner is brought into attack. Taslim, 1 more very popular name as far as the cricket is concerned in South Kenda district, and he will go into bowl that the 3rd over of their innings of
team Shine Bantwal. Saz friends captain won the toss, selected to field first. I think Captain Taslim. Looks like Taslim will go into ball right arm over the wicket with a short run up. Taslim keeping two fielders outside the circle in the offside region, three fielders in the onside region. Long on mid wicket and square leg, deep cover point and deep long off. Here is the first ball, right arm over the wicket, going for the sweep shot, but ball just missing the bat. Wicket keeper behind the stump did the rest and back to bowler. So need not to play that dotted deliveries. Of course, Shine Bantwal, after getting a good start in the first over, they got 8 runs, but second over, which is bowled by Zubair, is an outstanding over. Just 3 runs came from that over. Now it's a Taslim starts with a dotted delivery. Right arm over the wicket balls. This time, oh, beautifully ball. Perfect one. Again, the batsman completely missed out the delivery after Naufal playing some dotted deliveries. Now Salam already played 2 dotted deliveries in this over. As Taslim just enjoying his bowling performance. The line and length is so good. Not giving any opportunity for the batsman to get any kind of runs. Third time in this over. He's bowling right arm over the wicket to the right-hander batter. This time nicely plays it down. Oh, good piece of fielding there by Izaz, but not quite enough. Not quite enough to stop the single. It's off stop there by the fielder at the short mid-off. Izaz, but just a single for the batsman. But probably stopping some runs for his team. At least a couple of runs if Izaz fails to collect the ball. So with that single score moves on to 12 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Taslim get ready to bowling to Naufal. Naufal is batting on 4 out of 4 deliveries. So one more wicket is back in the pavilion of Shine Bantwal, and looks like it's a one more beautiful delivery there from Taslim. And Taslim starts well with the dotted delivery, and so that the batsman tried to do something special. By doing that, the one more wicket is back in the pavilion. Taslim, outstanding bowling performance continues here, and Afrid will go into the batter. After this time, beautiful ball. Of course, sharp incoming delivery. Last moment, Afrid has got a bat onto that, and otherwise, is going to be a ball will going to hit the stumps. So 13 for the loss of 1 wicket. Taslim is enjoying his bowling performance so far, and looking pretty good. And just 2 runs conceded so far in this last 5 deliveries he bowled. 13 for the loss of 1 wicket. Final time in this over, Taslim bowls to Salam. Salam tries, chip that one quite safely down to deep wideish long off region. Again, the fielder from the wideish long off is very quick, and batsman how to settle for the single. Good over there from Taslim. Just 3 came from that over. After completion of over number 3, searching for the right track, Shine Bantwal managed to score 14 for the loss of 1 wicket, and wait and see how many runs they will going to score in the remaining 2 overs of their innings. For the latecomers, you are watching this match number 5 of the day number last of this cricket tournament, and after Shine Bantwal defeating BFC Bengre and SAS friends Ulal defeated YFC Bajal in their first match, and they are into the free quarter final match. And in the free quarter final match, now these two teams as clashing for the place in the quarter final. Of course, one team which came into the quarter final, it's a Class 11 Chocobeto. Once again, just like what the name they got, class, the classical performance there from the youngsters of Class 11 Chocobeto to defeat Mother India Buliar in the free quarter final match, and they deserve the victory. And they are into the quarter final, and wait and see which team will go into take in the quarter final. Meanwhile, Zubair will go into continue from the commentary box, and away from us,
Right arm over the wicket balls. This time, fantastic delivery. Good change of pace. Good change of line, in fact. Seeing that batsman going for the switch, it is just ball outside the non-black leg stump. And as for the rules and regulation of the cricket is concerned, the present cricket is concerned, the bowler can bowl outside the leg stump when the batsmen are changing the position. Again, the ball is a very quicker one. The batsman going for the drive, beaten by the pace, and ball went towards a short fine leg division for a easy single. And with the singles cover was under 15 for the loss of 1 wicket. Very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by the bowlers of Saz. Friends Ulal. Again, Zubair balls. This time lofted high up in there. Will it go into a maximum? Yes, it does. Magnificent strike. This is a glorious hit there from the batter. And Zubair is bowled a slower one and short pitch delivery. Enough time for the batter. Hafrid is just waiting for the opportunity. Lofted that one. Afrid loves to play that shot. In the previous match also, he played a similar stroke in that similar region. And just like what the name they got, Afrid. And he's justifying the international cricket, former cricketer of Pakistan, Sahid Afridi. And is a very good striker of the ball. This is a speciality of Zubair. Whenever he is finished, he's got ability of bouncing back, and immediately very next ball is right on the money, but batsman just survive from that delivery against Zubair. Right arm over the wicket balls. Again the beautifully bowled quicker one, beaten by the pace. It's going to be leg by. One more single is added to total, and with that single Skobat Namuzan to 22 for the loss of 1 wicket. Very important runs coming in this over for team Shine Bantwal. And the final time in this over, bowler bowling right arm over the wicket balls. This time nice little one right in the gap. It's going to be one bounce collected by the field, and they're going for the second run as well, and excellent running between the wicket. And a very good display of batting performance by these batsmen in this particular over of Zubair. And it's expensive over is comes in there from Zubair. Shine Bantwal shining in this last over, 4th over. And they got what the run they really wanted in this particular over. It's a 24 for the loss of 1 wicket after completion of over number 4. 9 runs which is coming from that over. 10 runs coming from that over. And that is gone one number. I think it's going to be a very good run, very good over for team Shine Bantwal. Thanks to the hit of Afrid, hitting on a magnificent stroke down to deep long off. And wait and see how well they will going to continue in the last over. So Izaz came into ball. Izaz the senior. The Izaz junior who bowled the first over was expensive. 8 runs he conceded. And Zubair is bowled very well the first over. He is conceded just 3 runs. But second over is expensive. 10 runs came from that over. One in the form of leg by. Altogether he's conceded 12 runs in his 2 overs. And not a bad 12 runs, but 6 is definitely going to be a huge achievement by Afrid of Shine Bantwal, because I already mentioned in this particular tournament we had a little bit sixes, 14 or 15 sixes I think so, not more than that, but all we can see that bowlers are dominating. And here is Izaz bowling the final over. Right arm over the wicket balls. This time after drives that one. It's going to be a over a catch. What a magnificent catch taken there by the fielder at deep long on. Izaz Junior is there in the deep long on. Just looks like is flying. Just like the bird is flying around. And it taken a magnificent catch, isn't it? Once it looks like the batsman hoisting it over. The ball is there, looks like it's going to be a maximum. The timing of the jump is a perfection. And entertainment innings comes in and there from Afrid. He's played a small cameo, but it's a very useful for Shine Bantwal to get some good score. And just once again, look at that drone camera is covering the view of this cricket ground from the high level. And it's going to be the very, very beautiful view of this cricket ground. Not having that much of part behind the stump, behind the wicket, and otherwise it's going to be in a D shape. It looks like it's a capital letter D. And as we are seeing that the view of this cricket ground from drone camera. Meanwhile, here is a scoreboard is stationed at 24. The last over is in progress, and the 1 ball which is completed. The second ball will going to start waiting for
So batsman now going to bat here. Arshad. Arshad will go into face. Wait and see because it is a final over. It's not Arshad, it's Harris is the bowl batter. Will go into face Izaz. Izaz got a wicket, huge wicket of Afrid. This time going for the drive. Off stop there by Zubair. Chance of run out and it's easily done. And Zubair is on says looks like he's going to be a little bit struggling at mid off to stop the runs. But he, after stop the ball, he quickly realizing there's opportunity which is created on the strike non-strike end. And batsman not really getting the timing behind the stroke. Tried to reach that ball and mistimed that one. Then afterwards, Zubair complete the formalities of run out. The one more wicket is back into pavilion. Shine Bantwal need to be very careful in this last over. After getting 24 runs, 24 runs, this over seems to be a much better over so far for team Ulal. This time, lofted, handsome looking drive. Oh, this is a glorious shot from the batter. The second sixer in the innings of Shine Bantwal. The Salam is the man who just came as opener for the side. He's been quiet for a long time, but he's saying that this is not a time to keep quiet. This is a time to talk with the bat, and he's talked with the bat very, very handsomely by hitting the handsome looking drive down to deep backward square leg region for a huge 6. 30 for the loss of 3 wicket. What a tremendous blow there from the batter Salam. Izaz balls again across the line of the net, swinging that one. This time he will not going to get the 6. This time he will not going to get the 6, but he will going to get the fielder behind that ball. And but you need to appreciate the Salam's the brave and gutsy batting. This time I think Izaz did a great job bowling outside the line of off time. Batsman just drags that one from outside the line of off time. Because of that, he didn't got enough timing behind the stroke. And the fielder in the boundary line at deep backward square leg, making no mistake at all. The wicket number 4 which is back into pavilion, but Salam has played a good innings of 14 runs in just 13 deliveries with the help of 1-6, but it's an outstanding performance there from Salam for his team. 30 for the loss of 4 wicket, very good score. You cannot underestimate this total 30, always going to be a winning total in this cricket ground. Here is Izaz, right arm over the wicket balls, new batsman going for the drive on the onside region, but that ball is not coming to the middle of the bat of the batsman Sadiq. He picked up a single there. With that single score, Namuzan to 31 on the board for the loss of 4 wicket. The final delivery of their innings is coming up, and Nazim has got opportunity to face the final delivery. Will it go into a big one here for Shine Bantwal? It not looks like that. It's not looks like it's going to be a big one, but a single run. They're going for the second run. In comes the throw. Fawaz completes the formalities. Is gone. Just a single in the last ball of their innings. So innings which is comes to an end, and they completed their 5 overs quota. After completion of over number 5, Shine Bantwal managed to get 32 runs by losing 5 wickets, and they set a target 6 wickets in fact, and they set a target of 33 to win this match for the team Saz friends Ulal. It's going to be a very good competition between these two teams because Shine Bantwal might be thinking about it's enough score to defend this total, but I think they needed some hard work from the bowling department, because reason behind is that the batting department of Saz friends Ulal, you cannot underestimate. They got one more extra players. They came in to strengthen the batting department. That is Fawaz. They got Izaz. They got Taslim. They got some good players in the side. It's absolutely fantastic batting department, and even Zubair can contribute from the bat as well. And all this factor, I think, is going to be more interesting. It's going to be a good session.
Now it's OT to Gopi. OT means over to Gopi. And Gopi, it's an outstanding performance from Shine Bantwal because they're really not playing with the big names. And they're scoring 33 runs. It's definitely going to be a big achievement. And I think Gopi is a 2 sixes, which is definitely going to be a big factor in this innings of Shine Bantwal. Because of that 12 runs, the 2 sixes, which is scored by one by Afrid and one by Salam, I think it's going to be a bonus run for the team Shine Bantwal. But you cannot underestimate the batting department of Saz. Friends Ulal, they got some good batting department, especially the Pawaz is just entering into the playing 11. He's just missed out the first match, but coming to the playing 11 of Saz Ulal, it's definitely going to be a very good opportunity for him to showcase his talent once again. But it's going to be a 50-50 copy. It's going to be anybody's game because in this condition, in this particular ground, 30 plus runs is always going to be a winning total. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 31 रन, अभी 33 रन जोड़ चुका है। तो पिछले मैच में 31 रन को डिफेंड किया था क्लास 11 चोकोबेट्टू ने और सिर्फ 20 रन उन्होंने प्रदान किए थे मदर इंडिया बोलियार के बल्लेबाजों को। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर शाहीन बंटवाल के गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर गेंदबाजी एक बेहतर गेंदबाजी करते तो दबाव साज फ्रेंड्स उल्लाल के ऊपर आ सकता है। लेकिन जहां तक साज उल्लाल का सवाल है, इस वक्त एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत उनके बल्लेबाज देते, खासकर फवाज का आगमन हो चुका है। फवाज एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और उनके साथ इस वक्त सादिक स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और उसके बाद तस्लीम इजाज जैसे बल्लेबाज मौजूद है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कहना पड़ेगा ये मैच लगभग जैसा कि आपने कहा 50-50% बराबरी पर आकर रुक चुका है। देखते हैं क्या होता है। दाहिने हाथों पर द विकेट, पहली गेंद इस बार टॉप एज, गेंद डीप मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में सफल और पहली गेंद पर सादिक का विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा था और मैं समझता अंतिम क्षण में गेंद उनके टॉप एज पर टकराई और काफी देर तक हवा में उछली थी और आसानी के साथ देखिए यहां पर किस तरीके से इस कैच को डीप मिड विकेट फील्डर ने लपका और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। तो पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में सादिक का विकेट गिर चुका है और पहली गेंद पर शून्य पर पहला विकेट खो चुका है साज फ्रेंड्स उल्लाल। इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। तो रन्स बनाने हैं 33 निर्धारित 5 ओवर में और रिक्वायर्ड रन रेट जो है एग्जैक्टली 6.60 रन पर ओवर और शून्य पर पहला विकेट सादिक का गिर चुका है। अब नए बल्लेबाज के रूप में इजाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एक और बेहतर बल्लेबाज साज उल्लाल की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ इस वक्त साथ निभाने के लिए फवाज का और यहाँ पर देखना यह है कि वो किस तरह इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। और जहां तक साज उल्लाल के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो इस जोड़ी को यहाँ पर टिकना होगा, एक बेहतर साझेदारी निभानी होगी क्योंकि दोनों बल्लेबाजों में अपार अनुभव है और खासकर जहां तक फवाज का सवाल है काफी समय तक वो यंग फ्रेंड्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जहां तक इजाज का सवाल है KFC कोडिकल के प्रमुख बल्लेबाजों में से वो एक जाने जाते थे जब वो KFC का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो इन दोनों में अपार अनुभव मौजूद है। तो देखना यह है कि इस अनुभव का वो किस तरह इस मैच में अनावरण करते हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाजी इस वक्त नौफल यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी और फिर से एक बार गेंदबाज नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जो कि लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है और इस वक्त फील्डर जो कि एक फील्डर डीप मिड विकेट पर मौजूद और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक और वाइड और वाइड के रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। पहले गेंद पर विकेट गिर जाने के बाद सादिक के रूप में इस वक्त कुछ हद तक दबाव नजर आता हुआ साज फ्रेंड्स उल्लाल के ऊपर और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त रुक चुके हैं 2 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज
नौफल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रही है। गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, बट नॉट मोर देन अ सिंगल। और मिड ऑफ पर फील्डर अपने बाईं ओर दौड़ते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे 20 गज के दायरे के बाहर, बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ यहाँ पर बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। फवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो नौफल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस बार खूबसूरती के साथ उछाला लंबा सीमा रेखा के अंदर, बेहतर। ओह इस बार आई थिंक शी इज गॉट अ ब्लो और एक बार दोबारा गेंद को फील्ड कर लिया गया फाइन लंगोन सीमा रेखा के अंदर। तो बेहतरीन फील्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द लंगोन फील्डर। सारे खिलाड़ियों ने उनका अभिवादन इस वक्त किया, सारे दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। देखिए आई वांट टू लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से हुआ था देखिए इस बार। Absolutely outstanding. This is an absolutely fantastic piece of fielding performance. गेंद को रोक लिया गया और दोबारा देखिए गेंद जैसे ही सीमा रेखा को पार कर रहे थे वहां पर भी गेंद को ढकेला गया डाइविंग लगाते हुए दूसरे फील्डर द्वारा, और दोनों फील्डरों ने कमाल की फील्डिंग यहां पर की। और इस कमाल की फील्डिंग की बदौलत इस वक्त बल्लेबाज सिर्फ 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है लंगोन पर किस तरीके से गेंद को रोका गया था और मैग्निफिसेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट फील्डिंग परफॉर्मेंस। और दोबारा देखिए दूसरे फील्डर, दिस इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो 2 रन टीम के लिए बचे और हर रन इस वक्त कीमती होता है और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ चुका है इस वक्त। अगली गेंद चिप किया इस बार मौका लंगोन फील्डर के लिए और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है, इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। और इस वक्त गेंद को उछाला था बल्लेबाज ने और आखिरकार फवाज इस वक्त गेंद को उछाला जरूर लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल और आखिरकार वाइडिस लंगोन सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया गया। तो फवाज का विकेट गिर चुका है और फवाज का विकेट गिर जाने के बाद स्ट्रेट अवे एक बार फिर से दबाव स्टार फ्रेंड्स उल्लाल के ऊपर दिखाई देता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बोथ ओपनर्स आर नाउ ऑलरेडी बैक इनटू द पेविलियन। और मैच का जहां तक सवाल है स्टिल आई मस्ट से इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। तो नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाज नंबर 13 की जर्सी पहने हुए इस वक्त मैदान पर उतरते हुए नासिर और वो इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए और एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है गेंदबाज नौफल का जिसमें 5 रन वो प्रदान करते हुए 2 बहुमूल्य विकेट सादिक और फवाज का प्राप्त कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। और इस वक्त सामना करते हुए नासिर यानी नाची इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच नौशद अपनी ओर के अगली गेंद एक बार फिर से गेंद फेंकने के लिए तैयार। हाई व्यू इस वक्त हम देख रहे हैं निस्संदेह बेहतरीन नजारा और इस बार जोरदार अपील लेकिन यहां पर अंपायर इकबाल पर कोई प्रभाव नहीं, तो बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं। तो इस वक्त गेंद थी लगभग सीधी रफ्तार के साथ, गेंद को ड्राइव करना चाहा चूंकि लगभग बल्ले का बाहरी किनारा टकराने का कुछ आवाज जरूर निकली थी, तो इस वजह से सारे खिलाड़ियों ने अपील की लेकिन यहाँ पर उनकी अपील का कोई प्रभाव नहीं। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, शायद बल्ला बैट जमीन पर टकराया था गेंद को खेलते समय, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और अंपायर ने इसे नकार दिया। तो इस वक्त स्कोर बच चुका है, रुक चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। हाई व्यू हम इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल वृत्ताकार का जो इस वक्त 20 गज का दायरा इस वक्त खींचा गया है मैदान पर। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। नासिर द मैन डिपार्टेड और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े नासिर लेकिन वहां पर इजाजत दौड़े 2 कदम और वहीं पर रुक गए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, लुक एट दिस इन द रिप्ले। शॉर्ट फॉल लेग फील्डर के हाथों से गेंद चुकी, इजाज दौड़े 2 कदम रुक गए, नासिर नॉन स्ट्राइक रन की ओर दौड़ कर आए और आधे पिच पर जाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो वापिस से नहीं लौट सकते हैं जब तक थ्रो पहुंच चुका था विकेट कीपर के हाथों पर। विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 6 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस वक्त इस ओवर में एक गेंद इस ओवर में बाकी और नंबर 5 बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतरते हुए शफीक
नंबर 5 बल्लेबाज, 3 विकेट पहले ओवर में गिर चुके हैं 5 गेंदों में 6 रनों पर। और ऐसा कहना पड़ेगा स्टार फ्रेंड्स उल्लाल की पारी लड़खड़ाती दिखाई देती हुई इस मैदान पर। देखिए साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत। इस बीच नौफल अगली गेंद, यह गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, चूंकि नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। पहले ओवर के समाप्ति 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 33 इन 5 ओवर्स। और निस्संदेह 33 रनों का लक्ष्य, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, कॉम्पिटिटिव टोटल इन हालातों में आमतौर पर इस मैदान पर शाम के वक्त बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गेंद बल्ले पर आसानी के साथ नहीं आती है, और यहाँ पर 33 रनों का लक्ष्य एक चुनौती भरा लक्ष्य जरूर है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। 3 विकेट इस वक्त खो चुका है जरूर साज फ्रेंड्स उल्लाल, लेकिन इस वक्त उन्हें अभी भी मौका है इस मैच में कमबैक करने का, और एक बेहतर साझेदारी उन्हें इस मैच में कमबैक करने में सहकारी बन सकते हैं। और उस साझेदारी की तलाश में इस वक्त क्रीज पर मौजूद इजाज और शफीक इस वक्त बल्लेबाजी के रणतंत्र के बारे में इस वक्त कुछ सोच विचार करते हुए अपने दिमाग में। और यहाँ पर नया ओवर प्रारंभ होता हुआ, और नया ओवर इस वक्त शुरू करते हुए नाजीम, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज के लिए। तो 4 ओवर के खेल बाकी है, और 4 ओवर में अब चाहिए 27 मोर रन्स। नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज विद अ रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 6.75 रन्स पर ओवर। दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार इजाज के लिए। यह गेंद टॉप एज, मौका लेकिन नहीं, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद नेट से बाहर हो चुकी है। 2 स्क्वायर 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 7 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इन फैक्ट शाम का वक्त लगभग 5 यहां पर बचते हुए धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व यहां पर मौजूद, और गर्मी का एहसास इस वक्त अभी भी करते हुए खिलाड़ी और दर्शक। ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई, ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा घुटनों के बल बैठते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद सीधे बल्लेबाज को वंचित करते हुए, विकेट कीपर को वंचित करते हुए शॉर्ट टर्न फील्डर के हाथों में पहुंची, और रन से बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला। तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नाजीम, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, यह गेंद टॉप एज, इस बार मौका मिड ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बॉल्स, गॉट इट टॉप एज, एंड फाइनली मिड ऑफ फील्डर मेड नो मिस्टेक। इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 गिर चुका, और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा साज फ्रेंड्स उल्लाल के लिए परेशानियां और बढ़ चुकी है। 7 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, and this is the second over in progress. So disaster continuing here for the batsmen of Saz Friends Ulal. और जहां तक सवाल है बचे हुए रन का, तो 33 से 7 अगर घटा दिया जाए तो 26 और रन बनाने हैं। 26 रन मोर। नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 21 डिलीवरीज। तो लक्ष्य कुछ ज्यादा लंबा नहीं है इस वक्त, इक्वेशन कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है विकेटों का। 4 अपने चोटी के बल्लेबाजों को इस वक्त खो चुका है, और कमबैक करना है तो निस्संदेह, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक पार्टनरशिप पर साझेदारी इस वक्त निभानी होगी साज उल्लाल के बल्लेबाजों को। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, जुबैर, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, एक और बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर यंग फ्रेंड्स उल्लाल का प्रतिनिधित्व वो किया करते थे। इस बार गेंद को अच्छी गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा ऑन साइड पर, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, और आखिरकार गेंद गई ऑफ साइड पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और फिर से एक बार नाजीम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, मिसफील्ड, इस बीच गेंद को बैकअप किया जा रहा है डीप मिड विकेट पर, सुबह दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। निस्संदेह एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023 टू 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत आज का
छठा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ और विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है शाहीन बंटवाल और सास उल्लाल के बीच में। अगली गेंद के लिए तैयार तैनात राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को मिडल पर मिसफील्ड और इस बीच जब तक गेंद को बैकअप किया जाता आफ्टर फर्स्ट बाउंस बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन संख्या बढ़कर 2 अंकों पर पहुंच चुका है। 10 रन 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुके हैं। 3 overs completed. Still the batsmen of Saz Ulal searching for the right track. They managed to score only 10 runs on the board for losing 4 wickets and 23 more runs. Now they have to score for victory in remaining 2 overs. And the required run rate is now gone up to exactly 11.5 runs per over. In fact, 2 overs completed. 2 overs completed in fact and 10 runs on the board. 23 more required in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries. And run rate is now gone up to exactly 7.67 runs per over at this situation. Required run rate. So still the match is in balance. और यहाँ पर रन्स चाहिए बल्लेबाजों को साज उल्लाल के, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त जरूरत इस वक्त शाहीन बंटवाल के गेंदबाजों को। तो गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए गेंदबाज नौफल जो कि अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था उन्होंने, दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए और 2 ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन इस वक्त वो जो डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। शाम के 5 बजते हुए और यहाँ पर दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है और भरनी भी चाहिए इस क्योंकि प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई YFC ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत पहली गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीमा रेखा के अंदर रोकी गई है बेहतरीन तरीके से। हालांकि फ्लेक्स से टकरा कर वहां पर कुछ हद तक अपना संतुलन खो बैठे थे फील्डर, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को वो रुकने में सफल। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ उछाला था और इस बार चौका यहाँ पर घोषित किया गया। शायद गेंद को रोके थे, देखिए कि यहाँ पर जी नहीं, वहां पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है और 4 रन इस वक्त घोषित और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है जुबैर के बल्ले से और बेहतर गैप उन्होंने चुना था लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच और लंबा दौड़ लगाने के बावजूद इस गेंद तक पहुंच नहीं पाए फील्डर और गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद, पैरों पर टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा के पार निकल गई। अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद, 16 गेंदें बाकी है और रन चाहिए 19 runs more. Now they have to score for victory in remaining 16 deliveries. The equal battle is now on. जुबैर एक बार फिर से अपने गेंदबाजी बल्लेबाजी पर तैयार और गेंदबाज नौफल अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ सलाह प्राप्त करने के बाद इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और अपनी अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दर्शक इस वक्त मैच का मुआयना काफी दिलचस्पी के साथ करते हुए मैच एक रोचक मोड़ पर आकर इस वक्त रुक चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष इस वक्त जारी है। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में जुबैर ने और ही जस्ट चेक द शॉट द लास्ट मोमेंट जस्ट प्ले दैट वन, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और गेंद पहुंची इसी लिमिट ऑन पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद, 15 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए, 19 टू गेट फ्रॉम 15 डिलीवरीज। गेंदबाज इस वक्त तैयार, तैनात तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार जुबैर के लिए चिप किया, इस बार सीधे पहुंची गेंद एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में। तो गेंद को इस वक्त उछाला था, 2 गेंद पहले जिस तरीके का स्ट्रोक जुबैर ने खेला था उसी तरीके से गेंद को इस वक्त गैप पर उछालना चाहा, लेकिन इस बार गेंद को उछाला कुछ ज्यादा ऊंचा और प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ी सी दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को उन्होंने बाखूबी लपक लिया इस वक्त सीमा रेखा के अंदर। तो यहां पर विकेट गिर चुका है जुबैर का, 5वां विकेट और निर्णायक मोड़ पर एक सफलता इस वक्त प्राप्त कर चुका है शाहीन बंटवाल और निर्णायक मोड़ पर एक विकेट यहां पर खो चुका है साज उल्लाल। और अब जहां तक इक्वेशन का सवाल है तो 19 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 14। तो अब नए बल्लेबाज नवाज इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए और देखना यह कि वो इस वक्त गेंदबाज नौफल की गेंदों का किस तरह
से सामना करते हैं। और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज नौफल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज नवाज के लिए ये गेंद इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन, एक रन मिलेगा। एक ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और एक रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉट एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, शॉट मिड विकेट और शॉट फाइल लेग। और इस बीच गेंदबाज नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था ना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर टकराए लेकिन गेंद लेग से बाहर की ओर निकलती हुई नेट को पार कर चुकी है गेंद। और इस बीच लेग बाय के रूप में 1 रन यहां पर घोषित अंपायर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। सो 3 overs completed, 16 runs on the board, 5 wickets lost and 17 more runs now they have to score for victory in remaining 12 balls. That means remaining 2 overs with a required run rate of exactly 8.5 runs per over. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इस वक्त देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हैं। तो 16 for the loss of 5 wickets, 17 runs required in remaining 2 overs. तो इस वक्त बातचीत जारी, अगला ओवर किसको दिया जाए इसके बारे में। और इस वक्त थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है गेंदबाज जो कि इस वक्त नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए। तो आसिफ इस वक्त गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए और हल्की सी धूप अभी भी मैदान पर छा चुकी है। सूरज मैदान के दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और यहाँ पर इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर कम होती नजर आती हुई। शाम का वक्त लगभग 5 बजते हुए और यहाँ पर संघर्ष जारी है इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए साज उल्लाल और शहीन बंटवाल के बीच में। इस बीच आसिफ गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद निकलती हुई और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 5 wickets, 16 required, 12 balls to go in the innings. Still the match is now equally balanced. A battle is now going up between the two teams players. दाईना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकलती हुई इस वक्त कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकली थी। सही गेंद घोषित तो थोड़ा सा मिस जजमेंट इस वक्त बल्लेबाज द्वारा और आखिरकार सही गेंद घोषित करते हुए अंपायर एक गेंद डॉट हो चुकी है। 11 गेंदें बाकी, रन से चाहिए 16। 16 runs to get from 11 balls और फिर से एक बार गेंदबाज आसिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। नवाज की पारी यहां पर समाप्त। गेंद इस वक्त फेंकी गई थी क्लोज टू द स्टंप्स और अंतिम क्षण में देखिए गेंद किस तरीके से यहां पर हुआ था। गेंद उनके बैक लेग पर टकराई और अंपायर इकबाल को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई आउट घोषित करने में। एक विकेट गिर चुका है, 10 गेंदें अब बाकी है और रन से चाहिए इस वक्त 16। 16 runs to get from 10 balls और मैच अभी भी एक दिलचस्प मोड़ पर गुजरता हुआ। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 11 की जर्सी पहने हुए और वो इस वक्त स्ट्राइक रेट की ओर कदम बढ़ाते हुए आरिफ इस वक्त नंबर 11 जर्सी पहने हुए नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त साज उल्लाल की ओर से क्रीज पर मौजूद। 16 रिक्वायर्ड इन 10 balls नाउ। गेंदबाज इस बीच तैयार आसिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। तो वाइड सही गेंद और वहां पर
विकेट गिरा और फिर से वाइड, यानी अब रन से चाहिए 15 और गेंदे बाकी है इस वक्त 10। ये गेंद इस बार उछाला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, फील्डर थोड़े से पीछे मौजूद, एक रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। गेंद के साथ साथ फील्डर दौड़ कर आए नॉन स्ट्राइकर रेड पर और आखिरकार एक रन बल्लेबाज को सिर्फ मिला इस गेंद पर और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 19 for the loss of 6 wickets in the over number 4 in progress। कुल मिलाकर इस ओवर में अब गेंदे बाकी है 3, कुल मिलाकर उनकी पारी में गेंदे बाकी है 9 और रन्स बनाने हैं 14। 14 रन्स टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स और गेंदबाज आसिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला, लेकिन 2 स्क्वायर गेंद वृक्ष के डाल पर इस वक्त टकरा कर वापिस आ चुकी है और इस बीच एक रन घोषित अंपायर द्वारा, 1 डिक्लेयर्ड और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। विकेट कीपर इस वक्त दौड़ कर आए गेंदबाज के पास, उन्हें कुछ समझाया कि किस लेंथ और लाइन के साथ इन हालातों में उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए और यहाँ पर कुछ सलाह मशवरा करने के बाद एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए कुल मिलाकर 8 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी और 13 रन चाहिए। ये गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में कॉटन बॉल का मौका, लेकिन यह कैच छूट चुका है। That was a sharp chance at the last moment on follow through, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो लपकने में असफल और काफी तेजी के साथ गेंद उनकी ओर आई थी अंतिम क्षण में। देखिए यहाँ पर फॉलो थ्रू में कैच को छूटा, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस कैच पर कोई रन यहाँ पर नहीं बना। अंपायर इकबाल ने गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद उनसे पहुंचने से पहले वहां पर रोक ली गई। गेंदबाज द्वारा गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट पर खेल दिया, एक रन मिलेगा, क्लीन कलेक्शन और एक रन के साथ बल्लेबाज दौड़कर पूरे कर चुके हैं। एक रन के साथ संतुष्ट और 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। सो ओवर नंबर 4 has been completed, 21 at the board, 12 runs to get एंड लास्ट ओवर रिमेनिंग। 12 रन बनाने हैं अंतिम ओवर में। कुछ हद तक कठिन सा लक्ष्य शाज फ्रेंड्स उल्लाल के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं और मैं समझता हूँ आक्रामक मिश्रित रक्षणात्मक बल्लेबाजी इस अंतिम ओवर में उनको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। खासकर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, सेंसिबल बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त शाज फ्रेंड्स उल्लाल को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उन्हें इस वक्त मेहनत मुशक्कत जरूर करनी पड़ेगी इन बचे हुए 6 गेंदों में 12 रन बनाने के लिए। जहां तक शाहीन बंटवाल का सवाल है, इस वक्त उनके जो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने इस अंतिम ओवर में और बल्लेबाजों को खामोश उन्हें रखना है अपने बेहतर गेंदबाजी के जरिए। तो देखते हैं यहां पर अंतिम ओवर में क्या होता है। 6 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज इस वक्त सादिक के हाथों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और ओवर की पहली गेंद सादिक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 12 रिक्वायर्ड ऑफ 6 डिलीवरीज। काफी दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद, ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में और ओवर की पहली गेंद लेकर सादिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। यह गेंद पहली गेंद उछाला, गेंद को टॉप एज, लेकिन गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंची है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। स्टेप आउट करते हुए गेंद को उछाला था, लेकिन जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था इस स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। देखिए कितना ऊंचा गेंद को उछाला था और आखिरकार ये गेंद जो कि लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो आउट होने वाले बल्लेबाज शफीक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए अब इस विकेट के पतन के साथ ऐसा करना पड़ेगा। विजय की उम्मीदें कुछ हद तक और कम हो चुकी है इस वक्त साज फ्रेंड्स उल्लाल के लिए, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार और देखते हैं यहां पर एक करारा स्ट्रोक अगर लगता है इस अंतिम ओवर में तो यहां पर साज उल्लाल इस मैच में वापस आ सकता है। खासकर चौका या छक्का लगता है
इन हालातों में तो साज 11 इस मैच में कमबैक कर सकता है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे और आखिरकार शायद उनके आंखों में कुछ घुस गया था, तो इस वजह से वो इस वक्त बल्लेबाजी के लाइन से अपने आप को वो उन्होंने अलग किया और आखिरकार इस वक्त क्रीज पर रुके हुए, हालांकि गेंद सीधे स्टंप्सों पर फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने, लेकिन आखिरकार डेड गेंद घोषित किया गया। तो 5 गेंदें इस वक्त बाकी हैं और रन से चाहिए इस वक्त 12 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 5 बॉल्स। निस्संदेह एक बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर, विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। तख्ता इस अंतिम ओवर में शाइन बंटवाल का भारी लगता हुआ, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है इस वक्त फ्रेंड्स उलाल के बल्लेबाजों को इस अंतिम ओवर में। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज सादिक गेंदबाजी करते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सादिक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद कौन साइड पर उछाला, खूबसूरती के साथ मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो यहां पर तख्ता पलटता हुआ, अब स्ट्रेट अवे वी कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 6 रिक्वायर्ड एंड द बॉल इज नाउ रिमाइनिंग 4। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछाला डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज ने, और बल्लेबाज थे निजाम, और इस छक्के की बदौलत दे आर नाउ बैक इन द मैच। 6 रिक्वायर्ड ऑफ 4 बॉल्स, और अब स्ट्रेट अवे सीधा दबाव गेंदबाज के ऊपर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर। अब देखना यह है कि अपने अगली गेंद पर वो किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर अपनाते हैं। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, सादिक निजाम पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद काफी आत्मविश्वास भरे यहां पर नजर आते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी, बिल्कुल जमीन के सहारे। पहले सोचा कि गेंद को आक्रामक स्ट्रोक खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद कुछ हद तक धीमे गति से उनकी ओर आ रही है, ऑप्शन से बाहर की ओर निकल रही है, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया, रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया, गैप ढूंढना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और सीधे पहुंची बेहतर विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंदबाजी, 3 गेंदें बाकी, रन चाहिए 6, 6 रिक्वायर्ड ऑफ 3 डिलीवरीज। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और सादिक निजाम के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहते हैं, इस तरीके की विकेट कीपिंग, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। निजाम की पारी समाप्त। एब्सोल्युटली क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, और निजाम का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरह के तुरंत विकेट कीपर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जैसे ही गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, विकेट उन्होंने तेजी के साथ चटका दिए, और यहां पर बल्लेबाज का बल्ला बैट हवा में था जब विकेट उखाड़े गए थे, चटकाए गए थे विकेट कीपर द्वारा। तो इस वक्त 2 गेंदें बाकी और रन चाहिए 6 रिक्वायर्ड ऑफ 2 बॉल्स। अब लक्ष्य काफी कठिन, और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज सादिक ने दिया है। छक्का प्रदान करने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदें उन्होंने निजाम को फेंकी और वापस अपने टीम की गाड़ी को सही पटरी पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। अब 2 गेंदें बाकी है और रन से चाहिए 6। तो नंबर 10 बल्लेबाज तस्लीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सादिक की गेंदों का। सादिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तस्लीम के लिए यह गेंद, इस वक्त तस्लीम ने गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, क्लीन कलेक्शन, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 ही रन के साथ बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। द स्कोर बोर्ड इज नाउ गोइंग अप टू 28 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 5 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल, 4 फॉर टाई, 5 फॉर विन। और अगर मैच टाई होता है तो विजेता को टॉस के जरिए निर्धारित किया जाएगा, और चौका अगर अंतिम गेंद पर लगाते हैं तो मैच टाई होगा। तो उसके बाद टॉस दोनों टीमों के भविष्य का निर्धार करेगा। तो यहां पर सबसे पहले यह बात है कि यहां पर टाई करना जरूरी बन चुका है साज फ्रेंड्स उल्लाल के बल्लेबाज के लिए।
तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार आरिफ, गेंदबाज इस वक्त सादिक, और मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार। 4 for tie, 5 for win, and the last ball of the match is now coming up. और देखते हैं यहां पर किस तरीके की, तो इस वक्त देखना यह है कि इस अंतिम गेंद पर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी अपनाते हैं और बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार आरिफ, गेंदबाजी इस वक्त सादिक के हाथ में। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई, 5 खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात। The last ball of the match is now coming up. Here we go. दाहिना हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद उछालना चाह चुके। That's it. 4 runs, thrilling victory for Shine Bantwal against Saz friends Ulal, and with that 4 runs victory, they are through to the next round of this competition. So what a fantastic match ended, which won by Shine Bantwal by a narrow margin of 4 runs. Thrilling victory for them against Saz friends Ulal, and with that victory, Shine Bantwal are through to the quarterfinal of this competition. और अब इस श्रृंखला का क्वार्टर मैच यहाँ पर खेला जाएगा और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे यहाँ पर अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब क्लास 11 चोक्काबेट्टू और शाइन बंटवाल के बीच क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर शुरू होगा। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। So man of the match, the award goes to the man who scored 14 runs in 13 deliveries. Responsible knock played by him. Salam adjudged the man of the match. Salam of Shine Bantwal adjudged the man of the match of this match. I request Salam of Shine Bantwal please come on to the dais and receive the man of the match prize from organizer. Salam of Shine Bantwal. तो अब 5 मिनट का ब्रेक है. वी आर जस्ट टेकिंग अ 5 minutes break, and right after 5 minutes we'll be back right in front of you in the quarter final match between the class 11 Chokkabettu and Shine Bantwal. Now it's time for break. Thank you. धन्यवाद.
Welcome back once again for the quarter-final of this prestigious YFC Trophy 2023 season 2 of this prestigious cricket tournament. YFC Bajal Nanthoor organizing in association with the Little Kingdom Phones Bahrain. Meanwhile, I request two teams captain please report here for the toss for the quarter-final. I request team Shine Bantwal as well as I request team Class Chocobeto. And I request both the teams captain Class 11 Chocobeto as well as the team Shine Bantwal captain please report here immediately for the toss. Welcome back. Very interesting and very good match between two very good teams. Of course, both the teams actually they played a fantastic game of cricket. It's not so easy journey for both the team because they defeated some strong opponent, and both the teams they came into this tournament as underdogs. But as far as the performance is concerned, both the teams definitely deserve the place in the quarter-final. And wait and see which team will going to qualify for the semi-final. And already another ninth block they are enter into the semi-final yesterday, and winner of this match will going to clash for the place in the final in the second semi-final. This is the last quarter-final of this prestigious YFC Trophy 2023. YFC Bajal Nanthoor organizing this fantastic cricket tournament under the great leadership of Nazir Bajal and Janab Ashraf, the corporator, and Jabbar and his teammates done a great job so far for this success of this cricket tournament. Looks like the match will going to start here, the quarter-final, and after winning the toss, the captain of Chocobeto, Class 11 Chocobeto elected to field first. Just like I mentioning about these two teams, absolutely played a magnificent game of cricket. And coming back to the Class 11 Chocobeto, they defeated YFC Bajal in the first round and qualify for the second round. And in the second match also, they gave very surprise result by defeating Mother India Boliar, and they qualify for
the quarterfinal. Coming back to Shine Bandwal, they defeated BFC Bengre in their first match, and again they given surprise result in the free quarterfinal by defeating very strong opponent Saz friends Ulal. So that it's going to be a very interesting match. And Shine Bandwal versus Class 11 Chocobeto. It's going to be a fight between classical team versus shining team, and wait and see which team will going to qualify for the semi-final. First ball right on the money, right on the target. They're going up, and looks like as the first wicket is back into pavilion. The ball is just looks like going to I think it's a ball out, and ball just kissing the stump, just absolutely fantastic delivery. Even bowler doesn't know anything about that ball, so he's keep on appealing for the umpire Iqbal to give the leg before wicket, but umpire is unmoved, rightly so. Why you are asking for leg before wicket? Ball is hitting the stump, the bails are off. Sometime is happening whenever it's too excited, and Naufal has got a dream start, absolutely dream start here for Shine Bandwal once again picking up a first wicket in their first delivery. The batsman Rahil little correction, Zahir is back into pavilion in the first ball. Is out for Golden Duck, and Rahil is a new batter, will go into join his partner. So very good stuff here from Naufal. First ball itself has been outstanding. He bowled at Zafar and picked up a wicket for his team. Naufal again bowling away from us. Alright, Mohammad wicket bounce. This time batsman now tried to hit the ball across the line and managed to get a single. Rahil didn't connect it on properly because he wanted to drag the ball from outside the line of off stump, and that's why he couldn't get that much of neat connection of the bat. But anyhow, he got a single, and first run came for team Class Chocobeto, Class 11 Chocobeto. One for the loss of one wicket in the over number first in progress, and now fall once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket bounce to Ashpak. Ashpak chipped that one down to mid-off region for a single. With that single, Skoba Namuzan to 2 on the board for the loss of one wicket. Very impressive to see that one member, the player of Shine Bandwal in mid-off region. We are having the senior most player. And the Majid, who is standing at short mid-off, one of the senior most player for the side. And definitely it's good to see because they're playing along with the youngsters. It's not so easy. The Majid is absolutely, just you can see that in the screen that Majid is the one who is standing at short mid-off, and the perfect example for the youngsters because it's not so easy in this age and performing and playing. Absolutely, it's a fantastic because it's not a easy condition, bright and hot sunny day, and playing for with the youngsters is definitely going to be fantastic to see Majid in the playing 11 of Bandwal, Shine Bandwal. 2 for the loss of one wicket in the over number. The first in progress, fantastic performance continues here from Naufal. It's bowling very tidy line and length to the batsmen of Class 11 Chocobeto. It's a 3 for the loss of one wicket in the over number first in progress. Deep long off and deep mid wicket are the two fielders are in the deep. Mid on is there, square leg is there, mid wicket is there. Here is the next one. Again, chip that one just over the top of the infield. The fielder by running behind, and before the fielder run back, Afreed I think is the fielder running back and fields the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, Koban Namozan to 5 on the board for the loss of one wicket. And look at the crowd here. Absolutely, it's a fantastic crowd here in this most beautiful cricket ground, enjoying the game of cricket. And it never looks like it's going to be a Monday. It's almost similar. Looks like it's going to be a Sunday here. And a Tuesday, of course, today, and it's going to be a working day here. Again, looking for the run, chance of run out, and ball misses the stump. Ashraf survives. Afreed is in the mid-wicket region, trying for the shy at the stumps. Ball just missing the stumps, and batsman survive from the run out. 6 for the loss of one wicket after completion of over number 1. That's a good over from Naufal, the kind of over which is required in the power play, and equal battle is on. And as far as getting runs
in the first over is concerned, class 11 Chocobeto has got 6 runs, and at the same time, Naufal is produced a very important breakthrough of getting a wicket in the first ball of the first over. Nazim is one more very good talented bowler for Shine Bantwal. Of course, Shine Bantwal so far they won the match because of their outstanding bowling performance and even some brave and gutsy batting performance. And they need to continue that performance in this big quarter final as well. Bowler Nazim, right arm over the wicket bounce. This time again drives that one down to mid wicket region. They're running for the second, looking for the second, and misfield there by the fielder. And this is just look at this man. This has been outstanding. He's been outstanding in the field. Zahid has been outstanding in the previous match also. The watching him is saving that boundary. And here is also he won that misfield by the fielder. But look at the man. He's always covering from a long off to deep mid wicket. And just look at how much ground he need to cover. And this is what we are talking about, the unique part. The fielding is definitely going to be one of the unique part of cricket. If you have a good fielding unit, you can win match. You can give any fight for any big teams. Outside enough of stump, going to be a fantastic delivery indeed. The batsmen are rising the couple of yards, a couple of inches, not a couple of inches, all the 3-4 inches that was inside the line of that wide line. The ball is just angling across from the right-hander batsman, just going away from the right-hander batsman. Fantastic line ball there by Nazim. Again, right on the middle stump, but this time batsman hits that one firmly down to deep. What is long on region, looking for the second. In comes the throw, chance of run out again. The captain of the side in the deep long on region, I think Siddiq there in the deep widish long on, is trying to return the ball, but not quite enough. And the batsmen are very quick between the wicket. Youngsters, what we are talking about of Chocobeto, class 11 Chocobeto. When you are having a hot-blooded youngsters in the side, they will go and run very quickly. They are not giving an opportunity for the outfielder. This is really doesn't look like going to be a second run there, but because of the outstanding running between the wicket, they managed to complete that couple of runs against a fantastic fielding department of Shine Bantwal. 10 for the loss of 1 wicket, 9 balls completed, 10 runs which is scored. It's an equal battle is on between these very good teams. Nazim again, alright, Tom Brown the wicket balls. This batsman drives the run again, the off stop by the fielder. Chance of run out which is created, but again the fielder is fumbled. The batsman got a single. With the single score, was until 11 for the loss of 1 wicket. And of course, if it is a neat collection there from the mid-on fielder, it's going to be a chance of run out which is created there. So what a fantastic performance is progressing here from these two teams for the place in the big semi-final. They definitely wanted to get the place in the big semi-final because already one team which is qualified is Nazar 9th block yesterday for their outstanding performance. Wide call by umpire, one more extra. Each and every run is going to be very crucial. 12 for the loss of 1 wicket. We are witnessing so many matches in this particular tournament. When you are conceding extras much, you are losing. Most of the match teams are lost the match, so need to be very strict in their line and land. Beautifully ball, perfect one. Ball is not that much away from the leg stump. It's a ball is just missing the wicket by a whisker, and just but close to the leg stump in that occasion. Batsman a little bit shuffled across the line of the delivery, tried to play some improvising cricketing stroke, missing it completely, and there is no chance at all for any run. 12 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress as Rahil once again back to his bowling mark. Little correction, Nazim is back to his bowling mark. Rahil is a striker using his feet. This time ball of course might be the ball hitting the leg of the batsman, but not the leg, is a wicketkeeper behind the stump, misses the ball completely. But I think the wicketkeeper is been outstanding. Of course, a rare missing from his hand. He's been outstanding throughout the tournament behind the stump. The wicketkeeper of team Shine Bantwal has one more over completed. Tidy over. Nazim balls 13 for the loss of 1 wicket. 6.5 runs per over. The run rate progressing for team class 11 Chocobeto. Once again, there is a special thanks to Zaidu, who has donated the apple fly advertisement, because they are the big contributor for the success of this cricket tournament. And apple fly bluebirds, we can see that all along the boundary line, that
The advertisement board is definitely giving more attraction for this cricket ground, and red color apple fly boards around the ground. And this is going to be a fantastic, and thanks to each and everyone for your lovely contribution. Jaidu is the one who's donated that apple fly, the big donor of this tournament. Again, Naufal bowling with the shot on off right arm over the wicket. Again, swept that one very nicely down to deep backward square leg region, running hard, looking for the second. Definitely they will going to get that one easily, because the placement is so good here from the batsman Rahil in the negation. This time I think is a very good strategy, the technique implemented by Rahil, because sweeping the ball will going to give a couple of runs if the ball is just crossed that circle, that is a 15 or 20 yard circle here, and opportunity always created for the batter to come back for the second. And here is again the Naufal bowling away from us, right arm over the wicket, passes umpire to Rahil again tried to repeat that one again. This time ball is went very fine down to fine behind the wicketkeeper, and before the wicketkeeper going to collect that one, the ample time for the batter to complete the singles with that singles. Muzan to 16 on the board, 16 for the loss of one wicket in the over number 3 in progress in this big quarter final. Now Ashraf is a key player for the side of Chocobetu. So far he's played a good innings for his team, and here is again top edge straight to the hands of fielder, and unfortunately when he wanted to play the sweep shot, that ball has got a little bit extra bounce, so the ball hitting the top of the bat and went straight to the hands of a short fine leg fielder. Just look at that one. Absolutely right. Ball came along the carpet at a time of when he's sweeping the ball. Ball has got a little bit extra bounce and ball hitting the top of the bat, and wicket keeper behind the stump, identification square leg fielder completes the catch comfortably. So good innings once again played by Ashraf for his team. Scored 9 valuable runs before back into his pavilion, and 16 for the loss of 2 wicket. The new batsman in his captain of the side, one who played a good innings yesterday before the previous match for his team, and now he came into middle. Very useful cricketer Dawood is a very good all-rounder, and even very good strike rotator for class 11 Chocobetu. Will go into face Naufal. Right arm over the wicket. Reverse sweep is there is some chance of run. Oh my goodness! He missed it completely. It's a 17 on the board for the loss of 2 wicket by call by umpire. So once again, it's a 17 on the board for the loss of 2 wicket, and over number 3 is in progress. The bowler will go into continue. Naufal, right arm over the wicket, balls this time. And for the reverse sweep, ball is in there. Opportunity for the fielder, and he takes a catch. The one more wicket is back into pavilion. The disappointment continues here for the team. Class 11 Chocobetu. Just look at that one in replay, and almost the bowler did a great job of bowling outside the line of leg stump, seeing the batsman going for the reverse stroke, not really settle the batsman to get a use part of the bat, and he got a top edge, and the fielder is just waiting for that ball and takes a good catch in the end. Wickets are tumbling. It's 17 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. It's outstanding over is in progress now from Naufal. Picked up 3 valuable wickets. It's what a great bowling performance continues here from Naufal. All the wickets which is taken by Naufal himself. 2 wickets in that over, and 1 wicket in the first over, the first ball of the over, and now is looking so good. And 3 overs which is completed. 1 ball remaining, because last ball remaining. 17 for the loss of 3 wicket. Naufal will go into ball that final delivery. Zaid is the new batter. Zaid drives and bowler's back drive, and bad bowler tried to stop the ball from his legs, but ball missing his legs.
One more addition to total. So good over there from Naufal. 2 wickets. Altogether 3 wickets in that over. And his bowling analysis 2 overs. No maiden. Conceded 9 runs and picked up 3 valuable wickets. Absolutely fantastic bowling figure. 3 wickets. It's going to be a big one. Lot of cricketing action is coming up for cricket lovers, and we are talking about the very soon the big tournament will be going to coming up in Krishnapura in the name of Krishnapura ground. Of course, it's going to be a Big Bash League Krishnapura in the name of Big Bash League Krishnapura, and of course the designate and digital media partner Mr. Kandak definitely going to be a key man in the technical department, and that tournament will go into coming soon. One of the best league in the name of Big Bash League Krishnapura in KFC ground, and which is conducted by KFC. And here is a start of the ball over number 4 outside the line of off time. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. One more addition total. No signal coming from umpire. That means it's from the bat of the batsman. So that scoreboard now moves on to 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Asif is the bowler. His bowling is first over, the 4th over of the innings of 11 Chakabettu. Again, nicely executed there by the batsman. Just I mentioned about Dawood. He's a clever cricketer, he's an intelligent cricketer, know exactly the kind of the batting which is required in the situation. Rotation of strike is so important, and 20 for the loss of 3 wickets. The total 33 boundaries and 16 sixes in this particular tournament. This time misfield by Afrid, a rare misfield. And in this particular match, looks like is a Shine Bantwal making some misfielding here. And again, the fielding is not really up to the mark. What is there knowing for the performance in the previous match is outstanding. And against very big team, Sah's friends Ulal. Asif balls beautifully ball. Oh, wicketkeeper behind the second attempt. He just completes the job. Now umpire asking for the third umpire. Will go into refer the third umpire, and before the third umpire decision will go into come. Here is a lot of announcement we are going to make. One more big tournament is coming up. Team Fortune organizing one more big tournament in the name of Yuvaratna Trophy 2023. Is a huge one at UCG cricket ground. Lots of underarm cricket. Not out, I think, not out, which is a call from umpire, third umpire. The batsman is safe. And talking about the Team Fortune organizing that Yuvaratna Trophy 2023, 2 balls remaining. 2023, and that tournament is organized under the sweet memory of late Punit Rajkumar, and 1 lakh cash prize for the winners, 50,000 for the runners, and one of the biggest tournament, first time in UCG ground, because in this season the first tournament which is organized by Team Fortune, the huge prize money of 1 lakh. Leg by call by umpire. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 22 for the loss of 3 wicket. The one more 23 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Twenty-two on the board, a little bit of correction. 22 for the loss of 3 wickets. The over number 4 is in progress. Asif again. Right arm over the wicket balls. Oh, again going to be a wide. One more big wide. And with that extra scoreboard moves on to 23. Now it's a 23. And again Asif already conceded 5 runs in that over. This time again going for the reverse over. It's going for the quick single. Dawood. Of course, he is not running towards the dangerous, but his partner is running towards the danger and Zaid. But at last he managed to complete the single. So
One more good over completed, 4 overs completed after completion of over number 4. Class 11 Chocobeto managed to get 24 for the loss of 3 wicket. And 24 for the loss of 3 wicket. They're going exactly 6 runs per over. And wait to see, the last over is going to start. We're coming back to the some cricketing news. The one more big tournament is coming very soon. And coming February 12th and 18th and 19th. One more big tournament. JD Boys Trophy 2023 will go into commence in SVC cricket ground, and cash prize of 1 lakh and JD Boys Trophy for the winners, 50,000, and JD Boys Trophy for the runner-up. And of course the 12th and 18th will be the local pool, and the big day of cricket tournament, day and night match in 19, the Sunday, one of the biggest day of cricket, and that will go into commence and coming 12th, 18th and 19th of this month in SBS School Ground, Bantwal. There's a nice looking drive towards the deep cover point region, but protection has been given in the deep so that the batsman completed that couple of runs so easily. Again, a little bit fumble from the field in the deep, and scoreboard numbers under 26 for the loss of 3 wicket. It's all runs are so important in the last over, and whatever the runs which Class 11 Chocobit will going to get in that final over is always going to be a bonus, because once they cross the 30 plus runs, it's going to be a fantastic runs, and wait and see how well they will going to get the remaining 5 deliveries. Here is bowler Sadiq, captain of the side. Right arm over the wicket. Bowls to Dawood. Dawood is misjudging the line. Thinking that it might be a wide. But a fantastic line. It's a very, very difficult line for any right-hander batsman to judge whenever bowling that line. Just look at that, the batsman. It's just initial movement from him. This time, straight to the hands of fielder, and Majid is dropped the catch. It's not so easy, and I already mentioned under this age it's not so easy, but his stride is level best, powerfully driven by batsman towards short mid off, and Majid just missing the opportunity to take the catch. It's 27 for the loss of 3 wicket. Sadiq again. Now just the exchange of fielder. Afrid is coming towards the mid off, and Majid coming towards mid on region. Sadiq again, right arm over the wicket, using his feet, lofted that one, but straight to the hands of long off. It's absolutely the batsman looking for the big stroke in the occasion, coming down the track, using his feet, but not getting the elevation, not getting the distance. Of course, he's got elevation, but he's just finding the fielder. One of the safest pair of hands down at long off. Zahid, and fantastic fielder, especially the very good outfielder, and one must say is a sprinter and athletic, the player, athletic fielder for the side of team Shine Bantwal. 27 for the loss of 4 wicket. The captain got a breakthrough, Sadiq, and so new man in is Razik, and Sadiq to Razik. Again, Majid again tried his level best to fumble, and they completed a couple of runs. And again they're going for the 3rd run. This time it's going to be a suicider. It's definitely going to be a suicider. And but the classic competitor, they're not really bothered about that run out. They know exactly they need to get the opportunity as much as possible in this last and final over, and this time they're looking for the 3rd run, and they completed 2 runs and looking for the 3rd run. Then it's going to be a run out. So total score is 29 on the board for the loss of 4 wicket. So new batsman is Faisal. Dawood is on strike. Captain of the side, captain to captain, captain of Shine Point Bantwal, captain to captain of Class 11 Chocobeto. They're running hard, looking for the second, and this time is a wide throw, and batsman struggling, looks like he's gone.
So this is the last opportunity. The batsman have to capitalize, but here is a couple of single run, just a single run. The out which is given by the umpire, so that the only one run which is conceded in that final delivery of the final over, and at last they managed to get 30, exactly 30 runs, and they set a target of 31 for Shine Buntwal. It's an equal battle, absolutely equal battle, but you cannot underestimate this total in this condition, evening condition. 31 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6-5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವಾದ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು 31 ರನ್ನಿನ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. And before the innings of class 11 before the innings of Shine Buntwal will go into start, it's time for Mr. Gopi to take over the microphone final time in this day number 3, and it's over to Gopi. And Gopi, once again it's a fighting total on the board, it's a competitive total. Nevertheless, it's not an underestimated total. Just like I mentioned earlier in the previous match also, 33 runs is a winning total. It's become a winning total for team Shine Buntwal against Sa's friends Ulal. But class 11 Chokobet Gopi, they're all that youngsters in the side. They got some fantastic bowling department. Just like I mentioned earlier that they came into the tournament as underdogs. No one thought that the class 11 Chokobet will be in the quarterfinal. But because of their effort, the team combination, I think it's going to be very class, just like what the name they got, class. Everyone is really played a very classical cricket so far. And if a Shine Buntwal wanted to win the match, Gopi, lot of hard work is required from the batsmen of Shine Buntwal if they wanted to win the match, because they're playing against one of the best bowling lineup and even best energetic fielding department. एब्सोल्युटली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, क्लास 11 पिछले मैच में अपने गेंदबाजी के बलबूते पर उन्होंने मैच जीता था. सिर्फ 30 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उन्होंने सामने वाली टीम को 20 रनों पर रोक कर रखा था. वही खासकर ऐसा कहना पड़ेगा, पिछले मैच में मदर इंडिया बोलियार को सिर्फ 20 रनों पर उन्होंने रोक कर रखा था अपने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के जरिए. और यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया सतीश, गेंदबाजी, सशक्त गेंदबाजी और सशक्त बल्लेबाजी का सशक्त फील्डिंग का डिपार्टमेंट इस वक्त है उनके पास. और अगर वो इन दोनों विभाग का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है. समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है शाहीन बंटवाल के बल्लेबाजों को. और देखते हैं यहाँ पर शाहीन बंटवाल के बल्लेबाज इस 31 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सी रणनीति यहाँ पर बल्लेबाजी पर अपनाते हैं. और जहां तक शाहीन बंटवाल का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत होनी चाहिए अगर उन्हें 31 रनों के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए रक्षात्मक तरीके का खेल, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद फील्ड होती हुई, लेकिन इससे पहले कि गेंद को फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. तो 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है. 31 they have to score for victory to qualify for the semi-final of this competition for शाहीन बंटवाल. और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई इस वक्त कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. क्लास 11 के पास जो क्लास गेंदबाजी का लाइनअप है उसके खिलाफ बल्लेबाजी करनी है शाहीन बंटवाल के बल्लेबाजों को. तो कुछ विशेष रणनीति, डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. यह गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को स्विंग किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद बढ़ती हुई और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है सलाम के बल्ले से. ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट एंड लफ्ट दैट वाज swung it away, this time down to a deep into wicket fence for a boundary. That is an absolutely outstanding struck came from the bat of Salam. और इस बार राइट फ्रॉम द स्पॉट गेंद को पिक करते हुए स्विंग कर दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. बेहतर स्ट्रोक सलाम के बल्ले से लगता हुआ. और जायद जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, यहाँ पर अपने पहले ओवर में चौका प्रदान कर चुके हैं. और देखना है कि इस मैच में किस तरह
अगले गेंद में वो कम बैक करते हैं दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, खेल को खेलना था, खेल चुके हैं और एक और चौका उनके खाते में जुड़ चुका है। एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, एक्सक्विजिट फुटवर्क। गेंद जितनी तेजी के साथ उनकी ओर आई थी उतनी तेजी के साथ उन्होंने फुटवर्क के जरिए, एक्सक्विजिट फुटवर्क के जरिए गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो रिवर्स शॉट, इस रफ्तार तेज रफ्तार के साथ आती हुई गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना उतना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर गेंद की उछाल को और गेंद की पेस को पहले ही भांप लिया था, गेंद की तेजी को पहले ही भांप लिया था और आखिरकार रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेला बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। 2 चौका लगा चुके हैं, अब कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगली गेंद पर बल्लेबाज सलाम ने गेंद को हल्के से इस वक्त खेल दिया डीप मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर दिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आसिफ के बल्ले से यहां पर चौका लग चुका है। इस बार गेंद को खेला था थोड़ा सा वाइडर मिड ऑन फीडर के थोड़े से दाहिनी ओर से और गेंद को खूबसूरत तरीके से गैप को चुनने में सफल, गेंद को भेजने में सफल, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ 14 रन बन चुके हैं और सतीश यहां पर एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट। दिस इज नॉट पॉजिटिव बट सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि दिस इज एन टेरिफिक स्टार्ट। 14 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 31 इन 5 ओवर्स और 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हैं 5 ओवर में। अगर आप पहले ओवर में 14 रन बनाते हैं तो निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन शुरुआत कहलाएगी। Exactly, Ubhay. It is not only the positive start, not only the terrific start, but best word is to use is the explosive start. And 3 boundaries which just came from that over, isn't it? And look at the 3 boundaries, Gopi. The first 2 boundaries which came from the bat of Salam. One is orthodox cricketing stroke towards a square leg, and another one is unorthodox cricketing stroke. That was a fantastic switch hit. Just like it doesn't look like the right-handed batsman hitting that ball. Just like a left-hand batsman hitting the ball down to deep backward square leg. And last one, getting inspiration from his partner Asif hitting 1 more boundaries. And 3 boundaries definitely Gopi takes the match totally away from the hands of Shine Bantwal. But still, they got opportunity. And for that, if they wanted to get back into this game, Gopi, Shine Bantwal, of course, Chocobito desperately required wickets here, Gopi, and economical over. एग्जैक्टली सतीश, कम बैक करने के लिए इकोनॉमिकल ओवर और विकेटों की जरूरत है। पहली गेंद को हल्के से इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, लगभग पैरों पर उनकी गेंद टकराया, लगभग बल्ले का भीतरी किनारा इस वक्त टकराया था और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 14 रन बिलंग से नुकसान के और 17 रन बनाने हैं, ओवर्स बाकी हैं 4। अब एक गेंद बीत चुका है, यानी 23 गेंदों पर 17 रन बनाए। 17 रन दे हैव टू स्कोर नाउ फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। इस वक्त कलाइयों के द्वारा डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। शाइन बंटवाल के बल्लेबाज अपने छाती के अनुगुण इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं। पहले ओवर में 14 रन बटोरने के बाद वो इस वक्त एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए एक बार फिर से दाऊद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आसिफ सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद आसिफ की गेंद को चिप किया, मिड विकेट पर कोई फील्डर वहां पर नहीं, 1 bounce into the fence. This is a clean hit. ऐसा कहना पड़ेगा, he just got that one right from the middle of the bat and hit that one in the wicket gap at long on for a boundary. Just look at this in the replay, absolutely effortless. He just taking the advantage of power play and this time he hit that one over the long on fence after one bounce for a boundary. बेहतरीन स्ट्रोक, इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। यहां पर जानते हैं बल्लेबाज चौका लगाने के बाद हर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक इस वक्त खेलना नहीं चाहिए क्योंकि लक्ष्य के और निकट इस वक्त वो होते हुए धीरे धीरे। तो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। YFC ट्रॉफी 2023 का क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता है। सीजन 2 एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और एक बेहतरीन लाइव एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट इस वक्त किंग स्पोर्ट्स पर इस श्रृंखला का किया जा रहा है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर और उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया इनटू द गैप एज वेल, 1 बाउंस इनटू द फेंस, दिस टाइम एट डीप मिड विकेट।
और ऐसा कहना पड़ेगा, he just got that one right from the middle of the bat this time and pulls it away down to a repeat wicket. Have a look at this in the replay. Middle of the bat connected and the ball went after one bounce into the fence for a boundary. और मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश में इस वक्त बल्लेबाज शाइन बंटवाल के। तो 2 ओवर 24, तो सतीश पहले ओवर में 14 बने, दूसरे ओवर में 10 बने, अब 7 रन बनाने, 3 ओवर का खेल बाकी। रिक्वायर्ड रन रेट उतर कर आ चुका है एग्जैक्टली 2.67 रन पर ओवर, 7 रिक्वायर्ड इन 3 ओवर्स। और मैं समझता हूं इस वक्त 75% इस मैच में, इस वक्त 75% इस मैच में तख्ता भारी लगता हुआ यहाँ पर शाइन बंटवाल का। Absolutely, Gopi. Shine Bantwal, as everyone thought it might not be that much of an easy one, especially in the evening. In this condition, 30 plus runs is definitely going to be a difficult one. But because of these two batsmen that came into the middle with a positive frame of mind, and they're converting that positive frame of mind into performance, and they performed very well. They know that 2 overs going to be very key. That if they're able to get some runs in the 2 overs of power play, then they're very much in this game. But certainly, Gopi, the nice 75 or 80% of the game, especially in the hands of Shine Bantwal, only the miracle bowling will going to change the complexion of this match. एब्सोल्युटली सतीश, मिराकल बॉलिंग या चमत्कारी गेंदबाजी ही अब इस मैच में क्लास 11 को वापस ला सकते हैं। और ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज का इरादा भी वही था, इंटेंशन भी वही था, पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने, और अपने इस इरादे को, अपने इस योजना को पावर प्ले में कार्यगत करते हुए पहले 2 ओवर में 24 रन बटोर चुके हैं। और अब कोई जल्दबाजी की उन्हें जरूरत नहीं है। ये गेंद इस बार टिप किया, गेंद को हवे में, गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 विदाउट लॉस। फैंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर between Asif and Salam, and they are now heading towards to their victory. Just 5 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा और गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है फाइन लेग सीमा रेखा के फ्लेक्स से बाहर, उस पार, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर, 27 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और 4 रन और चाहिए विजय के लिए। ये गेंद इस बार पुल किया डीप मिड विकेट पर, एंड ही फिनिश्ड द मैच इन स्टाइल विद अ 6। परफेक्ट स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ सलाम। और मैं समझता हूं सतीश, मैं कहूंगा, यकीन के साथ कहूंगा, ये एक बेहतरीन जीत यहां पर हासिल कर चुका है शाइन बंटवाल 10 विकेटों से क्लास 11 चॉकोबेटो के खिलाफ। Absolutely, Gopi. It's a absolutely total dominated, isn't it? Total dominated one-sided game from Shine Bantwal. Just like what the name they got, Shine Bantwal. They're shining under bad light, and they defeated defeated their opposition team, the formidable team. In fact, they defeated team Class 11 Chakobet by huge margin by 10 wickets without losing any wickets. Finished the match with a 2.3 deliveries, and it's a time for announcement of the man of the match, and it's a time for the man of the match. It's a little bit difficult one because everyone is contributed from the bat because but one is make a pressure off straight away and hitting the ball like a football, seeing the ball like a football, the first ball itself, and is the one is dominated. Is nevertheless, it's a salam of once again. The salam of Shine Bantwal, who's judged as a man of the match for his quick fired 21 runs in just 10 balls. And is judged as the man of the match for this quarter final. Congratulations for the team semi-finalist. So we are, of course, because of the condition is not good enough to continue the match, so organizer decided to postpone
they postpone this tournament for the next day, and the next day means tomorrow. And tomorrow exactly 2 o'clock we're going to start the match, the first semi-final, and after that we're going to play the mega final, the big final. And teams which is qualified for the semi-final, team Shine Bantwal, they qualified the semi-final, and they play against Nazar ninth block. Nazar ninth block will go into the semi-finalist. So please note both the teams, the captains, you need to be there. You need to be here in exactly 1:30 in the afternoon. The match will going to start exactly at 2 o'clock in the afternoon tomorrow. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶೈನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 1:00 ತಾವುಗಳಿಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ at 1:30. And till then we are saying goodbye from our commentary box. And that's it for the day number 3. One more fantastic day of cricket comes to an end, and it was really a glorious day of cricket. Everyone is enjoying the game of cricket, and congratulations for the semi-finalists because they played a good game of cricket. Hard luck, 11 star Chocobetto. Of course, they played a very good game of cricket, but class Chocobetto, because it's class 11 Chocobetto, they played a good game of cricket, but not really enough against Shine Bantwal. And congratulations for the semi-finalist. And we'll see you tomorrow. Till then, we're saying goodbye from the commentary box. Myself Satish Salyan in English, Mr. Gopi in Hindi. See you tomorrow. And that's it for the day number 3. Thank you. Thanks a lot. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon